because the total lending portfolio for individual customers for the banking industry is about 2.1 million people in a country of 225 million people. The formula is very simple. पिछले साल दुनिया में बैंक ब्रांचेस बंद हो रही थी और हमारी बैंक ब्रांचेस तकरीबन 200 बढ़ी हैं और बढ़ती रहेंगी, क्योंकि फॉर्मूला बड़ा आसान है कि आप ब्रांच खोलें, डिपॉजिट्स लें और पीआईबी और टी बिल्स और गवर्नमेंट के कमोडिटी में इन्वेस्ट करें और हर साल अपना मुनाफा बढ़ाते जाएं। सारिफ की कोई फिक्र नहीं है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री से बहुत दूर नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें कि आपके जो इंडिविजुअल, एक तो आप देखें कि आपके जो टोटल प्रीमियम है वो जीडीपी के मुकाबले में क्या है, अपने हमसाए मुल्क को देख लें और अपने आप को देख लें, तो आप सिंगल डिजिट में हैं प्रीमियम्स ओवर टोटल जीडीपी। दैट मीन्स द एक्चुअल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज़ वेरी लो। इंश्योरेंस कंपनी के पैसे कहाँ बनते हैं? उनके पैसे बनते हैं जनरल इंश्योरेंस में, मरीन, फायर, उस किस्म की चीज़ों में। we are yet to penetrate the retail level for general insurance. आपने certainly लाइफ में, लाइफ और हेल्थ में पेनिट्रेशन किया है, लेकिन वो पेनिट्रेशन किस तरह किया है? माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में जब कर्जा दिया जाता है तो उसमें एम्बेडेड लाइफ इंश्योरेंस डाल दी जाती है, कुछ हेल्थ भी डाल दी जाती है। सारिफ की रिक्वायरमेंट क्या है? कर्जा, उसको आप फोर्स करते हैं कि वो उसमें एम्बेडेड इंश्योरेंस भी ले। उसको इंश्योरेंस के बारे में पता भी नहीं होता, और अगर आप क्लेम रेशियो देखेंगे माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री का, वो इतना लो है क्योंकि सारिफ को पता ही नहीं है। मेरा सवाल ये कि स्टैंड अलोन कस्टमर अवेयरनेस के साथ कितनी लाइफ इंश्योरेंस बेची जाती है। दूसरा ये है, हमारी जो बड़ी लाइफ इंश्योरेंस है उसके साथ सेविंग्स का प्लान लगा दिया जाता है। मेरे व्यू में ये सरासर गलत है। सेविंग्स एंड इंश्योरेंस नीड टू बी डिसएग्रीगेटेड, बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस क्या है? लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस डेथ इंश्योरेंस है कि खुदा ना खास्ता आप मर जाएं तो जो रकम है आपका कवर इतना ज़्यादा होना चाहिए कि आपकी इनकम रिप्लेस हो। उसमें जब आप सेविंग डाल देते हैं तो जो प्रीमियम कुछ सेविंग की तरफ जाता है, कुछ कवर की तरफ जाता है, तो जो मैक्सिमम कवर है वो अचीव नहीं होता। लाइफ इंश्योरेंस, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द मैसेज, should only be term life. There should be no element of savings in it. Saving करनी है डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में डालें. You know what the amount is going towards the mutual fund contribution. You know what the amount is going towards your insurance premium, and you get the maximum premium. लेकिन हमारे यहाँ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स के थ्रू बेची जाती है, जिसके पहले साल का प्रीमियम उनको मिलता है तो सेविंग उसमें इंक्लूड कर दी जाती है। दिस इज़ अ डिससर्विस टू द कस्टमर। दूसरा एक बहुत बड़ा एलिमेंट हमारी लाइफ इंश्योरेंस का बैंक इंश्योरेंस है। वहाँ भी एसईसीपी ने काफ़ी बार व्यू किया है, स्टेट बैंक ने भी। मिस सेलिंग होती है बैंक्स के लेवल पे टू देयर कस्टमर्स। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि हमने कस्टमर लेंस इस्तेमाल ही नहीं की है। एंड इफ़ यू वांट टू गेट रिटेल पेनिट्रेशन, देन 3 एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। कस्टमर की ऑनबोर्डिंग आजकल के ज़माने में डिजिटल होनी चाहिए। आपको बड़े डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत ही नहीं है। एसईसीपी आपको अलाउ करता है येस एंड नो करके डिजिटली आप कस्टमर को ऑनबोर्ड कर लें। अब ये हो रहा है। बहुत सारे इदारे ऐसे हैं, स्पेशली डिजिटल ब्रोकर्स जो इंटरमीडियरीज हैं, वो कस्टमर को बहुत आसानी से ऑनबोर्ड कर रहे हैं। लेकिन इंश्योरेंस लोग से कतराते क्यों हैं? कतराते इसलिए नहीं है कि एक तो ऑनबोर्डिंग अब आसान होगी, कतराते इसलिए कि जब प्रीमियम का वक्त आता है तो वो एक शेर है कि रास्ते में कोई आ गया या रात हो गई, हमारे लिए कोई ना कोई बात हो गई। कुछ ना कुछ इशू निकल आता है, डॉक्यूमेंटेशन में खामी हो जाती है। तो यू नीड टू फोकस ऑन द क्लेम पेमेंट स्पेशली फॉर mass insurance, life insurance have to be same day, not a month, not a week. There is no reason, just like certain loans can be done in minutes based on alternative data. You need to make the documentation as simple as possible. ये आपके एक्चुअरीज बता देंगे कि उसको किस तरह, मतलब कि मिसक्लेम कितने आएंगे, उसको एब्जॉर्ब करके अगर आप अपना क्लेम एक दिन में कर दें तो लोगों का एतमाद इंश्योरेंस इंडस्ट्री पे बहुत बढ़ेगा। क्योंकि अभी यही होता है कि प्रीमियम तो मैंने दे दिया, लेकिन क्लेम के वक्त एक लंबा सफ़र, तवील सफ़र हो गया।
दूसरी चीज़ जो अब हम देख रहे हैं एंड हो रही है, इस पे एज यू गो। एक बड़ा चैलेंज ये आता है कि जब आप इंश्योरेंस बेचने की कोशिश करते हैं तो जो पहले साल का प्रीमियम आप चाहते हैं एक साथ देना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों की औकात से बाहर है, उनकी पेमेंट एबिलिटी से बाहर है। तो अब इंश्योरेंस आ गई है, बीमा भी कर रहा था, माइक्रो इंश्योर कर रहा था, वादा कर रहा था, वेबडॉग कर रहा है, ये सब डिजिटल ब्रोकर्स हैं जो स्केल लेके आ रहे हैं मार्केट में कि आपने पहले 30 दिन का प्रीमियम ले लिया और अगर सारिफ ने पूरे 30 दिन पैसे दिए तो अगले महीने उसको मैक्सिमम इंश्योरेंस मिल गई। अगर उसने 20 दिन के लिए तो आपने कवर कम कर लिया, 15 दिन के लिए कवर और कम कर दिया। सो देर इज़ अ ऑन गोइंग प्रोसेस वे आप डेली बेसिस पे उनके वॉलेट से पैसे खींच रहे हैं, 1 रुपये 2 रुपये, जो उनके लिए पेनलेस हैं। सो इट बिकम्स अफोर्डेबल एंड ईजी फॉर देम टू पे रादर देन टू पे अप फ्रंट 1 साल का प्रीमियम या 6 महीने का प्रीमियम। ये तो मैं लाइफ और हेल्थ की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो आप देखें, जो सबसे निगलेक्टेड सेक्टर हमारा है, जहाँ हमने नहीं किया कुछ ईदर फ्रॉम द बैंकिंग साइड और द इंश्योरेंस साइड, इज द एसएमई सेक्टर। 5.1 million SMEs, about 2.8 million Kirana stores. What's stopping us from creating an instant insurance for their inventory? शरिया कर दें, बिकॉज आतर ये लोग शरिया चाहते हैं, तकाफुल कर लें, प्रोडक्ट बना लें कि बेस्ड ऑन ऑल्टरनेटिव डेटा सोर्सेज, उसके बिजली का बिल क्या है या उसकी सेल क्या है, उसका ऑर्डर क्या है FMCG से, ये सब इंफॉर्मेशन विच आई एम गोइंग टू कम टू about data being important for the transformation we need. Why not have a product which says कि यार अगर इसकी 10 लाख की इसके गुड्स हैं तो एक प्रीमियम मैं ऑटोमेटिकली पहले से असेस कर लूँ, नो फिजिकल असेसमेंट। 20 लाख के, अब मैं नहीं कह रहा आप 10 करोड़ का करें, बट 15-20 लाख का तो रिस्क आप ले सकते हैं। ये इतना बड़ा सेगमेंट है, इसमें किसी का अगर आग लग जाए या बारिश हो जाए या दुकान जल जाए, उसके पास कोई कवर ही नहीं है। Why are we not focusing on that? We are still focusing on what? We are focusing on health insurance, which I'm not sure if any insurance company who here makes money on. हर साल जो है टेलीनॉट बिड करेगा, हर साल एक नया बकरा आ जाएगा, चेंज हो जाएगी, हर साल वो पैसे लूज करेगा, नया बकरा आ जाएगा। You never make money on that. From a corporate perspective, I'm not sure if somebody can educate me if I'm wrong. अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस में पैसा बनाते हैं, मोहम्मद अली will be able to verify that if that's correct or not. But individual पे आप बना सकते हैं, रिटेल पे बना सकते हैं। रिटेल पे आपने देखना है कस्टमर की सहूलत क्या है, व्हाट इज द कस्टमर जर्नी, हाउ मच ऑफ द कस्टमर जर्नी हैव यू मैप्ड। जितने इंश्योरेंस के CEO हैं उनके KPI में कितना एलिमेंट है उनके बोनस पे कि कस्टमर जर्नी का फोकस है, कि ऑन बोर्डिंग जो होती है 10 मिनट में होती है और क्लेम जो होगा 1 घंटे में होगा। कितने CEO बैंकिंग में, जब मैंने यहाँ एक पैनल था, मैंने CEO से पूछा आप इनोवेशन की बात कहते हैं, आप कहते हैं आई एम अ टेक्नोलॉजी कंपनी विद अ बैंकिंग लाइसेंस। ओके, मैं अपने दोस्त के लिए तंज कर रहा हूँ। माय पॉइंट इज कि आपके बोनस में कितना एलिमेंट है विच सेज कि आपने कस्टमर जर्नी को कितना चेंज किया है, कितना एलिमेंट है विच सेज आप नए न्यू टू द इंडस्ट्री कस्टमर कितने लेके आए। आज तक बैंक्स न्यू टू इंडस्ट्री कस्टमर को 1 महीना लगाते हैं लोन देने के लिए। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अकाउंट खोलते हैं 40 दिन के अंदर। दिस इज आवर स्टैंडर्ड्स। इंश्योरेंस को मैं देखूं, अगेन मैं क्लेम को देखूं तो क्लेम के अंदर कोई हमारी अच्छी कहानी नहीं है। हाउ कैन यू चेंज दैट? मेरी जो गुजारिश है बैंक इंश्योरेंस कंपनी से, आप में से कितने लेगेसी सिस्टम से काम कर रहे हैं कि आपने नया टेक्नोलॉजी सिस्टम लिया है जिसके अंदर बिग डेटा, AI, ब्लॉकचेन इस्तेमाल हो सकती है ताकि आपकी एफिशिएंसी बढ़े। कितनी कंपनीज हैं जो क्लाउड पे चली गई हैं रादर देन हैविंग अ फिजिकल डेटाबेस। कितनी कंपनीज हैं इंश्योरेंस जो पेपरलेस हो रही हैं। अब रकमी बैंक विच इज़ माय लेटेस्ट वेंचर अलॉन्ग विद PKIC एंड HealthTech, हमारा विजन ये है फ्रॉम डे वन there will be no manual processes in the bank, period. And we can do that because we don't have a legacy system. हम अभी से आर्किटेक्चर बना रहे हैं कि इस बैंक में पेपर होगा ही नहीं, इस बैंक में कोई मैनुअल प्रोसेस होगा ही नहीं। फ़र्क क्या पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा कि बैक एंड कस्टमर जर्नी चेंज जाएगी। फ्रंट एंड आप जितना सेक्सी ऐप डालें बहुत अच्छी बात है, बैक एंड में अगर आपके 25 हैंड शेक्स हैं तो वो महीना फिर भी लगेगा आपका।
This is how we hope to compete with established banks, which have a brand, which have low cost of funds, which have physical network. हमारे पास ये तीनों चीजें नहीं है, तो किस तरह compete करेंगे? Only on one thing, on the customer journey and risk appetite. हमारा इरादा नहीं है हुकूमत को पैसे देने का, बल्कि सारिफ को देने का. अब आप इंश्योरेंस कंपनी पैरेलल लें कि आप अपनी प्रोसेसेस मैप करें, कितने हैंडशेक्स हैं, कितना पेपर वर्क है. अभी हाल ही में मैं गया था, एक छोटी इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे लंच पे बुलाया था, निहारी खिलाई थी, वेरी नाइस लंच, बट आई सॉ पेपर लाइंग ऑल अराउंड. We have not moved from paper. Why are we still stuck on paper? What's stopping you to map this and actually make it the CEO level goal? कि this is the amount of customer journey we're going to reduce every year. जिस वक्त आप क्लेम टाइम पे देने शुरू हो गए और आपने क्लेम्स को एक्सपेडाइट कर दिया, बिलीव यू मी कि एक एतमाद आएगा इंश्योरेंस कंपनी में. इस वक्त नहीं, इंश्योरेंस बेची जाती है, ख़रीदी नहीं जाती, सब कहते हैं, हकीकत है. इसलिए कि लोगों को सब यही खदशा रहता है कि जब क्लेम आएगी तो हमें कोई ना कोई दुश्वारी पेश आ जाएगी. अब नई इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स आ रही हैं विच आर डूइंग वेरी वेल. द फोन स्क्रीन इंश्योरेंस इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंश्योरेंस राइट नाउ इन पाकिस्तान. मतलब आपके पास 150 मिलियन अगर कनेक्शंस हैं, 80-90 मिलियन स्मार्टफोन्स हैं. एक स्मार्टफोन जो है 10-15 5 लाख 3 लाख 2 लाख का आता है, इसका स्क्रीन टूट गया, ये चोरी हो गई. अब इसमें कुछ ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जो फ़ोन को बंद कर सकते हैं. पीटीए भी काम कर रहा है, लेकिन पीटीए का मसला ये है कि अगर मैं फ़ोन बंद कराया तो कस्टमर कह सकता है जी मेरा फ़ोन खोल दें आफ्टर टेकिंग द क्लेम. बट दीज आर ऑल थिंग्स यू कैन वर्क अराउंड. आप देखें ना कि आपके जनरल इंश्योरेंस में अगर अगेन आई लुक एट अ नेबरिंग कंट्री, they have got far more penetration. What's stopping you to figuring out a way for insuring second-hand cars and making that onboarding and payment as seamless as possible? अब SECB की रेगुलेशन है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो मिनिमम है, बट इन्फोर्स करना मुश्किल है. एंड मे बी आमिर कैन टॉक अबाउट दैट, द चैलेंजेस इन डूइंग दैट, बट दैट्स अ ह्यूज मार्केट. What's stopping you to do pay-as-you-go insurance on the automobile insurance side? अब वेरिएबल्स लाइफ के लिए यहाँ तो बहुत मुश्किल है कि मतलब कि लोगों के पास ऐसी घड़ी हो कि आप उनके हेल्थ मॉनिटर कर सकें. कुछ है जब भी 5 मिलियन के पास होगी, मिलियन 2 मिलियन के पास होगी, बट यू कैन यूज़ ऑल्टरनेटिव डेटा सोर्सेज रादर देन ट्रेडिशनल डेटा सोर्सेज फॉर अंडरराइटिंग. अब ये हो रहा है. यू नीड टू मूव द नीडल एंड गेट बियॉन्ड द ट्रेडिशनल अंडरराइटिंग. बैंकों में यही है कि मतलब कि डेटा इस्तेमाल नहीं कर रहे. 1947 से आज तक उनके पास गुड बैड कस्टमर डेटा है, बट दे आर नॉट यूजिंग इट फॉर प्रेडिक्टिव एल्गोरिदम्स फॉर न्यू टू इंडस्ट्री कस्टमर्स. दे जस्ट यूजिंग इट फॉर क्रॉस सेल. इंश्योरेंस कंपनी के पास टन्स ऑफ डेटा, आपके पास एक्चुअल साइंस भी है, बट आर यू यूजिंग ऑल्टरनेटिव डेटाज टू फर्दर रिड्यूस द प्रीमियम ऑफ द कस्टमर? आई एम नॉट श्योर. मे बी लेटर ऑन आई विल गेट एजुकेटेड ड्यूरिंग द डे. Net, what am I saying? I'm saying we are grossly underrepresented premium as a percentage of GDP. We are grossly underrepresented if you look at the number of people who have insurance, especially if you're doing standalone insurance, not embedded insurance. Embedded insurance बड़ी अच्छी बात है, पैसा बन जाता है, but मेरी नज़र के अंदर it's a disservice to the customer. क्योंकि आप standalone insurance का claim ratio देखें और एम्बेडेड का क्लेम रेशियो देखें, आपको बहुत बड़ा गैप नजर आएगा. उसकी वजह क्या है? क्योंकि कस्टमर को पता ही नहीं है वो इंश्योरेंस ले रहा है. उसकी जो प्राइम नीड है कर्जा है, और आप उसमें एम्बेड कर रहे हैं इंश्योरेंस बिकॉज इट्स अ नाइस अर्नर्स फॉर यू और फॉर एवरीबडी. आई हैव डन दैट माई सेल्फ, सो आई कांट ब्लेम पीपल ट्राइंग टू मेक मनी. यू नीड टू रीफिगर, मेरे व्यू में, योर कस्टमर जर्नी आर्किटेक्चर. कि कस्टमर की ऑन बोर्डिंग जल्द से जल्द कैसे हो सकती है? Are you using data lakes and have personas for your customer that most fintechs are trying to build? Do you actually understand your customer? कि सिर्फ आपने इंश्योरेंस भेज दी और अगर क्लेम आया, that's the time you interact with your customer. You have no other sense कि कस्टमर का lifestyle during this period क्या है. How much? There's tons and tons and tons of alternative data available. But we are not using it. I mean, you need to build this persona if you really want to do justice to your customer. How much of predictive algorithms, AI, are you using for your underwriting? I don't know, but I assume people will talk about it, because when you talk about digital,
अच्छा, डिजिटल की बात, इट्स अ बज़वर्ड, सब लोग डिजिटल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं. मेरी नज़र में इसका एक ही मकसद, चेंजिंग द कस्टमर जर्नी. अगर आपने कस्टमर जर्नी चेंज नहीं की है तो डिजिटल का कोई फ़ायदा नहीं है. आप जितना अच्छा ऐप बना लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपने अपना बैक एंड नहीं ठीक किया और कस्टमर जर्नी वहीं की वहीं खड़ी हुई है. सो द गुड न्यूज़ इज़ दैट दिस ह्यूज अपॉर्चुनिटी, बिकॉज द हमारा पेनिट्रेशन इतना लो एंड people can make serious inroads and move the needle if the vision is to change the customer journey. That may require changing your technology, that may require creating a separate AI big data department, that may require you going paperless and having no manual process. If you can do that, I think sky is the limit. So I'm going to end with the इकबाल का एक शेर है, वो सबके लिए आई थिंक मौजू है. एंड लोग समझते हैं मुझे एक ही शेर आता है, बट आई प्रॉमिस यू मुझसे एक से ज़्यादा है, बट दिस इज़ द वन आई लव. एंड इकबाल सेज, हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संगे मील, हम वो नहीं हैं जिनको ज़माना बना गया. शुक्रिया बहुत बहुत. Thank you, Chairman Saab, for that insightful speech. And now, if I may request the keynote speech by our chief guest, who is the Commissioner, Insurance Division, Information Systems and Technology Department, SECP. He's going to highlight the regulatory support of digital insurance, Insurtech. Mr. Amir Khan, please. Bismillahirrahmanirrahim. Chairman Saab, and CEO of FinTech Association, esteemed guests and participants, Assalamu alaikum. It is my pleasure to be amongst you today because this is something which is very close to my heart, and I extend my warmest greetings and my best wishes to all of you for having a productive session today. I will start today by talking about some facts about InsurTech sector and highlighting some success stories. Also touch upon the scope that this industry has in Pakistan, and then talk a little bit about challenges, and finally share some parting thoughts with you. So if I can start with the InsurTech, we all know that today in terms of the claim, in terms of the overall premiums written, its share is less than 1% today as we speak. And this is clearly, we have made progress, as Nadeem talked about earlier on, but clearly this statistic for me as a regulator is something to worry about, or to look at major changes going forward. So globally, if you look in 2023, there were 3,400 InsurTech companies, and in 2018 there were only 1,500. There are at least 30 unicorns in InsurTech space, and I personally feel that the focus that Nadeem talked about, there's only one word that is that's popping out of my mind, and that's customer journey. He used it so many times. I tend to agree that there is a long way to go in that respect, and InsurTech can definitely play a very critical role in that regard. If we talk about Grandview Research, the global InsurTech industry was valued at $5.4 billion in 2022, and they expect it to grow to $152 billion by the year 2030. So the question that I have for you today is that in 7 years, can we take a pie of $1 billion out of that $152 billion? Now, a lot of you might say no, but you know what? The answer for me is an emphatic yes. And I'm not just saying this by way of bravado or by way of just saying it for the sake of it. I actually believe, based on an analysis and my deep belief, and I'll briefly talk about that. We all know, and I'm not going to belabor that subject, that we do have 190 million cell phone users, and we do have 130 million broadband users in this country. What that means is the possibilities are endless. Today, only 3% of the vehicles, of the 30 million registered vehicles that we have, only 3% of them are insured. Against a population of 220 million, less than 8 million policies exist in terms of individual life policies. According to some estimates, there are 8 million farmers in Pakistan, and only less than 1 million farmers are under any kind of insurance protection. There are 32 million
properties that are registered, and only 0.3 million have an insurance policy against them. And this is a story that I can go on and on and on. So sector after sector, sphere after sphere, and insurance class after insurance class, the story doesn't change. And when you look at these numbers based on the earlier statistic that I shared, it's very clear to me that the 40 companies that we have today could easily double in size, and we could add 40 more companies, and still there will be immense potential in 7 years. And hence my belief that $1 billion figure is achievable for the local market. If we look at the example of Lithuania, just a few examples that I would quickly touch upon to build the case, that they merely a population of 2.8 million. And in 2013, they had only 45 fintechs. But the Bank of Lithuania set up the sandbox to help the fintechs, and by end of 2020, the number had reached 230. So a 5 times growth in the number of companies. If we look at the European Union, the adoption of Insurtech has led to a very customer-centric environment, and also a lot of competition. Innovative companies like Lemonade have come out, and then you know that through the use of AI and chatbots, they have gone in and grown across states. They also have provided insurance to homeowners, renters, and with a very reduced loss ratio. And that is basically the power of technology that Nadeem kept talking about. A final word about a study of the McKinsey company that shows that 70% of the customers are likely to buy from companies that offer them customized or personalized service. And that goes again to the basics of customer journey. In Kenya, the use of mobile telecom connections and technology along with micro insurance has again significantly increased the coverage over there. So to me, I would slightly have a different view on what Insurtech really is trying to do. We could break it down in terms of what Nadeem said. But to me, the first thing is the customer experience, and that comes through customization, and hence the focus on the customer journey. But I think it also brings a lot of operational efficiency and reducing risks. And thirdly, it allows you to take decision making to the next level by entering the data-driven decision making process. And when you look at all three of those, then you don't have to worry about what the insurance industry worries most about, which is penetration. The penetration will take care of it if you take care of those three things that I talked about earlier. Now, these things are not lost on SECP, and we do realize that the importance of technology and the marriage between insurance and technology is critical if we are going to achieve the growth objectives that the regulator feels we must achieve. If for some of you, I'm sure you're very familiar with the 5-year strategic plan that SECP has come out with, and they've participated in that process and given us feedback. But for some of you, it might be a new idea. So my request to those of you who haven't looked at it is to actually look at it from an Insurtech perspective. And we still haven't locked it. We intend to lock it in the next 1 month or so, and then share it broadly. So this is the time to actually come to us and share any information or any changes that you want in it. Also, SECP has made it a practice that any of our outreach or discussions that we enter into with the insurance sector always have a very strong focus on technology and its use for selling and overall activity of the insurance. The final thing that I would like to say is that we launched the first cohort of insurance about 3 years back, and there have been 3 cohorts, and each one of them has found an insurance idea in its midst for the last 3 years running. So yes, the regulator is well aware of this, and I will come to a few other things also, which when I talk about the challenges. So I think the biggest challenge, if you ask me right now, and when I was reading the conference papers, it's highlighted there as well, is limited financial literacy. Now, State Bank has come out with a report which says that right now 100 million adults in Pakistan are not even aware of the regulated services existing of those 220 million. It goes on to say that 23% of the population has only 23% of the population has basic financial literacy. So there is a case to make a change in that respect as well.
And a closely related subject is the limited digital literacy. A lot of people, as Nadeem said, might be wearing certain watches, or they might actually be holding certain smartphones in their palms, but they don't really understand what that can do and what magic it can unleash. The second challenge that I would like to talk about is inadequate funding. That is, I think, an elephant which we all need to address, and the investment that comes with it. In the current economic environment, I do understand it's not easy for Insurtech and FinTech startups to find capital, to find investment, and even to find talent at this point in time. I think the third is a bit of a self-reflection, where I would say that the third area where we have lacked or challenge is the lack of coordinated support by regulators, government departments, tax machineries, and a lot of other stakeholders in the public domain. Now, I'm not going to talk about anybody else. I'll leave that to your imagination. But at SECP, we do have a very clear understanding that we have not been able to make the changes that are warranted in the Insurance Ordinance 2000. We understand that the Motor Vehicle Act of 1939 does not give the enabling powers that we need to put in place. We do understand that we are still stuck with the file and launch model, whereas the world has moved on to launch and file. We do understand that the regulatory returns are still cumbersome and onerous, and we do understand that our decision making is slow. Now, I'm not indulging in a self-critique over here. What I'm trying to tell you is that these are all areas that we are very focused on solving and taking care of in the 5-year plan, and not hopefully at the end of 5 years, but hopefully during the first year. If I move on to the final challenge that I think is there, and while I'm very open and candid about accepting what is wrong at our end, I think I should be equally honest in sharing that I think there is a certain gap on part of the insurance companies as well in leveraging technology and exploring Insurtech. Either, I'm not sure which one. There could only be two reasons for it. Either the case has not been made out to them by the Insurtech industry and the innovators of the importance of that, or perhaps it has not been openly accepted in the spirit in which it is supposed to be accepted by the decision makers, which is the C-suite and the board of directors of the insurance companies. Now, are these challenges insurmountable? No, I don't think so. Can we take care of them fairly quickly? I'm quite sure that we can. But what I must say is that this is not going to happen with one conference, with one counterparty, with one insurance company, with one regulator. This requires a certain thrust on part of all those parties. And fortunately, the 5-year plan that we have, it focuses on all those areas and is very, very crystallized. And we've already started the outreach. Even yesterday was a day when I spent time on reaching out to other stakeholders in Karachi and trying to convince them. Because the traditional approach of one change at a time, baby steps, and looking at things in isolation, that ain't gonna cut it. That is for sure. We need a full-scale geometric progression, and for that everybody has to come through. And it is a job that needs to be done with a lot of passion. So, and also, as Nadeem pointed out earlier, that underwriting to claim management, contract execution to risk mitigation, technology should be at the heart of everything that insurance industry does. And that does require a lot of I would say commitment, investment dollars, but all for a good cause, because at the end of the day, as I said, the potential is immense. Now, the Socrates once said that the secret to change is not to focus all your energy on fighting the old, but rather to building the new. And I think that's the spirit with which we need to take it further. This brings me to the final part of my speech, and I'll leave you with 3 specific thoughts. The first one is that there is a need to promote a culture of innovation and entrepreneurship in the insurance space. And this can only happen when everybody comes together. And I pointed out on public sector space, in the private sector space, there are many gaps. And we really, as a regulator, feel the point of getting the 5-year plan in place and trying to get government to back it. We have raised this with the finance minister a couple of times, and she's very supportive of it, and hopefully we will get into a shape where there will be broad-based commitment around it.
I also would encourage everybody that the regulatory sandbox is something at SCCP which is open now year-round. So I would encourage everybody who has any good idea to come out and reach the policy side of our insurance division with any ideas that they have, and I assure you we'll give it our full consideration. The second thing I think that is needed is for the insurance industry to invest in technology. It's not a good example because there is certain media hype around it, and Nadeem criticized it in terms of embedded things, but I feel that the case of digital lending and the massive growth that it witnessed, despite all the negative media press, a little of which was perhaps fair and a significant part was not so fair, is a case in point. We can run sprints and we can make an impact very quickly with the right set of customer journey understanding, with the right technology, with the right tool, by creating awareness and by trying to meet the needs rather than to push a product. Finally, I would say that there is significant potential in leveraging existing strengths through alliances, integrations, and product bundling enabled by technology, because it reduces costs and it allows multi-product distribution under one roof. Nadeem has spoken about it critically, but I think there is sometimes value in co-bundled products as well. The problem of the claim ratio in standalone versus bundled products is a fair comment, I think. But at the same time, I personally feel that that's more an issue of awareness, and that is the onus lies in creating the right awareness and letting people know. But at the end of the day, these endeavors will only be successful if insurance industries are customer-centric, they are willing to collaborate, and more importantly, they're willing to share data. We need to grow the pie. We cannot hold on to what we have close to our chest, not share data, and not be open to trying and make as I said, a geometric progression or a transformation. That is not going to happen with old ways. And then technology utilization, and I also think that the industry, the regulator, the public sector, everybody, and conferences like this are a good tool. There is need to spread digital education and awareness campaigns are required. But in the end, I would just assure you that SCCP is ready to play its role, not just as a regulator, but also as a facilitator and an enabler. I assure you that we'll support any and all good ideas that come our way, which make sense for the policy holder. And I hope and I wish that today for each one of you is highly successful and productive exchange of knowledge and expertise comes out. And I would at the end again share. I was not planning to recite anything, but Nadeem has encouraged me, because without Insurtech, गालिब का एक शेर है, वो थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो आपको शायद समझ में आ जाए कि without Insurtech, without data, without customer journey, it would be something like this कि रो में है रख्शी उमर, कहाँ देखिए थमे, ना हाथ बाग पे है, ना पा है रकाब में. So with that, I would say thank you very much. Thank you, Amir Saab. And with that, now we would like to move towards the panel discussions. We have about 5 panel discussions highlighted for today, and we'd like to begin with the first one. As I call out the names of the moderators and the panelists, I'd really request you guys to head out to the stage. The first panel discussion is going to revolve around the life insurance in transformation, the recipe for next 10 million happy customers. This is going to be moderated by Mr. Azim Iqbal Pirani. He's the CEO of Pak Qatar Family Takaful, the first and largest dedicated Takaful group in Pakistan. On the social front, he's one of the founding trustees at Ilhaz Trust, a provider of microfinance for developing a sustainable livelihood for the economically challenged and social support. Please, sir. The panelists would include Mr. Javed Ahmed. He's the Managing Director and Chief Executive Officer of Jubilee Life Insurance Company Limited. He's a Fellow of the Society of Actuaries USA, Associate of Institute of Actuaries Australia, and Fellow of Pakistan Society of Actuaries. Our panelists would also include Ms. Sophia Bibi. She's a dynamic professional working with the Securities and Exchange Commission of Pakistan, SECP,
which has had the privilege of actively shaping regulatory policies within the vibrant life insurance sector of Pakistan. Mr. Muhammad Ali Ahmed, he is the MD and CEO of EFU Life and has 29 years of professional experience in the life insurance industry. Prior to being appointed as CEO, Ali was the Chief Strategy Officer at EFU Life. Mr. Naya Hussain, please, Executive Director, Salam Takaful. He has 23 years experience in insurance, regulatory and private sector. He's working and looking after strategy and new initiatives. Dr. Aftab Imam, he serves as the Executive Director of the State Life Insurance Corporation of Pakistan, bringing with him a wealth of experience spanning nearly 34 years. We will have about 1 hour dedicated towards this panel discussion, and we'll leave the discussion for about 40 minutes, and then we'll have 10 minutes of a Q&A session. We will also queue towards you, just informing you when we have about 5-10 minutes left, so we can keep all the panel discussions spanned within an hour. I'll leave it in your guided hands, Mr. Azim Iqbal Parani. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Mashallah, one of my fellow colleagues was just pointing out that this is probably the first event where we're actually running on the dot. So that is truly admirable because it doesn't happen very frequently, unfortunately, in Pakistan. Okay, so let us begin. I just want to sort of set the stage, although Nadeem Saab and Amir Saab have already sort of briefed on where things stand from a regulator and an industry perspective. And I'm not one to contradict Nadeem Saab, but yes, absolutely, those are problems that we are facing, and some of them, rightly so, are our fault. We haven't focused on the customer the way that we're supposed to. But what I can say as someone being on the inside, it is something that we're constantly working on. And as should be the case with everything in our lives, it's a constant work in progress of developing a customer-centric mindset. Unfortunately, our society is not one for a customer-centric mindset. You will often find the grocery store owner or the person selling kapra at his shop, and you go and you look at 3 things, and you ask and say, show me a 4th, and he'll probably, throw a comment saying that kharidna to kharido wa na jao yahan se. So that's the unfortunate truth of the society that we live in, and that's something that, again, something that's close to my heart is developing those youth and children who sort of don't think that way or behave that way. Having said that, insurance as an industry stands at about 0.86% of GDP, of which over 70% of that is life. Not even 1%, despite the fact that our GDP has sort of been falling lately, yet we're not even 1% of our GDP. So we've got a long, long way to go. Originally, the issue was that Sharia issues hai, log Islam ki wajah se nahi le rahe. Ab alhamdulillah takaful bhi aa gaya hai. So the issue is far deeper than that. As Amir Saab rightly said, there is an issue of awareness, and that issue penetrates down to our average consumer. The average person doesn't want protection. They come to you for investment returns. And unfortunately, that's where all the mis-selling ends up happening, where people are looking कि भाई मेरे पैसे double हो जाए, मेरे पैसे triple हो जाए, तो भाई ठीक है भाई, agent भी उसी बात पे फिर खेल रहा होता है. Insurtech is definitely a godsend for us. If we can effectively leverage that, we will be able to bring our costs down to a more manageable level. And with that, I will first throw a question out to this panel and to everybody, just for 1 or 2 points each. What are the biggest issues that you face as a life insurance company or as a regulator or as an up-and-coming life insurance company? What are the biggest concerns that you have? And then we can start with the questions and then end at the end with how Insurtech would ideally be able to overcome those issues. So I'll start with Javed Saab at my left.
one or two points of what are the biggest problems that you tend to face as a life insurer in Pakistan? Thank you, Azim Saab. In the current environment, I think one issue that everybody is facing is the cost escalation. Life insurance company or general insurance companies, we are still, abhi jo baat ho rahi thi, we are all manually driven. Sara kaam manual hota hai, human resource cost hai. So one is, I think, cost pressure, which is hitting the entire industry. There's little growth in the premiums, so cost is going to affect everybody. That's one, I think. The second, I believe that in the entire insurance industry, the biggest challenge is customer engagement. वो एक मेरा ख्याल है लाइफ में तो बड़ा कॉमन है, हर कोई ये शिकायत करता है यार वो एजेंट जब बेचने आता है उस वक्त तो बहुत फॉलोअप करता है, उसके बाद गायब हो जाता है. उसकी वजह ये है कि वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन दीज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स for selling. We don't have direct, and I'm talking about retail customers. I'm not talking about corporate customers because there the engagement level is very, very different. But as far as retail customers are concerned, which I believe are the future, who drive the penetration, who will increase the volumes of insurance business, wahan par I think the serious lack of engagement is a concern for, it should be a concern for everybody. I think that is one area where we need to seriously work on. So I'll just limit myself to two, so that other participants can Thank you. contribute. Sophia, if you could take 2 points from your end. Sure. Sir, I would be speaking from policyholders' perspective because our insurance ordinance preamble say कि we are to protect the interest of the policyholders. So we do not face the, जैसे आपने कहा कि life insurance के हम क्या issues face कर रहे हैं, तो मैं थोड़ी उनके perspective से कहूँगी. जावेद साहब ने rightly point out किया है, but in my opinion जो बहुत बड़ा issue है वो perception image है insurance sector का. I think whether it's insurance industry or regulator or other stakeholders, we have not been able to get the message across to the public of the value and utility of insurance. It is something which is very common in other countries, like people have insurance for life, for health, for their phone or their property and any other asset. But Pakistan makes a general perception that it is an expense and not a need, and they only buy it when it is absolutely essential. And this then generally moves out to the other issues, जिसमें हम ये भी कह सकते हैं कि insurance penetration बहुत कम है, तो insurance penetration कम है क्योंकि insurance का जो एक perception है general public में, that is very, very poor and negative. Insurance itself is a product, very positive product, but the perception it has is immensely negative. So I would like restrict myself to that as like the time is limited. Thank you, Azim. I think if you look at the last 2-3 years and the current year as well, usko problem to nahi kahenge, but I think it's something that we as an industry are, I'm sure we are looking at it, our peers are also looking at it, is just a holistic review of our business model. You know, like building on the few points, cost escalation is also part of it, reaching out to customers is also one part of it. Lekin the kind of situation we are facing in the country right now, I think a situation like this we've not had for probably first time hui hai. And this has got us to rethink what are the areas of our business model where we can bring in more efficiency, be more leaner in terms of how we operate, be more efficient in terms of how we reach out to customers, how we make our products add more value or offer more value to our customers. So the entire landscape of what we have been doing for the last 20-30 years, I think the last 2-3 years have given us that opportunity to just take a step back and see कि जो हम कर रहे थे, where are the areas where we can actually make improvements. You know, आमिर साहब ने कहा और बिल्कुल जो शुरू की जो speeches थी उन सब में यही बात हुई कि revisit करने की ज़रूरत है बहुत सारी चीज़ों को. So मुझे लगता है कि I don't take it as a problem, but I take it as an opportunity to actually take a fresh look at what we've been doing as an industry. और उसमें Insurtech टेक्नोलॉजी का रोल बिल्कुल बहुत इम्पॉर्टेंट है वो. दूसरा आई थिंक कनेक्टेड टू इट एक चीज़ जो we've been talking for so long is the customer financial literacy, insurance की literacy, और वो हमारा उसको अगर pain point बोलें तो वो हमेशा से रहा है. Despite of all the efforts that we have done, you know, we have significant marketing budgets हमारे होते हैं, promotional activities हम लोग करते हैं, you know, on-ground activities होती हैं, we engage with customers a lot, but still that has not really moved. कोई अगर आप KPIs देखें तो ऐसे move हुए नहीं हैं in terms of customer awareness. So I think as we talk
in the next 1 hour in this panel, I think the role of technology and how that can be used to actually create awareness and engagement, that should come forward as well. So in my opinion, this is a very good opportunity, even in the next couple of years, for us as an industry to look at our business model and find areas of improvements. And along with that, I think continuously focus on how we can engage the customer, how we can make improvements. So these things, along with all the other things that we'll talk about, will help the insurance industry move forward. Thank you. Sarikam. आमिर साहब ने अपनी तकरीर का इख्तितामिक शेर पे किया था, मैं अपना आगाज़ शेर पे करूँगा बेसिकली। आईने नो से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मुश्किल यही घड़ी है कौमों की ज़िंदगी में। तो एक्चुअली डेफिनेटली हम काफ़ी बात करते हैं कस्टमर जर्नी को इम्प्रूव करने की और टेक्नोलॉजी को लाने की, लेकिन जैसा कि अली ने कहा कि टेक्नोलॉजी को लाने से पहले आई थिंक जो बिजनेस मॉडल है दैट नीड्स टू बी होली रिव्यूड फ्रॉम अ होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। और आई थिंक टेक्नोलॉजी उस वक्त तक इंश्योरेंस के तमाम एरियाज़ में, कस्टमर जर्नी में या प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर या की क्लेम्स के अंदर नहीं आएगी जब तक कि हम एक्चुअली आई थिंक एक कस्टमर सेंट्रिक मॉडल को ना बेसिकली अडॉप्ट करें। और कस्टमर सेंट्रिक मॉडल आई थिंक उसके ना आने की भी सर्टेन वजूहत है मेरे ख्याल में। अभी जैसे हम अभी इस पैनल को नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे उसमें मैं काफ़ी मेरे पास पॉइंट्स बताऊँगा। तो आई थिंक इसमें हमें कि टेक्नोलॉजी इट सेल्फ स्टैंड अलोन जो हमारे मसाइल को हल नहीं करेगी अनलेस की ब्रिंग कस्टमर सेंट्रिसिटी टू द मॉडल बेसिकली। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपने बात की, आपकी बात को बढ़ाते हुए एक गैप है, जैसे गैप आई सी इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री हमारे यहाँ स्टेट लाइफ में स्पेशली। आपने प्रीमियम ले लिया साल में एक दफ़ा, दैट्स इट। उसके बाद क्या हुआ? हर साल लेते रहते हैं आप। लेकिन वो गैप है कि जी आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी, इंगेज करना है उसके, और उसको जो है ना आप खुद नहीं कर सकते तो आप पार्टनर कर लें किसी के साथ, एनजीओज़ के साथ, कि जो कि उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकें, लाइफस्टाइल इंप्रूव कर सकें, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ जो है ना वो कर सकें। तो वो एक गैप है कि प्रीमियम के अलावा बीच में गैप होता है, कोई रिलेशनशिप नहीं होती। अगर ये रिलेशनशिप बिल्डअप की जाए, और दूसरी बात जर्नी की बात सबने की है, जो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक ये जर्नी कस्टमर के लिए जो इन्होंने कहा कस्टमर सेंटर होना चाहिए, अच्छी नहीं होगी, फास्ट नहीं होगी, एफिशिएंट नहीं होगी, उस वक्त तक जो इमेज है इंश्योरेंस कंपनी का इम्प्रूव नहीं होगा। वो कहते हैं कि हम प्रीमियम दे देंगे, बाद में हम तो होंगे नहीं, या एक्सीडेंट हो जाएगा तो ये हमें जो क्लेम पता नहीं कब मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। दूसरी बात है स्टोरी टेलिंग हमारे यहाँ नहीं होती कि जो जिन लोगों को क्लेम मिल चुके हैं वो वाक़ई बताएं, हमारे यहाँ लोगों को बताएं। यानी जो इन्फ्लुएंसर्स इनको यूज़ कर हम बहुत कम करते हैं कि वो बताएं कि जी अब हमारा क्लेम था, क्लेम किस तरह फ़ौरन क्लेम मिल गया और आप लोग भी कराएं। तो ये लोगों को बताने की ज़रूरत है कि उनकी नीड है ये बेसिकली। तो वो ज़रा गैप है। मैं जब स्टेट लाइफ में आई बिलोंग टू FBR, प्रीवियसली मेंबर FBR इन IRS, तो मैं जब यहाँ आया स्टेट लाइफ में डेपुटेशन, देन आई रियलाइज कि कितना अच्छा ये काम कर रहे हैं और कितनी ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे पता ही नहीं था। तो जब मुझे नहीं पता था कि अवाम को कैसे पता हो, तो इसका मतलब है बहुत बड़ा गैप है, विच नीड्स टू बी फिल्ड। और जो यहाँ की जो IT डिवीज़न को मैं हेड कर रहा हूँ अभी, और वी आर गोइंग टू टर्न इट आउट इंशाल्लाह। तो मैं देखा कि हम टेक्नोलॉजी का भी यूज़ नहीं कर रहे। वहाँ होना तो ये चाहिए कि एवाटार हो जो कि बियॉन्ड ह्यूमन कोई चीज़ फेस आए और वो ह्यूमन की तरह इंटरेक्ट कर रहा हो, उसको सारी इन्फॉर्मेशन हो कस्टमर की, और वो पीछे उसके साइकोलॉजिकल गाइडेंस भी, और AI बेस्ड वो डील कर सके एज ए ह्यूमन, बड़े बेटर देन ह्यूमन, एज एन एजेंट विद द कस्टमर्स, रियल टाइम चीज़ हो रही हो। और ये सब पॉसिबल हो सकता है। सारे जो चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी में अवेलेबल हैं, हम AI को यूज़ करते हुए, सही यूज़ करते हुए, स्मार्टली यूज़ करते हुए ये पॉसिबल है कि हम रियल टाइम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, हर प्रोसेस में शॉर्टन कर सकते हैं। और दूसरी बात एक और बड़ा फैशन है हमारे यहाँ के जी, हम कोशिश करते हैं कि बाहर से सैप लगा लें और आफ्ताब आप अभी से वो सारी चीज़ों की आगे की जवाब दे देंगे, तो I'll just cut you off over there। बल्कि मेरा पहला सवाल है ही आपसे कि हम अगर डिजिटल अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, and you representing state life, which is currently, pretty much most of the market, and we all just share the little segment on the side,
How do you see those digital opportunities making things better or easier for your organization? And it's changing very fast. हम नहीं करेंगे तो कोई और कर लेगा. तो we are going to be left far behind. अभी हम profitable हैं, profitable नहीं ranking change नहीं करेंगे. It's simple as that. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो है हमारे जो processes हैं उनको जो बताया paperless क्यों नहीं हो सकता है और ये हम कर रहे हैं. यानी हमने अपने फाइल सिस्टम को कम करने की कोशिश की है. सारे फाइल्स हमारी स्कैन हो रहे हैं और एक सॉफ्टवेयर बना लिया है ताकि हम जो भी हमारी इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो वो ऑनलाइन हो. और हमारे पास एक स्टोरी है, कामयाब स्टोरी है. हमने जो यूनिवर्सल हेल्थ प्रोवाइड की है पंजाब में, केपी में और फेडरल कैपिटल में और गिलगित बल्तिस्तान में भी दी है हमने. तो वहाँ हमारा जो सिस्टम हमने लगाया है इट्स ऑल डिजिटलाइज्ड, ऑटोमेटेड, ऑलमोस्ट पेपरलेस है. और जो हॉस्पिटल्स प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज उनको हम मॉनिटर कर रहे हैं, रियल टाइम 24/7 मॉनिटर कर रहे हैं. AI बेस्ड मॉनिटर होता है. और जो हमारे रेशोज बनाए हैं जहाँ वेरिएशन आती है हमारी टीम पहुँच जाती है, उसको हम ब्लैक लिस्ट कर देते हैं. और उससे हमें ये भी देखा कि ना सिर्फ हेल्थ कवरेज मिल रहा है बल्कि क्वालिटी ऑफ हेल्थ कवरेज बहुत इम्प्रूव हो गई है. ख़ासतौर पर केपी में जब मैंने वेट देयर तो अशर साहब जो हेड कर रहे हैं उनको बताया उन्होंने कि जी हमने हॉस्पिटल्स को अप्रोच किया, इसमें क्लिनिक्स को अप्रोच किया. उन्होंने कहा कि जी फॉर एग्जांपल हम 7,000 का आप अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर रहे हैं, आपको 20,000 देंगे, लेकिन आपको बिजनेस देंगे, लेकिन आप अपने डॉक्टर्स की क्वालिटी इंप्रूव करें, इक्विपमेंट्स अच्छे लगाएं, हॉस्पिटल्स को क्लिनिक्स को इंप्रूव करें, बेड्स इंप्रूव करें. तो इस तरह वहाँ मशरूमिंग ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स भी हो गया है. तो वो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंप्रूव हो गई है हेल्थ में. और ये हम बलूचिस्तान में हमने शुरू कर दिया है, हो गया है. सिंध में भी कोशिश कर रहे हैं, हो जाएगा. तो ये बहुत ज़रूरी है. हम अब चाह रहे हैं कि अच्छा हमने कोई सॉफ्टवेयर ख़रीदा नहीं है वेस्टर्न वर्ल्ड से. हमने खुद अपना होम ग्रोन खुद बनाया है हमने सॉफ्टवेयर. और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसी चीज़ को रेप्लिकेट करें, अडेप्ट कर लें, अडेप्ट कर लें अपने डिफरेंट डिविजन्स में. स्टेट लाइफ में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर बन चुके हैं, कुछ बन रहे हैं और सर्वर्स हम खरीद रहे हैं. और हमारा जो कोबॉल सिस्टम था Oracle 6 पे चलने वाली चीज़ थी, वो वहाँ से डेटा माइग्रेट कर लिया है और Oracle 19 पे आ गए हैं हम लोग. तो काफ़ी कुछ हम लोग कर रहे हैं. इंशाल्लाह within 2 years we'll be a different organization altogether. It's going to be a world class organization. माशाल्लाह. तो इसमें मैं सिर्फ एक फॉलो अप सवाल मेरे दिमाग में इस वक्त आ गया. ये आप जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर के एतबार से आपने जो डिजिटाइजेशन के लिए that sounds really good. How do you see your distribution channel changing because of technology? Is that also in the pipeline? जी बिल्कुल है. हम लोग अभी मकसद पहले कहना नहीं चाहिए कि जी हम लोग जो ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं कि जो भी हिट्स होते हैं इंटरनेट में, जहाँ भी कोई सर्च करेगा इंश्योरेंस के बारे में, हम लोग विद इन अ डे वहाँ पहुँच जाएंगे, उसको सर्विस प्रोवाइड करेंगे डिपेंडिंग अपॉन हिज और हर नीड्स और द नीड्स ऑफ द कॉर्पोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन. इस तरह के बहुत सारे काम कर रहे हैं हम जी. Thank you. Now moving to Javed Saab, similar question. Digital opportunities in the private sector, and reference our chat a little while ago. What sort of roadblocks do you also see? So everybody knows the benefits and the beauty and the advantages, but as a private sector company, obviously, as State Life has a certain advantage that we don't. They're owned by the government. They don't need to worry about anything. They're able to achieve things at a faster pace as long as they're moving. We in the private sector have other roadblocks that might be there. So I just wanted to hear that, bring that out onto the table, and then I'll bring the similar question towards Ali as well. Yes. So Azim, I think opportunities definitely are there. और अभी जो बात हो रही थी कि there are two fronts. One is the customer front, and second is the back office efficiencies. Traditionally जो पुराने इंश्योरेंस हैं they are bogged down by the legacy systems. अभी नदीम साहब ने भी बात की थी कि वो day one पे upfront डिजिटल बनाना एक अलग चीज़ है. And we see that life में भी ऐसी कंपनीज आ रही हैं जो कि day one से डिजिटल होंगी. बट पुराने इंश्योरेंस के लिए उसको इंटीग्रेट करना, चीज़ों को बेहतर करना. बट द गुड पार्ट इज़ दैट टेक्नोलॉजिकली इट हैज़ नाउ बिकम पॉसिबल that you continue to run the legacy system at the back end and you develop a front end for the customer and everybody else.
With regard to the challenge that you mentioned, one issue that we face is, I think, and there probably the SCCP will be able to help us, is the regulatory forums who still require paper, signed documents, legal contract, which apparently, at the end of the day, they themselves say कि ये तो customer को समझ ही नहीं आता इतना बड़ा document है. तो वो पहले तो ये कि चाहिए भी, लेकिन अगर मिल भी जाता है तो कहा ये जाता है कि ये तो बहुत complex है, customer को तो समझ नहीं आता. So I think we need to simplify that front and educate people on those forums. For example, policy document delivery through WhatsApp की बात हो रही थी. हमारी एक कंपनी ने ऑलरेडी शुरू भी कर दिया है. We are on this process. The question is, will the judge in a court or will the FIO accept that document? कि ये तो WhatsApp पे आपने भेज दिया था, ये पढ़ा भी था. हम तो physical document with CNIC verification जो भेजा जाता है, वो accept नहीं किया जाता है. When we provide a receipt of courier that this is a receipt that the document was delivered, they say नहीं वो हमें sorry वो जो log होता है, they say नहीं हमें actual वो जो signature वाली sheet है ना उसकी copy चाहिए. So I think that is an area that we need to work on. उस पे I'm sure के काम कर लिया जाएगा regulatory framework में भी. And I must say that SCCP has been trying to do its best in supporting us in all these endeavors. जहाँ पर भी issues हैं. और जो आपने कहा ना कि वो स्टेट लाइफ गवर्नमेंट का इदारा उनको नहीं सॉरी मैं आई वाज सिटिंग विद सीईओ ऑफ स्टेट लाइफ एंड सीएफओ एंड दे आल्सो मेंशन्ड एग्जैक्टली द सेम इश्यूज दैट कोर्ट्स आर गिविंग डिसीजंस बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड इंश्योरेंस. तो वो दे आर पासिंग थ्रू द सेम सिचुएशन. वहाँ पर भी ये चैलेंज है. तो वो एक डिजिटल स्टोरी बिल्कुल यस यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस इज अ वेरी गुड स्टोरी. बाकी जो एरियाज हैं जो पुराना हमारा ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस का इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस जिसे हम कहते हैं वहाँ पर ये चैलेंज हैं. But I think going forward with the digitalization front end, back end, बहुत सारी चीजें जो कि address की जा सकती हैं. But let's hear our other panelists. So Ali, would you just take that forward as another one of the larger private sector companies as well? Sure. I think the way we need to look at Insurtech or technology is as an enabler in terms of what we want to achieve in our business model. And one of the ways of making it work within an organization, such as ours, which has been there for the last 30 years, I think Baki bhi, obviously, Jubilee also has been there for such a long time. So we have systems and processes which have been working and they have been serving us well for a long time. When you try and bring in technology and you try to intervene with technology in certain parts of the organization, one way to do it and the way we have done it is to do it in small bits and pieces. Pick up one process, bring in technology, see what impact it has. A lot of times, maybe you need to treat technology as a startup mindset के साथ organization में उसको treat करना पड़ता है. So at least it can start intervening, start giving you efficiency in बहुत सारे areas के अंदर. अगर हम कोशिश, obviously, you can have end-to-end transformation also in terms of what you want to do. But that might be more costly. You might have, other dynamics of the organization जहाँ पे it may just not work. लेकिन I think the private sector, I can speak for my company and the private sector as well. Technology का usage हमने, I would say, एक अच्छे तरीके से किया है. We have invested in technology. There was discussion about going paperless. I think we have processes in-house जहाँ paperless चीज़ें चल रही होती हैं. टेक्नोलॉजी एट द बैक एंड के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट की गई है, फ्रंट एंड के ऊपर भी की गई है. एप्स हम सब ने बनाई, उसकी इम्प्रूवमेंट विद टाइम होती रही, एंगेजमेंट उसके अंदर हो रही है. सो आई वुड से कि टेक्नोलॉजी के ऊपर इनोवेशन भी हुई है. आई थिंक वो शुरू में एक इम्प्रेशन को जिस तरह का है कि इंश्योरेंस सेक्टर ने अब तक इनोवेशन नहीं की है. सो आई डोंट टोटली एग्री विद दैट. इनोवेशन हुई है, मे बी वो इतनी विजिबल शायद नज़र ना आई हो, लेकिन वी नो कि हमारे प्रोसेसेस के अंदर बेहतरी आई है, इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं. और उन्होंने हमारे फ्रंट एंड को भी सपोर्ट किया है. जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उनको भी सपोर्ट मिला है, और जो बैक एंड प्रोसेसेस हैं वहाँ भी बेहतरी हुई है. तो आई थिंक ये तो हम सब ने किया है. आई थिंक जावेद ने प्रॉब्ली सारे पॉइंट्स कवर किए रिगार्डिंग द रोड ब्लॉक्स जो हमें फेस होते हैं. हमारा जो प्राइमरी लॉ है इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस, वो जब बना था 2000 के अंदर, तो उस वक्त ऑब्वियसली ये जो टेक्नोलॉजी का यूजेज है वो इंडस्ट्री में इस तरह से नहीं होता था. तो वो पूरा जो लॉ बनाया गया वो अराउंड, आई वुड से, मैनुअल पेपर बेस्ड उसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद थी. ओवर द ईयर्स, एज SSCP हैज़ बीन एंगेजिंग विद अस, वी हैव बीन गिविंग आवर इनपुट. ऑल्सो द SSCP हैज़ रियलाइज्ड के लॉ के अंदर चेंजेस या एडिशनल गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस ला के
enable कर दिया है हमें as a industry कि अब हम एक paperless policy issue कर सकते हैं. Even though कि जो primary law है उसके अंदर अभी भी वही पुराने process हैं लेकिन regulations आ गए हैं. The good thing is कि the level of engagement with the SSCP बहुत I think close है इस वक्त, and आमिर साहब ने जो 5-year road map की बात की, बहुत सारे जो road blocks की जो हमें इस वक्त road block लग रहे हैं, I think वो अगर that 5-year road map of SSCP is implemented and the industry is fully behind the SSCP, so a lot of those road blocks will actually be ख़त्म हो जाएंगे वो, और इन चीज़ों में improvement आएगी. मेरा अपना ख्याल ये है कि टेक्नोलॉजी को as long as हम as a enabler देखें और इस mindset से उसको approach करें, तो right from the C-suite and the board उनको भी बात फिर लगता है कि हाँ बात जो है वो कंपनी के फ़ायदे के लिए हो रही है. At least that's the approach we have taken, and I would say that we have had success on some of these fronts in the last few years. Thanks, Ali. Now I'll go to Nair. As an up-and-coming life insurer, but purely digital, so you are in a space that the rest of us can probably not relate to right now. How do you see these opportunities? Obviously, you must have plans and you know, things, thoughts of dreams of where you're going to be with your project. So share some of that with us then. Thank you, Azim. Actually, I think कि जो अभी SCCP ने जो last I think 31st August को हालिबन डायलॉग किया था, स्ट्रेटेजिक डायलॉग, उसमें भी ये बात करी थी कि SCCP ने जैसे डिजिटल इंश्योरेंस डिजिटल ब्रोकर्स का एक सर्कुलर निकाला है, म्यूचुअल फंड में निकाला है, डिजिटल ऑनबोर्डिंग फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स. आई थिंक इसी तरीके से एक डिजिटल ऑनबोर्डिंग मैकेनिज्म फॉर दी लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री वो एक रिक्वायर्ड है मेरे ख्याल में. आई थिंक जो पिछला जो पूरा लॉ है, डेफिनेटली यूनिकलिंग रूल्स हैं, उसमें मैं भी काफ़ी शामिल था ज़ाहिर उनको बनाने में, तो वो एक डिफरेंट उसके अंडरलाइंग अजम्पशन डिफरेंट थे. नसल समझ साहब भी कहते हैं काफ़ी कि जो फॉर्म है 50 पेज का बनता है एक्चुअली. तो डिजिटल जर्नी को, डिजिटल कस्टमर जर्नी को हमें आसान बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बेसिकली, ठीक है. और आई थिंक कि जिस तरह म्यूचुअल फंड सेक्टर के अंदर आपने यू कैन से कि जो एक प्रोपोर्शनैलिटी का प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया बेसिकली कि फुल फ्लैज जो इन्वेस्टर्स अकाउंट्स हैं उनके लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं, और फिर जो आसान सहल अकाउंट है, सरमायाकारी अकाउंट है, उनके लिए ज़रा सा निस्बतन कम रिक्वायरमेंट्स हैं. तो आई थिंक इसी तरीके से ऐसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के जिसके अंदर फ्रंट एंड चार्जेस नहीं है फॉर एग्जांपल, और जो कि अगर आप मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट रिस्क भी नहीं है, तो उसको 3 या 4 क्लिक्स के ऊपर वो प्रोडक्ट इशू हो जाना चाहिए बेसिकली. क्योंकि अगर ऑब्वियसली 50 पेज डिजिटली कोई भी कस्टमर नहीं भर सकता बेसिकली एक्चुअली. सो डिजिटल इंश्योरेंस को SCCP ने इनेबल करने के लिए काफ़ी कोशिश करी है, इनफैक्ट देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन मजीद कोशिश करने की ज़रूरत है. और जो इंटरनेशनल यानी IAIS के जो प्रिंसिपल्स हैं जिसके अंदर कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी, तो उसको रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है. और जो सिंप्लीफाइड कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट के लिए निस्बतन आसान प्रोडक्ट आई थिंक एक डिजिटल मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है. Thank you. Sophia, हम customer centric approach की बात करते हैं, but being in the regulator's seat, obviously we have one view of what customer centric approach means, but on your side of the table, what do you see happening and how do you see the interaction with the customer changing? And by customer, I mean the end user. First of all, we see the interaction between the policyholders and the insurance companies in a very positive manner, because on one end it provides financial inclusion and on the other end it provides protection against the uncertainty and the risk. However, there are some concerns. जैसे नैयर साहब ने बहुत स्टार्ट में बात की थी कि there is involvement of agents, and in bank मतलब बैंक के केस में there are different agents, but direct sales force भी involved है, और majorly वही मॉडल जो है वो although it's a decade old model, लेकिन right now prevalent वही है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, particularly लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में, जो indirect interaction है between the policy holders and the insurance companies. We do have some concerns regarding that, because although वो cases कम होते हैं लेकिन वो होते हैं, और उनकी वजह से जो एक word of mouth create होता है, जो एक perception create होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है. भले मिस सेलिंग के या
एब्सेंस ऑफ ड्यू डिलिजेंस के या फिर आपकी जो ओवर कमिटमेंट है एट द स्टार्ट ऑफ द पॉलिसी सेलिंग, वो मतलब कि वो जो प्रोसीजर है दैट इज़ नॉट वेरी स्टैंडर्डाइज्ड and that is indirect, so there are disruptions, there are interventions, and at the end there is a negative image. Because of this thing, as a regulator, we believe that technology has to be at the heart of everything, from product development to pricing, promotion, onboarding, KYC, आपकी claim settlement, payout, and then renewal. यहाँ पे मैं थोड़ा सर अली से डिसएग्रीमेंट कर रही हूँ बिकॉज ही साइड के हमें कुछ बेबी स्टेप्स लेने चाहिए, बट वी बिलीव कि इफ़ वी आर गोइंग फॉर द बेबी स्टेप्स देन वी माइट नॉट बी एबल टू हार्नेस द ट्रू पावर ऑफ टेक्नोलॉजी. सो फॉर दैट इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम टेक्नोलॉजी को एंड टू एंड इनकॉर्पोरेट करें. And for that, we have been trying to make some efforts in form of repositories, in forms of other engagements. और कुछ industry stakeholders का बड़ा अच्छा response आता है, but at the very same time there is a clear resistance. And it is imperative to understand that thing, that this resistance is derived out of insecurity and maybe of this fear or belief that our like business will be hijacked by the competitors or by new players. बट जैसे आमिर साहब ने एक्सप्लेन किया था, आई वॉन्ट टू रीइंस्टेट दैट थिंग कि हमारी इंडस्ट्री में जो पोटेंशियल है वो इतना ह्यूज है कि अगर आप नंबर्स पे देखें कि 240 मिलियन की पॉपुलेशन हो चुकी है, अगर हम पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के फिगर्स को देखें और सिर्फ 7.8 मिलियन इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसीज़ हैं, व्हीकल्स का डेटा देखें तो 30 मिलियन रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं, सिर्फ 9 लाख रजिस्टर्ड हैं, उनमें से भी 4 लाख इसलिए रजिस्टर्ड हैं क्योंकि बैंक लोन्स दिए हुए हैं, वहाँ पे कंपल्शन है. तो दैट द स्कोप एंड द पोटेंशियल इज सो ह्यूज कि अगर नंबर ऑफ इंडस्ट्री मतलब कि जो करंट प्लेयर्स हैं वो डबल हो जाता है, नए प्लेयर्स आ जाते हैं, तो इवन देन देयर वोंट बी एनी डिफरेंस टू द करंट बिजनेस, टू द करंट कंपनीज. सो द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर ए बेटर इंटरेक्शन बिटवीन द policy holders and between the insurance companies is through end-to-end digitalization, is through harnessing the true power of technology and not just baby steps. जी नहीं अजीज एक चीज़ का थोड़ा इजाफा करूँ उसमें कि एक्चुअली जैसे हम बात कर रहे हैं कि डिजिटल इंश्योरेंस की, तो उसमें आई थिंक एक और एरिया जिसमें रेगुलेटर को और आई थिंक इंडस्ट्री को काम करने की ज़रूरत है, वो ये कि अगर एक फॉर एग्जाम्पल कस्टमर ने अगर डिजिटली पॉलिसी लिए लेकिन अगर उसको कोई कंप्लेंट आती है तो देन अगेन सारे जो मैकेनिज्म्स है वो सारे मैनुअल हैं. फॉर एग्जाम्पल ओम्बड्समैन है या ट्रिब्यूनल है फॉर एग्जाम्पल. तो आई थिंक एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंप्लेंट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी होना चाहिए बेसिकली. आई थिंक कि जहाँ पे सिंपली जो कस्टमर भी एक्चुअली आपकी कंप्लेंट डिजिटली लॉन्च कर सके और फिर वो SECPA से भी और दूसरे बाकी फॉरम्स के साथ भी वो आपस में इंटीग्रेशन हो. सो आई थिंक टेक्नोलॉजी बेस्ड एक इंडस्ट्री वाइड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी डेवलप साथ साथ करना चाहिए. जी जी ये बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कि CRM को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. उससे डिस्प्यूट्स भी कम हो जाते हैं. लेकिन जो बात मैं समझता हूँ जो इम्पोर्टेंट मुझे लगी कि वी नीड टू डेवलप अ क्रिटिकल मास ऑफ ट्रेंड इंटरनल कस्टमर्स, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं. और इसलिए कि मैंने देखा कि स्टेट लाइफ में कि हमारे यहाँ देयर इज अ डर्थ ऑफ ट्रेन पीपल स्पेशली इन द IT डिवीज़न. हमारे पास लोग ही नहीं काम करने वाले. और जब हम ऐड देते हैं तो लोग जब आते हैं तो वो इतने अच्छे नहीं होते. 50 लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं तो 5 चूज़ करते हैं. तो वी नीड टू ट्रेन आवर एम्प्लॉयज़ एज वेल. ये जो डिजिटल ट्रेनिंग है इसमें मैं खाली रेगुलेटर से बड़ा काम कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट है, इसको स्ट्रेंथन करें और ये जो डिजिटल ट्रेनिंग्स हैं हमारे एम्प्लॉयज़ की ये करवाएं, इन हाउस भी करें और विद पार्टनर्स भी करें. ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू एजुकेट आवर वर्क फोर्स इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. उसके बगैर नहीं हम काम कर पाएंगे. जो जर्नी है ना इम्प्रूव नहीं हो सकेगी. और जो बात आप कह रही थी, बीबी कह रही थी, ये सब तब होगा जब वी हैव वेरी वेल ट्रेंड वर्क फोर्स. और ये वन टाइम नहीं होना चाहिए, इट शुड बी परपेचुअल. और मैं अक्सर लोगों को बुला कर कहता हूँ जब ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं कि जी आप ये सीखें, जो भी कोर्स करना चाहते हैं हम तो करवा रहे हैं, हमें पता है हम करवा के देंगे, वी हैव द रिसोर्सेज. और प्लीज़ ऐड वैल्यू टू योरसेल्फ ऑन अ डेली बेसिस. कीप ग्रोइंग, ऑलवेज मोर, ऑलवेज बेटर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक हमारा वर्क फोर्स जो क्रिटिकल मास हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगी, उस वक्त जो पोटेंशियल हम रियलाइज़ नहीं कर सकते. वी नीड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर वर्क फोर्स बाय ट्रेनिंग them again and again perpetually. Thank you. Let's move on a little
something that's come up from these discussions is that we have an issue of complaints, which whether we go to a forum, there's a lack of understanding, or we mentioned that our penetration is very low. If I am using digital channels, I've effectively taken out the agent from the equation, right? So I'm selling directly to the end user. But we see that our penetration is extremely, extremely low. My question, and I'll direct this to Javed Saab, is at the end of the day, we keep harking on that awareness is so low, people don't feel they need insurance. So if I'm pushing everything to a digital channel where there is no human to push, then will sales suddenly drop? Or will it eventually happen that the companies will say, why am I wasting my time with this? I was better off with the guy on the feet on street actually doing the selling. I mean, maybe I'm still just jumbling my thoughts, but Darasab, maybe you can help me clear things up. Yes, पहली चीज़ तो ये कि we are not talking about one day we will shut down the direct sales force and start selling digital. So these two will continue simultaneously. So yes, digitalization itself does not mean that people will start buying insurance. We have to look at the intrinsic problems of our culture and our society. People here don't buy insurance. अभी जो बात कर रही थी कि बैंक का लोन होता है अगर गाड़ी पे तो मजबूरन इंश्योरेंस लेनी पड़ती है. गाड़ी तो उतने की है, लॉस की प्रोबेबिलिटी वही है, लेकिन उसके बाद वो इंश्योरेंस नहीं कराता. That's the problem. So we need to address this importance of insurance. जो कि अली ने भी कहा कि we have been trying to spend a lot on advertising EFUB Jubilee Life भी in a positive manner. अनफॉर्चुनेटली वो जो डॉक्टर साहब ने कहा ना कि हम अपने जो क्लेम्स हम पे करते हैं उसको एडवर्टाइज नहीं करते हैं, तो एज अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वी कांट एडवर्टाइज डेथ क्लेम्स. दैट इज एक सिचुएशन है. उसकी वजह कि कस्टमर टेस्टिमोनियल्स पे वी रिसेंटली वर्कड ऑन कस्टमर टेस्टिमोनियल्स, बड़ी मुश्किल से 2-3 को पकड़ के, बट दोज वर कस्टमर्स हु गॉट मैच्योरिटी क्लेम्स और सरेंडर क्लेम्स. एक वीडियो को आकर कहना कि आकर टीवी पे बोलें कि जी मुझे बड़े पैसे मिले हैं और बड़ी मदद हेल्प हो रही है, when she goes back to अपने घर तो सारे रिश्तेदार पीछे पड़ जाएंगे पैसे किधर. तो you know these are the challenges that we have to face, and I'm sure जब ये फिर अली ने भी आप लोगों ने अपना कैंपेन किया होगा तो इसी तरह की सिचुएशन है. तो I think we have to work indirectly on increasing awareness. Digitalization is good, it will help the companies in reducing, maintaining their cost, reaching to customers, it's all good. But without creating right awareness, I don't think that penetration will increase. So I can tell you the focus of Jubilee Life or our perspective on digitalization. Number one, the first advantage of digitalization is to make sure that your backend, जो अभी अली ने बात की थी, you see life companies have been doing a lot. Our mobile app has existed for the last 10 years or 11 years, 12 years, जिसमें customer प्रीमियम ऑनलाइन पे कर सकता है, information ले सकता है, request submit कर सकता है, everything was there. It's been there for 12 years now. ऐसा नहीं कि हमने आज बना लिए. तो companies have worked a lot. About 60% of our business, new business, is underwritten automatically. There is no human intervention. और ये आज का स्टैट्स नहीं है, ये मैं पिछले 8 साल पुराना स्टैट्स बता रहा हूँ आपको. सो इट्स ऑटो अंडरराइटिंग, उसमें सारे एल्गोरिदम लगे हुए हैं, उससे प्रोसेस होता है. तो ये सब अपनी जगह मौजूद है. हमारा ऑब्जेक्टिव इज टू मेक श्योर दैट वट एवर फर्दर ऑटोमेशन, जिसे हम डिजिटाइजेशन कहते हैं, टू रिड्यूस पेपर, टू सिंप्लीफाई प्रोसेसेस एट द बैक एंड, एक उस पर काम करें. नंबर 2, बी रेडी ऑन द डिजिटल फ्रंट. कस्टमर के लिए चीज़ें बना दें, सब कुछ कर दें. उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप, आई थिंक द लास्ट स्टेप, where the real difference will come is that how you are able to attract customer or make customer realize that this product is useful for them. That is going to be the biggest challenge of the industry. उस पर सबको मिल के काम करना पड़ेगा. One company can't do it, to be honest. Especially looking at the cost of marketing, even the cost of digital marketing बड़ा सस्ते में हो जाता था. But look at the cost of digital marketing today, and imagine it after 3 years down the line. It will be very, very difficult. You will need financial muscles to be able to be present on digital medium. So I think yes, digitally enabled, digital forum, सब कुछ करना है, करने जाए. उसके लिए industry has more than one reason to do it. It's not just कि हम ज़्यादा बेच देंगे.
There are many other reasons. We are a very inefficient industry. We are a labor-intensive industry. Manual काम करते हैं. All that can be handled through digitization. So I think वो अच्छा खासा incentive है industry के लिए. Cost, yes, वो डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि वो Oracle ले लें या Microsoft के system ले लें, बिल्कुल है. I think, but locally a lot of work can be done locally. हाँ बिल्कुल ठीक है, मशीन आपको लगानी पड़ेगी HP की या IBM की, but otherwise it can be done cost efficiently and it can help you a lot. I'm sure others would like to add to this, but मेरा अपना व्यू ये है कि awareness will still remain a hurdle और उसको किसी न किसी से इंडस्ट्री को jointly address करना पड़ेगा. Okay, thank you. Ali, if you want to take that forward. Yeah, so I think जो stats आमिर साहब ने दिए थे 1 और 2% जो है वो ये टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म से बिजनेस आ रहा है. बाकी तो अभी भी वही ट्रेडिशनल एजेंसी, सेल्स फोर्स, बैंक इंश्योरेंस. अच्छा, अब इसमें देखने की ज़रूरत है कि अगर इवन हम एंड टू एंड एक डिजिटल प्रोसेस लेके भी आ जाते हैं तब भी वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि देयर विल बी पीपल हु विल बी लॉगिंग ऑनलाइन एंड ट्राइंग टू बाय दैट इंश्योरेंस पॉलिसी. उसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी, अवेयरनेस करनी पड़ेगी, डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ेगी. वो सब अपनी जगह के ऊपर है. अच्छा, एक तो लैक ऑफ फाइनेंशियल या इंश्योरेंस लिटरेसी के अलावा जो दूसरी लैक है वो ये है कि पीपल, एटलीस्ट हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि इंडिविजुअल स्टिल आर हेजिटेंट टू डू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन. उसका रुझान बहुत बड़ा है. 5 साल पहले अगर हम देखें और अगर स्टेट बैंक का डेटा या कुछ हम निकाल के देखें तो डेफिनेटली मल्टीपल फोल्ड उसमें इंक्रीज़ हुआ है. IBFT, अपना डेबिट कार्ड यूज़ करना या और तरीके जो आपके लेकिन देर इज़ अ सेगमेंट जो ये समझता है कि मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करूँगा तो वो सेफ़ है या नहीं है, कोई इशू तो नहीं होगा. अच्छा, अगर हम यूनिट लिंक सेविंग्स प्लान्स को लेके आते हैं, एंड टू एंड प्रोसेस बनाते हैं, पेपरलेस प्रोसेस बनाते हैं, वहाँ पे भी जो एवरेज टिकट साइज़ हमारा होगा वो भी इज़ अ कॉमन पाकिस्तानी विद अ बैंक अकाउंट कंफर्टेबल डूइंग दैट ट्रांजैक्शन. तो ये भी एक चैलेंज है. फाइनेंशियल अवेयरनेस का एक इशू है, डिजिटल अवेयरनेस का एक इशू है, लेकिन द कंफर्ट टू डू ट्रांजैक्शंस अबव अ सर्टन लेवल वो भी हमें एक फील होता है. एटलीस्ट हमारी अपनी रिसर्च नहीं बताया कि वहाँ भी एक थ्रेशोल्ड होता है. नाउ आई कांट से कि वो कितने रुपीज़ का है, इज इट लाइक 5,000 रुपी और 10,000 रुपी, लेकिन एक थ्रेशोल्ड होता है जिसके बाद साइकोलॉजिकली अ पर्सन सेज कि मे बी आई शुड नॉट बी डूइंग इट ऑनलाइन, आई वुड बी बेटर ऑफ राइटिंग अ चेक एंड गिविंग इट टू माई एजेंट. तो ये भी एक हर्डल है पूरी जर्नी के अंदर जो फेस हो सकता है. एक ज़रूरी चीज़ ये भी है कि आप ये देखें कि आपकी जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस मॉडल है, उसका कोर क्या है. एक तो कोर है एंड देन यू हैव अदर सराउंडिंग एस्पेक्ट्स ऑफ इट. अगर कोर डिजिटल है, जैसे अभी बात हुई, अगर एक नई कंपनी आ रही है जिसका कोर ही टेक्नोलॉजी बेस्ड है तो उनकी सारी चीज़ें, पूरी फिलॉसफी विल बी बिल्ट अराउंड इट. EFU लाइफ का कोर जो है वो, गिवन दैट वी आर अ 30-year ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो मेन ब्रेड एंड बटर है वो एजेंसी, सेल्स फोर्स और बैंक इंश्योरेंस है. दैट्स वेयर द बेसिक टॉप लाइन एंड द बॉटम लाइन आती है हमारी. लेकिन डिजिटल की जो सारी चीज़ें हमने की हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, वो इस कोर को सपोर्ट करने के लिए हमने किया है. अपना बैकएंड को स्ट्रॉन्ग किया है ताकि डेटा हमारा इतना स्ट्रक्चर्ड हो जाए कि उससे हम फ़ायदा उठा सकें. फ्रंट एंड को हमने अपनी टीम्स को, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को टूल्स दिए हैं ताकि बेहतर तरीके से पेनिट्रेट कर सकें. लेकिन अगर कोई ये कहे कि EFU लाइफ का कोर जो है वो अगले कुछ सालों में चेंज होके मॉडल चेंज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा. क्योंकि पाकिस्तान की जो रियलिटी है ऑफ लाइफ इंश्योरेंस वो यही है कि दिस इज़ हाउ इंश्योरेंस हैज़ बीन सोल्ड. इट डजंट हैव टू बी सोल्ड दैट वे, बट मेरे ख्याल में वो बिकेगी ऐसे, लेकिन उसको टेक्नोलॉजी की सिग्निफिकेंट सपोर्ट मिल जाएगी. सो इफ़ वी हैव एन एजेंट जो अभी जा रहा है, पेपर फॉर्म भरता है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ मैनुअल प्रोसेस, लेकिन अगर एक एजेंट के पास टैबलेट है, ऑलरेडी ये चीज़ मार्केट में हो रही है और एंड टू एंड पेपरलेस पॉलिसी होल्डर का डेटा कैप्चर हो रहा है, वो रियल टाइम बैक एंड सिस्टम में आ रहा है, वहीं अंडर राइटिंग हो रही है और विद इन अ फ्यू मिनट्स हमारे एजेंट को उसकी टैबलेट के ऊपर एक डिसीजन आ रहा है कि पॉलिसी इशू हो जाएगी. तो ये सपोर्ट मिल रही है टू दैट जो हमारा इंडिविजुअल है जो बेच रहा है. लेकिन आई डोंट सी के अगले कई सालों में ये कोर चेंज होगा. कोर अपनी जगह रहेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी की जो सपोर्ट है वो इसको और एफिशिएंट कर देगी. जावेद ने बिल्कुल सही कहा कि एफिशिएंसीज़ की लैकिंग है हमारे बिजनेस मॉडल के अंदर.
टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हम उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं. And eventually all of this club together will obviously then create more value for the industry as well. तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जब हम बात करते हैं पूरे मॉडल को चेंज करने की, तो उसमें एजेंसी सेल्स फोर्स पाकिस्तान में रहेगी, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर. बैंक एश्योरेंस चलता रहेगा, उसमें अप्स एंड डाउन्स होंगे. बैंकिंग सेक्टर की सपोर्ट कितनी है वो अपनी जगह रहेगी. और एटलीस्ट रिटेल साइड के ऊपर प्रीडोमिनेंटली फॉर द नेक्स्ट मैनी ईयर्स आई सी कि यही मॉडल सपोर्ट करेगा. बट दिस मॉडल विल बिकम मोर एफिशिएंट in terms of how it reaches out to customers. और वहाँ पे Insurtech, FinTech, technology is going to play a significant role. And I think we are focused on this direction at least. So this is, I thought I should. Yeah, no, thank you, Ali. Aftab Sahab, as the largest field force company in Pakistan for the life side, is your take the same as Ali's, or are you looking at a full-on somewhat, revolution? Yeah. I do agree with him somewhat, but I think after 5 years, or around 5 years, the number of agents will be reduced considerably. Like I was telling you, there's a group of friends who are now creating this avatar. They call it Beyond Human, and it's a window of about 6 to 8 months. If they don't do it, somebody else will do it. So that is going to replace the agents, and that is going to be run by AI, and it's going to be answering all the questions of the customers. Of course, the agent would be there in the beginning, yeah, and the number of agents will be reduced considerably. It's going to be a hybrid system, I think, in Pakistan at least. Yeah, but the number of agents will be reduced considerably. Okay. Okay, so now I'll come to Nayar. As someone who's betting on the other side of the table that everything is going to be turning digital, how do you see it playing out? देखिए, एक तो मेरे ख्याल में हमारा जो फोकस होना चाहिए वो कंज्यूमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने पे होना चाहिए. ठीक है, हमें टेक्नोलॉजी को एक कंपल्जन नहीं बनाना एक्चुअली. फॉर एग्जांपल, अगर एक 45 साल का या 50 साल का आदमी है जो कि जैसे कि वो चेक के ज़रिए से इन्वेस्टमेंट करने का आदी है फॉर एग्जांपल, और वो किसी एक पर्सनलाइज फाइनेंशियल एडवाइस चाह रहा है, तो यू कांट फोर्स हिम के जनाब उसको वो एडवाइस ना मिले और वो डिजिटली पूरा सेलेक्ट करे. तो मेरे ख्याल में ज़ाहिर बात है हमारा जो फोकस है वो कंज्यूमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने पर होना चाहिए. एंड टेक्नोलॉजी इज़ वन पार्ट ऑफ दैट एक्चुअली. ग्रेजुअली इस प्रोसेस को के ज़्यादातर कंपोनेंट्स को टेक्नोलॉजी ओवरटेक कर लेगी, बट इट विल टेक टाइम. मेरे ख्याल में आई थिंक कि मैं उनको मेंशन करूँगा. आप सब जानते होंगे अरूप चतुर्वेदी जी को, जो ADB के फाइनेंशियल इंश्योरेंस एक्सपर्ट हैं, उनके आर्टिकल भी काफ़ी इसमें. तो बेसिकली आई थिंक देयर इज अ ग्रेजुअल शिफ्ट है टुवर्ड्स फ्रॉम फिजिकल देन टू डिजिटल एंड देन टू डिजिटल. इसी वाले से हमने जो CCP से हमारा डायलॉग इसमें हुआ एक्चुअली कि डिजिटल इंश्योरेंस का मकसद ये नहीं है कि आप एक्चुअली कस्टमर कंप्लीटली डिजिटल पॉलिसी ले ले बेसिकली और उसको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस इन पर्सन ना मिले बेसिकली. क्योंकि एक कस्टमर ये चाह रहा है बेसिकली कि उसको कोई एडवाइस आगे करे तो करेगा. हाँ, उसकी जो जर्नी है, उसकी जो ऑनबोर्डिंग है वो डिजिटल एट दिस पॉइंट इन टाइम हो सकती है, जो अभी फिजिकल होती है. अगर उसको क्लेम लेना है इसको, तो उसका क्लेम का प्रोसेस का डिजिटल हो सकता है बेसिकली. उसका जो सारी कस्टमर की कम्युनिकेशन है वो डिजिटल होनी चाहिए. लेकिन यू कांट टेक अवे अ कंज्यूमर चॉइस फ्रॉम हिम बेसिकली. If a person wants a physical advice, then he should have that advice basically. So I see this process as a first from physical to digital and then digital. So just from my understanding, based on what you just said, the way Salam is planning its digital life company is that there will be sort of a hybrid model where there will be someone there to talk to you if you want to talk to someone. Yeah, actually, luckily I was at CCP when we were working on the digital insurance. So the concept was that basically digital insurance means that the customer buying experience will be digital actually, and financial advice will gradually take time. कि आप एक AI chatbot के जरिए से financial advice ले रहे हैं, लेकिन वो जो इस तरह के लोग, जो इस तरह के consumers भी gradually बढ़ेंगे basically, जब हमारी definitely जो हमारे अभी youngers आगे जाएंगे तो ये तो उसी तरह की advice लेंगे. लेकिन अभी right now ये नहीं हो सकता. So we need to recognize that reality. Okay.
Fair enough. Thank you. So, Sophia, last question for yourself. You've heard what all the industry players want, and a lot of the things they want is from the SECP, or at least in the shape of regulation or support. How do you see this digitalization going? One aspect was legal forums and their lack of understanding. Another aspect was the lack of awareness on a social, institutional level. As Aftab Saab said, a lack of training and grooming of resources on the ground. Where does the SECP fall into this whole, I mean, obviously you're central to the whole arrangement, but how do you see things going forward, and what support will be coming from your side on this? SSCP has a very regulatory enabling mindset, and like जो हमारी current approach है towards insurance sector growth and development, that is very technology centric. जैसे पहले भी डिस्कस हुआ है कि जो हमारा 5-year strategic plan है, that is focused on this thing कि हम technology को incorporate करें for customer centric approach, for helping the insurance companies, for helping the policy holders. एंड जो यहाँ पे इश्यूज डिस्कस हुए हैं, जैसे कि अली साहब ने भी पहले कहा है कि जो हमारा 5-year स्ट्रेटजिक प्लान है उसमें ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट की गई हैं. हमारी कंटिन्यूस engagement रही है. We are in off-site with the insurance companies, and after that a round-table conference. And we heard all these problems, and we tried कि हम इन सबको incorporate करें और इनके लिए एक solution जो है वो figure out करें. So once it's published and once it's implemented, so majorly the problems discussed here will be sorted out. And along with that, SACP has been doing some major steps in this regard कि हम technology को enable करने के लिए, insurance companies को enable करने के लिए, उनको help out करने के लिए we have been taking some steps. Digital only insurance की जहाँ तक बात है, तो SACP introduced the regulatory framework in 2021. Which allows digital only and dedicated micro insurance only का आप license ले सकते हैं. With the prudential criteria for those licensing is relatively easier as compared to the usual license which you get for life insurance companies or non-life insurance companies. Similarly, जो regulatory sandbox है SECP का, that is one platform where companies could have their innovative ideas being tested in a regulatory setup. और जैसे हमने लिथुआनिया की एग्जांपल डिस्कस की थी, सर आमिर ने एक्सप्लेन किया था कि हाउ देयर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स हेल्प द नंबर ऑफ द फिनटेक कंपनीज गो फ्रॉम 45 to 232. So the same can happen for Pakistan as well. You also have that platform. We have been working on it since some time. 4 cohorts already आ चुके हैं. हर cohort में एक insurance product at least has been incorporated. The more can be done as well. Similarly, right now अगर यहाँ पे जैसे discussion ये चीज़ हो रही थी कि हमारी requirements बहुत ज़्यादा हैं. For one thing I want to mention कि SACP law ना मतलब insurance ordinance अगर नहीं भी allow करता तो later on the regulations and the rules we have made, none of the insurance products which are available right now are such sort of products which cannot be marketed or which cannot be distributed via digital platform. I understand that जो unit link products हैं, जो investment products हैं, उनमें requirements ज़्यादा होती हैं, but nonetheless they can be distributed digitally. And we are trying to work with the industry to make those requirements clear so that we could facilitate it. Right now we have shared a circular, I think last week, जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं उन सबके साथ वो शेयर किया गया होगा, जिसमें we are trying to rationalize the requirements further. कि अगर आपकी ऑर्डिनरी लाइफ की प्रोडक्ट है या आपकी एक्सीडेंट एंड हेल्थ की प्रोडक्ट है जिसका टेन्योर 1 year है और ऑलरेडी ऐसी कोई प्रोडक्ट आपकी एग्जिस्ट करती है, तो आपको हमसे अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन जस्ट हैव एन इंटीमेशन विद इन 10 days ऑफ द प्रोडक्ट लॉन्च. सो वी आर मेकिंग द चेंजेस ऑन आवर एंड. जब भी हमारे पास कोई प्रपोजल आता है, कोई भी इंगेजमेंट इंडस्ट्री के से स्टार्ट की जाती है, वी आर ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट ऑल दोज थिंग्स. वी आर ट्राइंग टू फैसिलिटेट द इंश्योरेंस सेक्टर, बट एट द वेरी टाइम वी हैव दिस एक्सपेक्टेशन कि जो टेक्नोलॉजी का यूजेज है, जो टेक्नोलॉजी की यूटिलिटी है, दैट विल बी इम्प्रूव्ड एंड एट द एंड द पॉलिसी होल्डर्स विल बी फैसिलिटेटेड. Okay, thank you very much. I think I'm being told that I can't ask anything more, so I'll hand over to the MC. Thank you. Yes, absolutely. We'd like to have a Q&A session now at the end of this very insightful discussion. Thank you, esteemed panelists. And if there are any question answers, we have ushers around the hall. If you have questions, please raise your hands.
So we can hand over the mic to you. I believe there's a gentleman there at the corner. आप डायरेक्ट कर दीजिएगा कि किन की तरफ सवाल है, प्लीज. My name is Mohammad Afan. I'm a journalist. पहले तो मोहम्मद अली अहमद को मुबारकबाद. लास्ट टाइम हम मिले थे, आप डेप्यूटी थे, आज फुल टाइम CEO है. बार बार जिक्र कर रहा है कि अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस की, मगर दिस पैनल रिप्रेजेंट्स बिलियंस इफ नॉट ट्रिलियंस अंडर मैनेजमेंट, एंड वी हैवंट सीन अ प्लान फ्रॉम देम कि फाइनेंशियल एजुकेशन पे क्या बात हो रही है, कि what the team or what the panel and what their companies are working on in terms of financial education, कि customers को educate करने का क्या तरीका होगा. It's a panel could take that. Okay. Who would like to take this answer, please? मैंने अभी जिक्र किया था कि वर्क फोर्स को ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट इस पर काम कर रहा है, रिवाइव हो गया है, और हम लोग हमारे इन हाउस रेगुलर हर ऑलमोस्ट महीने कोई ना कोई कोर्स चल रहा होता है पूरे पाकिस्तान में, और हम श्योर सब लोग ये कर रहे होंगे. तो ये फाइनेंशियल एजुकेशन और वैसी ट्रेनिंग की ये चीज़ें चल रही हैं, हो रही हैं ऑन रेगुलर बेसिस. हमारे यहाँ तो हो रही हैं, आई एम श्योर बाकी बताएंगे. I want to add from SCCP's perspective, we have an education investor department which particularly works for this thing कि जो एक financial literacy है या जो particular sectors हैं उनके बारे में awareness raise करने के लिए. So we keep on having sessions there with universities, with educational institutions, with other stakeholders, and along with that, अगर particularly insurance की हम बात करें तो हमारा right now एक project undergoing है which is Insurance Innovation Fund, where we are creating a full-fledged campaign involving all this, like we are trying to reach out to all the stakeholders while like centering it on technology and digitalization कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को reach out कर सकें. यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगी कि हमारी जो पॉपुलेशन है दैट इज़ लाइक जो 65% है दैट इज़ अंडर द एज ऑफ 35. तो उनके लिए डिजिटल मीडियम्स या इवन के जो SMS मार्केटिंग है या रिकॉर्डेड वॉइस मैसेजेस हैं हमारे जैसे राइट नाउ ब्रेस्ट अवेयरनेस के लिए चल रहे हैं, ठीक. तो दीज सॉर्ट ऑफ मैसेजेस, दीज सॉर्ट ऑफ कैंपेन्स आर लाइक एन इफेक्टिव वे, एंड वी आर करंटली वर्किंग ऑन दैट फ्रॉम अ रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव. वी आर ट्राइंग टू डू the maximum we can do to raise awareness. I'd just like to add something here. Although technically I'm not a panelist, but we're all working on this, right? Obviously, it's in our self-interest to do that. The market grows, we all benefit. But we're all private companies, so we have a shareholder who's, got his own requirements up there or her own requirements up there, and so we need to be cognizant of that. What really needs to be done in our society, and I'm sure most of you have read that book, Rich Dad, Poor Dad. Okay, so that was written not by a Pakistani, that was written by an American. And he was pointing out how the average American does not understand finance. Now, move that, 50 years back and you're exactly at Pakistan now. And so the average Padha Likha Pakistani does not understand finance. And move that further back with a product like insurance, which everybody doesn't like anyway. I mean, as I keep telling my colleagues and my friends, Pakistani marte nahi hai. Life insurance बेचना आसान नहीं है, and there's a reason for that. Because किसी को मौत के बारे में बात करेंगे तो वो आपको थप्पड़ लगाने के लिए तैयार खड़े हो जाएंगे. बल्कि आप किसी से कहे कि आपका वसीयतनामा तैयार है, हालांकि that's such a fundamental thing of our faith, yet they will slap you कि क्या मुझे मारने के चक्कर में हो. तो this is the mindset that we have to work with. Now that's my consumer, so I need to adapt myself to that. What we need to realize is that we need to make, and the State Bank is trying, and the SCCP, as Sophia rightly mentioned, they're doing what they can, but we as a society have an obligation to our fellow citizens and our own families to start teaching about financial inclusion. How many of you sit around the dinner table and talk about your products with your wife and kids? Hardly anybody does it. In fact, I'm sure if I pick up most of you and ask you, speak to your kids and ask them, do you know what Baba sells? They'll probably say no. Because nobody has a clue. And our education system, let's not even get into that. But that's where the change is needed. Right now, most of our budgets are focused at those people who are already either converted or beyond conversion. I need to get down to that 5, 6, 7, 8-year-old child to teach him about,
As I remember, my mother keeps, even today, she tells me stories about Habib Bank used to come to her school in the 1950s and talk about saving and, you know, little checkbooks and boxes to collect money and how it's important for society. How many of us do that? We don't. We need to reach out to the public. We need to reach out to the kids. And we live in a democracy. So we need to reach out to our, you know, our representatives in the government and tell them that, look, the education system needs to account for this. Because otherwise, this discussion we're having today, 10 years hence, we will be having the same discussion all over again. So unless we formally, you're a journalist, you can take it up. We all have kids, we all have friends. This is a very resourceful group of people right here. We're educated, we have money in our pockets, we're fed, we can do a lot. So we need to take that ownership. Don't tell the regulator that, look, you need to do this. Yes, we'll have to do it together, but we need to take ownership ourselves as well. Thank you. Thank you so much for that answer, and I think that made a lot of sense as well. We have a gentleman at the back, please. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इमरान है. आई एम अ बैंकर बाय प्रोफेशन. पेमेंट्स की बात हो रही थी, IBFTs एंड ऑल. रास्त एक पाकिस्तान का इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है. मैं चाहूँगा कि इंश्योरेंस कंपनीज एक और एवेन्यू भी चेक करें. जब ये कस्टमर ऑनबोर्डिंग की जो बात हो रही थी, तो पेमेंट्स की जो ऑप्शन हो उसके अंदर रास्त इज़ देयर. दूसरा, एक पैनल में एक डिस्कशन हुआ था परसेप्शन का. आई थिंक परसेप्शन, उसके अलावा जो हमारा एक जब इंश्योरेंस लेनी होती है, हमें जो मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं, मार्केटिंग होती क्या है बेसिकली? मार्केटिंग ये होती है, मुझे ये पता हो कि मैं ये प्रोडक्ट क्यों ले रहा हूँ. तो जब आप डिजिटल ऑनबोर्डिंग हो, तो एक तो मेरी रिक्वेस्ट ये, इट्स ट्रीटेड एज अ फीडबैक, कि जब मैं उसको देख रहा हूँ तो मुझे एक इतनी वो फ्लेक्सिबिलिटी हो ऐप के अंदर कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑनबोर्डिंग आई रियलाइज कि जी मुझे एक्चुअली इंश्योरेंस नहीं चाहिए, आई नीड अ सेविंग्स प्लान, जैसे नदीम हुसैन साहब बात कर रहे थे. तो एक तो ये विच ऑल्सो एड्रेसेस द ग्रूमिंग फैक्टर की, जो ट्रेनिंग और ग्रूमिंग की बात हो रही थी, जो एजेंट्स होते हैं, तो ये अगर कहीं एम्बेड हो जाए, दैट इज़ वन पॉइंट. उसके अलावा अवेयरनेस, यस, अदरवाइज भी जो आपकी डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज हों, जैसे नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम होता है, तो ये एक मैं चाह रहा हूँ कि ये इंश्योरेंस के बारे में ये परसेप्शन ना हो. मैं कल को चाहूँगा कि मेरी मिसेस खुद से इंश्योरेंस लें, या मेरे फैमिली मेम्बर, जैसे अभी बात हो रही थी, इंश्योरेंस लें, कि एजुकेट भी हों और हम कंफर्टेबल भी हों, और मुझे ये भी पता लग जाए कि हाँ जी, मुझे इन द मिडल ऑफ दैट आई रियलाइज कि जी मुझे म्यूचुअल फंड्स इंश्योरेंस. तो एक तो ये फैक्टर है. दूसरा, डैशबोर्ड, जो कंप्लेंट्स की बात हो रही थी, स्टेट बैंक ने एक बनाया हुआ है सुनवाई ऐप. वो रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ की भी कंप्लेंट्स को एड्रेस करता है, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी की भी कंप्लेंट्स को एड्रेस करता है. तो एक ऐसी ऐप आई बिलीव या तो होगी, मेरी नॉलेज में नहीं है, या अगर नहीं है तो कि जिसमें रियल टाइम कंप्लेंट्स इंश्योरेंस कंपनीज को भी जा रही हों और SECP भी उसको रियल टाइम में मॉनिटर कर रहा हो. थैंक यू. Can we just have a precise answer? Maybe one or two panelists, because we're short on time. We have another 5 minutes to go, please. Yes. Sure. Some feedback and stuff, yes. I think it was probably just feedback. Yes. I think useful feedback. We will obviously isko hum dekh lenge. Yeah, thank you. Right. If you have any more questions, Ji, please. Azim sir, first a comment. I think people don't fear death. They fear the aftermath of death or dying with pain. That's why Ay Khuda Mere Abbu Salamat Rahe still resonates with people, and similar ads, continue to come again and again. So that was a comment. The question is from you and from Nayyar and probably Ali as well. In the banking sector, we see a huge kind of a mini gold rush towards Islamic banking. It has brought in a lot of non-bank or previously non-bank customers on board. Perhaps I'm not aware if the same is happening in Islamic insurance or Takaful sector. If it is, let us know. If not, why not? There is some problem. Sorry, just for information, 40% of our new sales is Takaful. So it is happening.
it has helped the industry in overcoming this, जो इन्होंने कहा ना शुरू में कि हराम है या इंटरेस्ट बेस्ड है और ये सब कुछ है, तो वो तो मौजूद है. मेरा अपना व्यू है कि बैंकिंग में देर आर अदर रीजंस एज वेल फॉर इस्लामिक बैंकिंग इतनी तेज़ी से जो ग्रो कर रही है. इट्स नॉट जस्ट कस्टमर्स, ऑल्सो बैंक्स फोकसिंग बिकॉज इट्स मोर प्रॉफिटेबल फॉर बैंक्स. But in case of Jubilee Life, 40% new business is through Takaful products, so which is a very good portion. Right, thank you so much for your questions, and thank you panelists for this discussion. Before we head on to our tea break, I'd like to request the panel if we can have a group photo as well, please. Thank you, and I think let's head on to the tea break, the coffee break, much needed at this hour. And a round of applause for this panel discussion, please. Yes, thank you. We'll see you all in 30 minutes. If everybody could keep a check on their time, 30 minutes, please.
Check. If I may request everybody to be seated, please, so we may begin the rest of the sessions for the day. If mostly everybody is back, then we'd like to begin. Yes? Welcome back, everybody, from the tea break. I hope the tea and coffee has highlighted our moods for the rest of the day as well. And we'll continue with the rest of our panel discussions. The last discussion that ended, well, some challenges and goals for the next few years that were highlighted. Mostly, we've been all targeting towards customer awareness. And I think the recipe for the next 10 million happy customers consists mainly of a very aware customer, and only then a happy customer will be possible. Let's move on to the next panel discussion, which is going to revolve around the non-life Insurtech revolution, a world of digital possibilities for every Pakistani. The moderator for the next session is going to be Mr. Asim Alam. He's an experience of working in conventional insurance in around 3 continents for over 15 years in Pakistan, the UK, and African markets. He's the ex-insurance director of Easy Paisa and now the serial entrepreneur, founder, and CEO of WebDog. Mr. Asim Alam, if you can come please to the stage. Thank you. We'll be joined by a panelist, Mr. Mohammad Abu Turab Baloch. He's the product head of insurance and investments at Jazz Cash. With a background over 8 years of experience, he brings a wealth of knowledge in designing and distributing financial well-being products for the masses, emphasizing financial inclusion.
Our next panelist is going to be Mr. Ghashrib Shaukat. He's a Karachi-based agricultural researcher whose work focuses on enabling social reform and knowledge production through the integration of digital solutions within the agri-tech sphere in Pakistan. He's the founder of Zarai Mandi Private Limited, an agri-tech price discovery WhatsApp chatbot startup that has been incubated at NIC Faisalabad. Ye chai peene ki wajah se, I think we're all giving the round of applause as well. Thank you. And the next panelist is going to be Dr. Sara Saeed Khurram. She has over 8 years of experience in the field of digital healthcare as the co-founder and chief executive officer, CEO, Sehat Kahani. Welcome. So I leave this group, of course. Oh yes, Mr. Kamran Hanif. He's the Executive Director, Salam Takaful. And it's a very interesting profile. It says, if anybody embodies the can-do attitude of Salam Takaful, it is Mr. Kamran Hanif. He brings whiteboard plans to life with lightning efficiency. As head of sales, he's directly responsible for attracting and sustaining new clients. His understanding of the industry and its practices have resulted in him being the go-to person for everyone. So welcome to the next round of panel discussion, and I'll leave it in your able care. Assalamu alaikum, everyone. First of all, this is the first time I'm actually moderating something, so excuse me for that. I normally like to sit down under the seat, but that's fine. Thank you very much. Most of them I know it. Sarah, this is the first time I've actually met you. I definitely know Sehat Kahani. I know the Kamran and Rashid Saab. Sorry, I don't know your name. My name is Gosharib. Rashid Saab, sorry. This is the first time I'm meeting you, so I know Tarab. So my name is Asim, and I'm the founder and CEO of WebDoc. Because we're talking about non-life insurance here, obviously life insurance, they've just told us all the challenges they're actually facing. So just starting from Kamran Saab, just a very quick question. In the last 10 years, non-life insurance, do you think they've actually changed their product development side? Because as far as I know, most of the products actually remain same for the last 10, 15 years. So please correct me if I'm wrong. You are right. I think जो last 10 to 15 years insurance product, बल्कि 10 साल की बात ना करें, पहले से ही बात करें, तो insurance हमेशा से traditional रही है. तो if you see the product, almost same product आपको शुरू से मिल रहे होंगे. You need a agent जो कि जाके door to door sale कर रहा होता है. Fortunately, last 5 to 7 year digitalization की वजह से बहुत सारे ऐसे products आए हुए हैं जो end user के लिए काफी effective है. Like if you are talking about the corporate customer, fire, property, insurance, तो उसमें SHO innovation की possibility भी नहीं होती. तो उसके हवाले से तो SH कुछ insurance में नहीं हुआ. But end user consumer की अगर हम बात करें, तो आपको बहुत सारे ऐसे product मिलेंगे जो कि digitalization के through चल रहे हैं. Like motor insurance के हवाले से you will find out lot of product जो कि end user को facilitate कर रहा होता है digitalization पे. Great, thank you. Sir, do you want to add something on this? Bismillah Rahman Rahim. First of all, thank you PMFN for arranging this wonderful event. I think it's a very interesting question for me because being on the other side of the table where I have to work on the product development bit, in the previous 4-5 years, I guess, जो product के अंदर excitement built हुई है, वो general insurance के अंदर built हुई है, ठीक है? So when we talk about excitement वाले elements, so we've seen pay-as-you-drive wala product that is basically offered by Salam Takaful and other insurance companies as well, where you actually reward drivers or you penalize them on the basis of their driving pattern, right? So वहाँ पे excitement build हो गई है. अब customer are more risk, let's say, averse, या they're more careful in a way कि यार ठीक है, अगर मेरी गाड़ी इतनी महंगी है और मुझे अगर इंश्योरेंस का प्रीमियम देना है तो हो सकता है अगली दफ़ा मुझे penalize करें. Unfortunately, अभी मैं कल ही देख रहा था, so IAP की वेबसाइट के ऊपर there are almost 29 insurance companies that are registered. Unfortunately, इसीलिए कि अगर वो एक इंश्योरेंस कंपनी से निकलता है वो तो दूसरी कंपनी के पास चला जाता है, फिर वो तीसरी कंपनी के पास जा जाता है. और मेरे ख्याल में इतना टाइम स्पैन उसके पास होता है कि अगर वो 5 साल 10 साल बाद घूम के पुरानी इंश्योरेंस कंपनी के पास भी आए, सो वो रेट के ऊपर इतना है कि वो फिर उनको ऑफर कर देते हैं. So the time itself is very interesting in a way कि there are interesting products coming up. Drive Pro, let's say, is one of the product. Pay as you go is one of the product. Then we have parametric crop insurance.
जो वैसे ही इतना मुश्किल प्रोडक्ट था एक आम फार्मर को पुश करने के लिए, now that parametric has enabled the distributor, the insurance company and the farmer himself कि इतनी ट्रांसपेरेंसी आ गई है प्रोडक्ट के अंदर कि वहाँ पे वो खुद ही देख लेता है कि यार हाँ ठीक है मुझे कब क्लेम मिलना है कब क्लेम नहीं मिलना है. So yeah, that's the thing. I think it's on the right track, and there's still more exciting times ahead. Sir, if you want to put some light on this. For sure. I think insurance itself is based on the idea of protection, right? So in Pakistan, the problem is that obviously we are very risk centric. So whatever might happen in our lives, we don't necessarily understand what protection might mean. So when you're living in a developed country, it's much easier, and sort of the systems are built out in a way where it's embedded within whatever you need to do. So if I'm, for example, buying a car, I can't drive it without insurance. Whereas in Pakistan, यहाँ जो है मतलब आप गाड़ी smuggle करके ला के भी चला सकते हैं, मसला तो नहीं होता. So I guess a lot of the issues that stem in our insurance sector is from the fact that A, we don't really understand what's going on. We have no knowledge about like what the protection offers, and B, it's not really transmitted in the proper manner. So for example, we were talking about financial literacy in the previous session, but how does that translate to? I think one of the panelists, or I think the moderator mentioned that schools mein aake 50s or 60s mein banks aake baat karte the. But myself, speaking as a Pakistani under the age of 30, I never heard about insurance in Pakistan. I never knew that this was a sector where anything was going on. Yeah, I heard about banks. I saw a lot of their ads on TV, but what does the bank's insurance offer? Like, no one really knows, right? So if you're unaware of something and what it's offering and what the coverage will allow you to get, how are you supposed to go ahead and purchase that product unless you're directly involved in that industry or like a sideline, like, you know, connected industry? So it just becomes really difficult. So for myself, even when coming onto this panel, I had to like completely educate myself on like how insurance works in this country, who are the main players, what's going on, et cetera, before I could say, okay, I'm comfortable to go talk on a panels, right? So for me being a panelist, and I'm quite educated, like how do I not know about this, and how can you expect the average person who might not have the same level of education as I do to essentially know what's going on in this space, right? So rightly said, I think. And then my next question to you, Sarah, basically, that how do we actually educate people, you know, for the non-insurance? And he's right, nobody actually know what is, well, many people don't even know what's the difference between the life and non-life insurance. Then non-life insurance actually covers everything. But then we have merely 10 products actually, you know, in the market where we were working. Just take away all the Insurtech companies coming up, all the startups, they're trying to introduce new products. But conventionally speaking, all these companies are actually working on these 10 products. So in your business, which is the health business, how do you think this insurance is going to leverage your business then? So I actually, first of all, Assalamu alaikum everyone. It's great to be here and thank you for the invitation. I actually had a thought in my mind on your previous question when you said that what has changed in insurance. And I just want to touch upon something that was a very interesting phenomena that happened in health insurance. And because we've been a part of that journey, I think we can talk about that more. And I think you've been a part of that journey as well. That as COVID hit the country, I think a lot of employers were looking at opportunities to insure their employees and families for primary health care. Because when you talk about health insurance, in Pakistan, and usually all over the world, but particularly in Pakistan, health insurance is primarily tertiary care insurance, which is when you do get to the point of being admitted in a hospital, your insurance covers it. But in a population where 60% of our population is under 30, particularly in the corporate sector, when they look for health coverage, they just don't look at health coverage from a tertiary care perspective. They do look at it from a primary care as well as a preventative care perspective. I think in the youth of now, and particularly I know in the corporate sector, because here we have people who are the most educated, the biggest talent that we have in the country, now they're looking for opportunities on how they can improve not only their life, but also their quality of life. So one thing that Sehat Kahani started in early COVID was providing online telemedicine coverage to employees and their families. And we started by giving it to employers, and it was a product given by employers to their employees and families. And as a lot of corporates joined us,
Insurance companies saw benefit and also, and we also reached out to them and said that this product can be extremely helpful in giving a value add to your corporates, as well as over time push your employees' behaviors from tertiary care to preventative care, which has a direct impact on the premiums as well as the claim ratios. And that's what happens all over the world. There was actually a study done in Africa 2 years ago, and Jubilee Life was a part of that study done by UNDP, that when you introduce primary care, particularly through online healthcare, it reduces your claim ratios down in 2 years to 45%. So I think, just to answer your question, I truly believe that the advent of online healthcare in primary healthcare is a new solution that everyone should talk about and be interested about. And I think these products, how we can push them down, to be very honest, any new product or any new intervention, I think it's very unrealistic and ambitious to think that it was going to go bottom up. अगर आप सोचेंगे कि खुद ब खुद आवाम के अंदर ये awareness फैल जाएगी, ऐसा नहीं होगा. It has to be pushed down, and it will always start from the diaspora of people that are already insured for something. So, for example, in our case, people who are already insured for insurance, when they come to their laptops in the morning and they see Sehat Kahani packages on their screen, on their desktop, that would aware them that, acha, this is available. I'll give you a very personal example. My own mom, who works at a bank that we provide this healthcare coverage for 4 years, he never knew what I do. The first day he came to his office and he saw Sehat Kahani's product on his desktop, that was the first day he asked me what I do at Sehat Kahani and what Sehat Kahani does. So awareness at this level, when the ecosystem is very nascent, it has to be top down. It has to be reiterated in every messaging that you're giving, and I think that's what's going to create that first initial early adopters that's then going to take the message forward. So that's great. Thank you very much. So I just want to ask another question to you now. So once you start providing this corporate health insurance with your product, so are these the companies who are already working with the insurance companies, or you just these are the new companies you just brought up for nahi leke aaye, For example, I know you were working with Jazz, so they were already on insurance, right? Yes. So जब आपने उन्हें insurance दी, तो what difference? I mean, you were providing that OPD insurance. That's what I'm asking. Primary care insurance. So what we do is we couple our online telemedicine app with the insurance company, and we have majority of our partners sitting here. So for example, we work with Jubilee Life, we work with Adamji Life, we work with Salam Takaful, amongst a few. And all their corporate customers and their families, when they get insurance through these insurance companies, they also get Sehat Kahani solution. Right. What it does is that every employee and their family gets access to our application. They can download it, they can put their family details and get unlimited access to online doctors throughout the year, which includes GP as well as specialists. So how it provides a benefit to the employees as well as the insurance company is that when an employer is at his job and his family is at home, he doesn't have to take an off and go back to home and take them to the hospital. Particularly in times of today when fuel is so expensive, a lot of people don't go to the hospital thinking ke, acha kal chale jayenge, acha kharcha kitna hoga. I know that when people go home and their wives tell them that, hame ye problem hai, they start thinking, acha ab hum hospital jayenge to kharcha kitna hoga kal ke din mein. So to avoid all that, I think it's an extremely easy solution to use, that wherever you are, your family is, you can consult an online doctor, you can consult specialists, you can consult mental wellness experts, and now we're also building claim and online pharmacy to it. So you can also submit your claim online, and you can also do your pharmacy online as well. Another very important aspect of this is that I just want to touch upon is that you have access to good data that you can use for preventative healthcare management. So for example, an insurance company or the employer can know trends, for example, which of their corporates in which geography, gender-wise, disease-wise, are facing what issues. And they can then do preventative healthcare practices, and that's worked for us for a lot of companies that we work for, that we've diagnosed chronic diabetes issues, faulty water lines, cardiac issues, and they've been able to work through health education then to make sure that their employees are given new education on the issues that are particularly affecting them. So I think the data that we're generating over time is also very powerful. The last thing that I will add is, a lot of people say, maybe this is something that is a technology that we should keep on our books, but this is not effective. Our data tells us that in the last 1 year, one person that has come on our solution as an insurance customer has taken at least 8 consultations a year for themselves and their families. So this showed that once people come and they see the easiness of the product, there is a stickiness to it, which is so important for early stage interventions. So perfect. I think absolutely right. So I've got a question for you, Tarab, now.
So while she's working with the companies who are actually already providing the insurance, and then she's actually leveraging with the telemedicine services, what do you think going out to the rural population, because they're not insured? How is your company or you guys working with many of the companies I know, that how are you guys actually providing services to the rural population, because you've got big numbers to cover? So starting off, if you compare the conventional health insurance product with what we offer, so basically, जो conventional insurance product है वो करता ये है कि आपको एक कार्ड दे देता है, and they give you a list of panel hospitals कि जी आप फलाना जगह जाके जो है अपना इलाज करा सकते हैं, right? But when it comes to Jazz Cash, and considering that we have rural market, good rural market, वहाँ पे panel hospitals नहीं होते हैं, right? So उनको insurance बेचनी है, नहीं बेचनी है is a question. So अगर बेचनी है तो कैसे देनी है उनको? So उस केस के अंदर we've got multiple reimbursement model health insurance products, which says कि ठीक है आप अपना इलाज करा लें, and we pay you for the sort of expense that you've made. In addition to those product fundamentals, we've also got virtual consultation wala product bundled into it as a value-added services. So we're recently working with WebDoc के साथ ही हम जो काम कर रहे हैं, we're actively working on the awareness campaign that the health insurance product is not only there to cover your health expenses, we're there to help you in a way कि आप अपनी पूरी family को, होता तो एक आधा individual है insure health के ambit में, but again उसकी पूरी family takes advantage of that one particular facility which is virtual clinic. And this virtual clinic is ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो first aid की हद तक काम कर रहा होता है, so we've got specialists on board. So अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई specific एक problem आ जाता है, let's say kidney या heart related, so वो वहाँ उधर जाके भी consultation भी ले सकते हैं and second opinion भी ले सकते हैं. So it's an ecosystem that we've built. It's not just that we're pushing insurance product to the customer, we're also working on the financial well-being and health well-being elements. These are two fundamentals we're working on. Jisme we're covering the financial costs, then again we're working on the other aspects as well, which is virtual clinic. So absolutely great. Kamran bhai, do you want to say something on this? Then I'll come back to the agri part of yours, what we discussed. I'm talking about the agri, as Torab mentioned, कि end user के लिए जो products available हैं right now, farmer ऐसे हैं जिनके लिए unfortunately पाकिस्तान में insurance के कोई खास product available नहीं है. Normally they are getting lending from the banks, और वहाँ पे एक certain level तक उनको insurance की coverage मिलती है. So we have come up the product like parametric digital product है, जिसमें farmer can get the insurance online onboarding. It will be a very easy onboarding process, और they don't need to wait. अगर कोई claim आता है तो calamity declare का wait नहीं हो रहा होता. तो once the certain parameter are met, तो उनके claim automatically settle down हो जाते हैं. And not only this, उसमें खुद आपने insurance की तो coverage दे दी, but insurance में से 100 में से 30-40 लोगों की claim आते हैं. तो what about the others? तो to penetrate or to increase awareness about the insurance, we have to provide them value-added features like tele health के हवाले से हमने बात की. This is one of the area जिसमें लोगों को insurance के हवाले से पता चल रहा होता है and value-added features मिल रहे होते हैं. Similarly, we are providing crop advisory service to the farmers, and will be online product, online services available. So it's also give us the chance कि हम उसको penetrate कर सकें और awareness create कर सकें. I'd just like to add some essential context over here. So when you're talking about rural areas, what you need to understand is you're competing with a plethora of forces who are offering coverage, which include, for example, artis, which are often demonized in these sort of circles. But all I want to say is that, an arti is offering you something an insurance company or bank cannot, which is a buying price and a selling price. He is the market maker. You're telling me in an undocumented, completely, without any documentation at all, you're going to sell insurance to people जिनके पास ना बैंक अकाउंट है, ना वो टैक्स देते हैं, ना उनकी किसी तरह की रजिस्ट्री है, and आप उनको प्रोडक्ट्स ऐसे पुश कर रहे हो जहाँ उनको तो लग रहा है कि आप उनसे आप उनको चूना लगाने की कोशिश कर रहे हो असूलन. तो इस तरह की सिचुएशन में जब आप हो, वो कह रहा है सर ये मेरे पैसे चोरी करने आए हो, तो वो जो शक या डाउट का एलिमेंट होता है, आप उसको कैसे निगेट कर सकते हो? आप मुझे कह रहे हो कि जो है ना यहाँ पर इस मुल्क में 130 मिलियन यूज़र्स हैं, सही है, इंटरनेट के, उसमें से 85 मिलियन आप कोट करते हो कि व्हाट्सएप यूज़र्स हैं. But tell me how many of those people have actual access to the internet where they can go on Safari or Google Chrome and search something? That number is probably 15 to 20 million के बीच में.
So their access to the internet is defined by WhatsApp, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, and Twitter. That's it. They do not have the ability to go on Play Store or App Store to download an application that would then allow them to avail all these services. So you got to think outside the box here, because those people are not even willing to get internet that would allow them to download apps, right? So their internet or their online experience is completely limited. So you have to play within that framework. So for example, at our company, we've launched a B2C startup named Zarai Mandi, right? We realized app बनाने का कोई फायदा नहीं है. मैं इतने पैसे खर्च करूँ एक ऐप बनाने पे जो कोई इस्तेमाल भी ना करे. तो what we did is we came up with a WhatsApp solution. We created WhatsApp communities and we created a WhatsApp chatbot. Now that number of 80 million, now I can very well touch that because the people know how to use WhatsApp. I don't have to teach them how to use it. And then it's also in their phone package for them to make sense of it, right? Then we've seen that we use TikTok for performance marketing. In 4 months, we have almost about 8,000 followers with over 100,000 likes. If you're going to push your product, use a medium that people actually use. Don't go out and build something that is not going to be used by anyone और आपने लाखों करोड़ों रुपए उस पर खर्च कर दिए और zero or close to zero adoption है. All I'm trying to say is that in the rural market, you need to understand the mindset before going out and building products that no one's going to use. So just be very, very, very mindful of that, because there's hundreds of forces out there, informal forces, who will beat you to that. Because the Arti, for example, how are you going to compete with them? A, bradri system. B, वो जब उनके खानदान में कोई मसला आ रहा है, वो उनकी coverage कर रहा है. Without, मतलब maybe the premium is 5 times the amount the bank or the insurance company is offering, but उनके ताल्लुकात हैं. जब वो ताल्लुकात की बात हो जाती है ना, तो फिर आपस में nothing can essentially disturb that. So essentially what needs to be done for insurance companies or banks or people involved in the fintech center is to understand the mindset that you're dealing with and the type of access that people have. How do they access the internet? What are they seeing? What are they not seeing? So I think this is very, very essential context for understanding how you can say have your next 10 million customers, right? That was some of the tagline of this conference. But to understand those 10 million customers, you got to understand who you're dealing with. हम तो शहर में बैठे हुए हैं, हम अंग्रेजी बोलते हैं, but जो गांव में बैठा हुआ है ना, उसको मतलब दूर दूर तक जो आप बातें कर रहे हो सर के ऊपर से जानी कोई अंदाजा नहीं है. मतलब it's not even close. It's like what we're saying over here is like completely alien to them. And then you go to them with like a 50-page document completely written in English. They're like, what is this? So the overwhelming amount of like fear, pent-up anxiety, it's just way too much. So I just wanted to add that essential context within the agriculture sphere, because this is something I've faced in my own personal capacity. So I'll come back to you. I think Sarah wants to say something. So I will give a counter. First, I agree that absolutely there is a, the rural population is severely at a disadvantage because they don't have access to smartphones, they don't have access to internet. Since I'm the only woman in the panel and I see very less women in the room also, I'll take this space to say that even if households have smartphone, women's access to those smartphones is incredibly limited in those families. So they never reach to a point that they can access services. छोटा सा counter मैं ये दूंगी कि one thing that I really feel as a younger company working in this space is the Insurtech space or the insurance space generally has so much value because of the amount of customers that they touch, whether it's in micro health insurance, in agri-tech, in health-tech or other life products. There's a severe dearth of collaboration between the different sectors together. And particularly when it comes between a traditional giant like an insurance company and a younger company like ours. The reason why Sehat Kahani was able to provide these services to almost 750 corporates today is because 3 or 4 insurance companies took the bet on us. Many of them are here today. For example, Adamji, Jubli, Salam Takaful, they worked with us to make sure that their corporate employees and families have that service. Another sector that we touch, which is very important to mention because there are a lot of microfinance companies here, when we thought about कि हमारा market cap क्या है, there are around 12 million corporate employees in Pakistan registered in SECP as of the date of 2020. This is a very small market cap to touch for any company. तो हमने सोचा हम अपना market cap कैसे increase करें. We discovered that there's a sector that takes microfinance products जिनकी भी कोई health coverage नहीं होती, कोई life coverage नहीं होती. So we started reaching out to microfinance institutions and saying कि if you want to give a loan to a loanee,
the first thing that they do with that loan, or the most popular thing that they do with that loan, is कि जब कोई health catastrophe होती है, वो उस loan को उसमें खर्च कर देते हैं. So कोई economic development नहीं होती उस household की, वो घर नहीं बनाते, वो business नहीं चलाते. So if we protect their health, we protect their economic development. We gave this product to microfinance institutions such as Ahuad, Asa Bank, Mobiling Microfinance Bank. The day first 30,000 customers of Ahuad downloaded the application, and it was not done through them, to your point. It was enabled by their loan manager. So unka loan manager unko help karta tha download karane mein. Our system showed that on one doctor, there was an 11 patient on average gap wait time to connect to that doctor, which shows the need of the population to access these services only if it comes through a channel that is easier for them to understand. तो अगर मैं जाके उनसे बोलती कि मेरी प्रोडक्ट यूज़ कर ले, वो कभी ना करते. लेकिन क्योंकि उनके लोन मैनेजर ने बोला कि आप ये प्रोडक्ट यूज़ करें, आपकी सेहत अच्छी होगी, it was an easy product to use, it helped them. So I understand that not everyone has access to applications and it's a difficult product to reach. But if there is collaboration and if there's understanding of the target market and it's a value proposition for them, I have seen women use our application much more in low-income areas than men because they understand the value of it. So I think very right. So I think you've raised a very, I think, precise point that now we have to understand what digital marketing you're talking about is basically not only through the app, but then there is an access also. So for example, all this rural population, they don't have digital apps, they don't have internet access, but they still need insurance, right? They still need those services we're talking about. So I think, what do you think? What are, मैं panelist भूल जाता हूँ panelist भी. So I think my question is, how do you think, without that digital access to them, is there any other way they can actually access these products? Sir, they can digital access है, मैं कह रहा हूँ, but it's limited to certain applications, such as your main social media applications, right? So if you push them, your services through that, say TikTok is for outreach and WhatsApp is to convert the customer. So essentially, or Facebook as well. So you have to leverage what already exists in the market without bringing in new things on top of that. Because what you also need to understand about your rural population is, again, as we said, Pakistan's a very young country. So a lot of the people, so हर 3 में से 2 लोग इस मुल्क में 30 साल की उम्र से कम है. So that's a crazy statistic, right? So, and these people are growing up digitally native, right? उनको games खेलनी आती है, उनको phone चलाना आता है, उनको WhatsApp करनी आती है, उनको phone पे तकरीबन सारी चीज़ें करनी आती हैं. ऐसी बात नहीं है. Just because they don't know how to speak English and do that doesn't mean they don't know what's going on. They're very well aware. It's just the forums that are being used to reach them, from our perspective as a city urban person, is very different to how we relate to the internet or connectivity versus them, right? So they'll have WhatsApp groups, for example. They'll push things to their own forums on different social media. So understanding where the customer is sitting and then pushing it across in that channel. Also using local influencers. I don't know if you guys are aware, I'm sure you guys have seen on your Instagram and Facebook, a lot of jo clothing products hoti hain, they're pushed by really famous models or influencers. Why do you think they do that? They do that because people already trust those people. They follow them, they watch their stories. Hence, companies are willing to pay a premium to those influencers to market their product. ऐसे ही रूरल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो टिकटॉक पे वायरल चले जाते हैं. आप उनके साथ पार्टनर करें, उनको बोलो यार मेरा प्रोडक्ट पुश करो, उसके पास वैसे ही मतलब 3, 4, 5, 6 लाख फॉलोअर हैं, तो आपको वो फॉलोअर बेस बिल्ड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब उस मतलब इन्फ्लुएंसर के पास पहले से ही है. सो दीज आर इनोवेटिव वेज टू गो अबाउट डिजिटल मार्केटिंग दैट आई थिंक दैट older companies that are being run by boomers just do not understand at this point. So I'm being frank in my approach, but I see a disconnect, right? As a millennial, I see a very, very, very big disconnect with the people who are, say, in their 50s and their 60s and trying to sell products to us without understanding how we relate to the world. Like, how do we approach things, like it's just completely different, like the way they think about stuff and the way we think about stuff. And your country is primarily young. So if you're not going to listen to us, how do you expect to sell things to us? So very right. I'll go back to Kamran some on this. Just one thing to add. I think people sitting within this room need to change their mindset in a way that ये इन लोगों के पास access नहीं है. I think I beg to disagree with this, considering the sort of user base we have. हमारे पास
तकरीबन कोई 60 से 70% वो आबादी है जो कि मोबाइल ऐप के बजाय USSD से अपना मोबाइल अकाउंट ऑपरेट करती है. एंड टू आवर सरप्राइज दे इवन मतलब उनको याद है कि मुझे क्या *786 *1 *2 # डायल करना है एंड आई विल गेट माय वर्क डन राइट. So the understanding is there, the reachability is there. Apart from that, the one thing in terms of digital marketing that can ace is customer experience and transparency. So unless you don't revamp the customer experience in a way कि जहाँ पे let's say उसको अगर ना भी याद हो कि जी मैं कौन सी इंश्योरेंस कंपनी से क्या खरीद रहा हूँ, क्या प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा हूँ, लेकिन उसको वो कोड एटलीस्ट याद होगा. So we need to make that code so simple कि वो उसके लिए कोई मसला ही ना हो. Even to access that virtual clinic facility या फिर सिर्फ उसको अगर information भी चाहिए सो उसको पॉलिसी लेने के बाद ऐसा ना हो कि यार मैं तो फ़ोन करूँगा और मैं फंस जाऊँगा, मुझे किसी और चक्कर में ही ना फंसा दें. सो वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज़ को एंड वी बीइंग द डिस्ट्रीब्यूटर्स नीड टू बी वेरी प्रोएक्टिव इन अ वे कि यार कस्टमर को एक दफ़ा इंश्योरेंस अगर कस्टमर ने सब्सक्राइब कर लिया है सो वी नीड टू मेक श्योर दैट वी टेक केयर ऑफ हिम एज अपोज टू वो जी क्लेम आ रहा है और फिर हम नहीं उसको सही से एंटरटेन करें. सो वे दिस इज़ वेयर टेक्नोलॉजी किक्स इन बी इट थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू डेडिकेटेड मोबाइल ऐप जहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस हम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं. सो उसी ऐप उसी विंडो को ही हमें चैनल बनाना है फॉर ऑल दीज you know insurance ecosystem related items, be it policy subscription, claim submission, any information. या अगर कोई information नहीं भी है तो भी उनको at least एक guiding path ज़रूर देना है. So this is what we think. So I think आपका point taken right. So I understand कि marketing through digital media is different, and then you're talking about, but this is all providing information. Now my question is, if somebody गाँव में Mr. Ladita, he went on your WhatsApp group or whatever, the product है, उसके बाद जाके अब वो कहता है actually I need that Turab's product, तो वो कैसे खरीदेगा? Do you have that payment integrations within your product? तो उसकी access के साथ साथ अब उसकी purchase जो है वो किस तरह possible होगी? So again, I guess it goes back to Mr. Turab here. Payments is again through providers like Jazz Cash और Easy Paisa, right? And वो one link payment भी अब आ चुकी है. अब देखिए, अब मेरे पास बेशक स्मार्टफोन नहीं होगा, लेकिन जो किराना स्टोर पे बैठा हुआ है ना, उसके पास Easy Paisa भी है, Jazz Cash भी है. मैंने उसको जाके पैसे पकड़ाए, मैंने कहा इस नंबर में भेज दो. तो अक्सर ये होता है कि हमारा कस्टमर है लेकिन पेमेंट किसी और दूसरे नंबर से आ रही है. हमने कहा यार ये किसका नंबर है? उसने कहा यार वो किराना स्टोर पे मैं गया था, मेरे पास स्मार्टफोन है नहीं, बस मुझे पेमेंट करनी थी. तो वो एक्सेस अक्रॉस द कंट्री अवेलेबल है. एंड अगेन हम जो गलती करते हैं ना शहर वाले लोग, हम उनको समझते हैं कि वो जाहिल हैं या उनको पता नहीं है. वो जाहिल नहीं है, उनको सब पता है, एक्चुअली सब पता है. उनकी कम्युनिकेशन डिफरेंट है, बस वो हमसे एक लेवल जो है मतलब अंग्रेज़ी में नहीं कम्युनिकेट करे, बट दे अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन, और उनको अपना मफाद बिल्कुल पूरी तरीके से समझ आता है. ये जो चैलेंज आता है वो ये है कि हम उनको समझाए कैसे कि भाई ये सीन है और इसको आपने इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपको ऐसे फ़ायदा होगा. लोग अभी जो इसको जिस तरह से देख रहे हैं ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म्स में बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करके समझाते हैं. अगर आप उसको आसान लफ्ज़ों में समझाएंगे और ऐसे तरीके से समझाएंगे कि वो बंदा कंफर्टेबल हो. अगर वो कंफर्टेबल ही नहीं होगा, इफ़ ही फील्स व्हेन समवन इज़ पिचिंग टू हिम दैट ही इज़ ऑल लाइक एंग्स्टी एंड एजिटेटेड एंड यू नो ही इज़ फीलिंग कि यार मेरा कोई ये आके कुछ गलत तो नहीं कर देंगे, इफ़ ही इज़ इन दैट माइंड सेट ऑलरेडी, conversion will be very low. But if he feels comfortable, if he feels relaxed, someone is speaking to him in his own language from his own local area, then it becomes much easier to convert that potential lead. So perfect, sir. My question for Kamran Sahab is, trust and perception issues जो non-life insurance के ये तो यहाँ पे हैं. What do you think? What can the industry do to actually overcome these issues? I think you are absolutely right कि जो perception issues हैं especially life insurance, no life insurance के हवाले से बहुत ज़्यादा हैं. सर सॉरी इसमें ऐड कर दूँ, लाइफ में तो लोगों को एक ही प्रॉब्लम रहता है कि एक्चुअली खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा. नॉन लाइफ इज़ अ डिफरेंट सेक्टर ऑल टुगेदर. यहाँ पे तो मसला ये है कि ट्रस्ट किस पे करें. तो लाइफ में तो फिर उन्हें पता होता है कि हमें कुछ हुआ तो घर वालों को कुछ मिलेगा. नॉन लाइफ का प्रॉब्लम ये है कि मेरी फसल को कुछ हुआ तो फसल के पैसे कैसे मिलेंगे, या मेरी गाड़ी को कुछ हुआ तो गाड़ी के पैसे कैसे मिलेंगे.
इसकी पेनिट्रेशन भी बहुत कम है, और क्योंकि बहुत बड़ा ट्रस्ट का इशू है, तो इसको कैसे आप समझते हैं? देखिए यू राइट, जैसे हम बात करते हैं इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज लेस देन 1% इन पाकिस्तान, और जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो वो उससे भी कम होती है। गाड़ियों की एग्जांपल लीजिए, विच इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कि आपकी जब गाड़ी रोड पे आती है शुड बी इंश्योर्ड फ्रॉम एनी इंश्योरेंस कंपनी, एटलीस्ट 3G इंश्योरेंस होनी चाहिए, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी की इंश्योरेंस होनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली अबाउट 3% ऑफ दी मोटर व्हीकल आर इंश्योर्ड अगर आप बात करते हैं पाकिस्तान में। तो व्हाट इज़ द रीज़न? इसमें ट्रस्ट का मेजर फैक्टर आ जाता है, अफोर्डेबिलिटी की बात आ जाती है। अगेन लोगों का जो परसेप्शन बना हुआ है कि जब कोई इंश्योरेंस ले रहे हो तो दे नीड अ इंश्योरेंस एजेंट जिससे वो बात करते हैं, दे विल प्रोसेस देयर ऑल रिक्वायरमेंट फ्रॉम ऑन बोर्डिंग टू क्लेम इंटीमेशन। जब क्लेम आता है तो एक थ्रेड बना हुआ है, एक फेयर सा है कि जब कॉल की जाती है तो एजेंट कहाँ होगा उसको ढूंढें। डायरेक्ट एक्सेस टू द इंश्योरेंस कंपनी बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आई बिलीव यही रीज़न है। देन उसके लिए अनफॉर्चुनेटली जनरल इंश्योरेंस में प्रोडक्ट इनोवेशन बहुत कम हुई है लास्ट 5 to 7 ईयर। कुछ प्रोडक्ट्स हमें दिख रहे हैं, जैसे इनिशियली तौर आपने बताया एक प्रोडक्ट पेज यू ड्राइव की हम एग्जांपल लेते हैं, तो वी कम अप विद दिस आइडिया कि यार अबाउट 30 मिलियन व्हीकल्स पाकिस्तान में, उसमें तो इंश्योरेंस हार्डली आपकी 3% ऑफ दी मिलियन के करीब आपकी गाड़ी इंश्योर्ड है। रीज़न क्या है? लोग डरते हैं, वंस व्हीकल आपकी पुरानी हो जाती है तो दे सेड कि यार गाड़ी चलती बहुत कम है तो हम इसकी इंश्योरेंस क्यों करवाएं, ठीक है। तो वी कम अप दिस प्रोडक्ट कि आप जितनी गाड़ी चलाते हैं आपको उतना प्रीमियम पे करना होगा, और वो भी मंथली बेसिस पे। यू डोंट नीड टू पे इन प्रीपेड इन एडवांस कि पूरे साल की आप इंश्योरेंस एक साथ पे कर दें, तो आपको इसमें एक एडवांटेज मिले। कवरेज जो होती है वो आप कॉम्प्रिहेंसिव देते हैं? इट विल बी अ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, नॉट ओनली दिस कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, आपको फर्दर इसमें एडवांटेज मिलता है। अगर आपका ड्राइविंग बिहेवियर अच्छा है, टेलीमेट्रिक्स के थ्रू हम इसको मॉनिटर करते हैं, तो विल गेट इन फर्दर डिस्काउंट। अगर आप अच्छे ड्राइवर नहीं हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा प्रीमियम लोड कर दिया जाता है, बट यू कैन मॉनिटर योर ऑल एक्टिविटी ऑन द मोबाइल ऐप। तो आप ये IoT के थ्रू लेवरेज करते हैं इसको? हाउ डू यू डू दिस? बिल्कुल, वी आर यूजिंग टेलीमेट्रिक्स डिवाइस, तो वो उसको मॉनिटर कर रहा होता है। तो एंड यू कैन गेट दी फर्दर, जैसे आई मेंशन अर्लियर कि कस्टमर के लिए अपार्ट फ्रॉम क्लेम तो उसको मिलना ही है। चले कुछ इंश्योरेंस कंपनी लेट देती हैं बट क्लेम दे देती हैं। माय क्वेश्चन इज देयर, माय क्वेश्चन इज कि लोग ट्रस्ट कैसे करें? द प्रॉब्लम इज कि लोग ट्रस्ट कैसे करें कि ABC इंश्योरेंस कंपनी मुझे ये मेरे पैसे देगी? दैट्स द बिगेस्ट इशू। लोग अफोर्ड भी कर लेते हैं एंड दीज सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स लोग बाय भी करेंगे, एंड देयर आर अदर कंपनीज आर ब्रिंगिंग daily motor coverage and stuff like this. So my question is, how would people go on and trust? So मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूँ. For example, अगर Jazz Cash, तो आप बैठे हैं, Jazz Cash कोई health insurance दे रहा है, people have a trust on Jazz Cash name, right? So in this scenario, मैं कह रहा हूँ कि इसके अलावा क्या trust factors हैं जो हम लोगों को बता सकते हैं कि non-life insurance की चीज़ें आप लें, और ट्रस्ट फैक्टर क्या है? ये दिस इज माय आई बिलीव देखिए ट्रस्ट फैक्टर तो यू हैव टू बिल्ड दिस ट्रस्ट फैक्टर। ये एक रातों रात नहीं होना, या विद इन स्पेन ऑफ 1 year 2 years नहीं होना। वी एज एन इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट डिलीवरिंग एंड इन्फॉर्मिंग कस्टमर, एजुकेट करना शुरू कर दिया है। डिजिटल सोशल मीडिया को वी आर यूजिंग एंड वी प्रोवाइड देम द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लेम सेटलमेंट्स कि भाई आपका क्लेम विद इन X अमाउंट ऑफ टाइम सेटल हो जाता है। क्लेम प्रोसेसिंग का जो आपका जर्नी है वो आपको बड़ी ईजी बनानी होगी फॉर द एंड यूज़र। I believe it will take time, but inshallah, by that time it will be improving. Sarah, you want to add something on it? I think just a simple point. Trust doesn't develop intrinsically all the time. Sometimes trust has to be pushed. And the best way to push trust is through policy. So for example, I'll give a very small example. Banks are now focusing and creating products to focus on people with disabilities. Now that change only came when SBP pushed them to introduce those products with people for disabilities, particularly people that have hearing and visual issues. Today, so I'll talk about my sector because that's what I work with. Where do you see that there is a health insurance to be given to every corporate employee and their family in their country, which should include primary insurance as well in one form or the other? You don't see that. So you don't see it disseminated because जब किसी को करने की कहीं से law में वो नहीं है, accountability नहीं है, accountability is the right word. When you don't have an accountability, you will not use the product. When people don't use the product in a tangible market. So for example, Jazz Cash is Jazz Cash today because a wide variety of people have their wallets and doing transactions, and they fulfilled a need. But unfortunately, in products such as motor insurance or maybe agri-tech or health-tech, that's not something that people use daily. It's not a lifestyle product. It's not like ordering food. It's not like watching a cricket match on TapMad. It is something that you would require at certain points of your life, and some people are more vulnerable than the others. These sort of products need to be pushed in policy. Until that happens and a tangible mass uses it,
you won't see the trust building in people. Turab, please. मैं थोड़ा सा probably disagree करूँगा इन सबसे शायद उसका the reason being conventionally insurance companies के product जो है ना वो कभी भी customer centric नहीं रहे. Sorry to say that, but again this is the case, right? Customer को चाहिए कुछ होता है उसको दिया कुछ जाता है because at one point in time जो sales agent है या जो field में बैठा है उसका एक incentive है that is bound with that particular sale. So this is where technology comes in, right? As soon as these new upcoming insurance companies or the conventional insurance companies, they step into those digital grounds and make the products that are more customer centric, that addresses to their needs, this is where they start building the trust automatically, as opposed to just pushing them the product. For example, if a person is traveling on, let's say, motorways, right? अगर उसके पास पुरानी गाड़ी भी है और वो इंश्योर्ड नहीं भी है, वो नहीं कराता शहर के अंदर, but again, he's more cautious with the fact कि यार ठीक है मैं जब भी motorway पे travel कर रहा हूँ, so I'm at high risk, right? So at that point in time, अगर मैं उसको insurance pitch करूँगा ना, no matter what the company is, he'll probably opt for it. But again, if the product doesn't exist, he'll never opt for that insurance. So this is one thing that we need to realize that technology can only help us build customer-centric products. Once those are there, the customer experience is built, transparency is there, trust factor will automatically be escalated, as opposed to कि जी ठीक है वो आपको गाड़ी की insurance करानी है, आपके पास आएगा, agent आएगा, या even the multiple plays I see है कि जहाँ पे आपको वो compare and contrast और aggregators भी बने हुए हैं और वो कहते हैं कि जी ठीक है आप फलानी insurance product ले लें, फलानी ले लें, but again वो है क्या, वो वही physical approach को वो digital platform के ऊपर डाल दिए, which is one leg of awareness, which is very good. कि यार ठीक है आप खुद compare and contrast कर लें आपको कौन सा product लेना, but again वो जो need based product है ना, until and unless that's not technology driven, trust factor probably will remain an issue for this industry. Yeah, so over here I'd just like to add again, we're talking about policy, right? So when the State Bank Governor Raza Bakar left his post, he had come up with this directive for agri-tech, which was electronic warehouse receipt financing. So us as a company, we participated in this in the way that there's this company that does EWRF, which is Name-It Collateral. So we essentially provide them the daily pricing of the commodities through which receipts are issued, right? And in the past year and a half or two, this policy has been very successful. They've done almost 5 billion worth of stock, which has been insured with 0 claims to date. And the reason for its success is that the insurance premium is charged to farmers on a monthly basis instead of an annual basis, and the rate is extremely competitive. It's 0.21% PA for fire and allied. And the fidelity and professional indemnity coverage is also part of the EWR package, right? So the digital visibility of quantity and quality is always available with the insurance companies. So what that does is essentially cuts out the farmer going to the mandi, and instead of doing that, he'll go straight from his farm to Name-It's warehouse, and from there it'll go to the processor, whether that's a feed mill or a rice mill. The idea over here is that instead of going through multiple intermediaries, जैसे आपका कच्चा आरती होगा, फिर पक्का आरती होगा, फिर आरती लेके जाएगा processor के पास, पे प्रोसेसर उसको ख़रीदेगा. अब फार्मर फॉर एग्जांपल अगर एक चीज़ बेच रहा है 4,000 रुपए की, फिर मंडी में होके वो नीलाम हो रही है, फिर वो 6, 6.5, 7,000 की बिक रही है, कच्चा आरती ख़रीद रहा है, फिर पक्का आरती उसको 9,000 में बेच रहा है. अब फार्मर तो उसकी कॉस्ट पूरी नहीं हुई ना, अब वो तो कर्जे में ही है उसी कच्चे आरती से जिसको उसने बेचा था, जिससे उसने इनपुट्स लिए थे. मकसद कहने का ये यहाँ पर कि इतने ज़्यादा इंटरमीडियरीज यहाँ पर क्रिएट हुए हुए, चाहे वो एजेंट हो, चाहे वो आरती हो, चाहे जो भी प्रोसेस में हो, जिसका मफाद जुड़ा हुआ है उस सेल के साथ, कि कस्टमर, चाहे जो whoever that might be, in this case the farmer, he's not ready because he's like, what am I getting in this? He's like, I'm already in debt to this guy. Why would I pay, like why would I get less money for a product that I'm working 6 months for, and then I'm already still in debt? So it makes no sense for them, right? So you have to give them something that's worth their while, that they see कि हाँ यार इसमें मेरा फ़ायदा है, मैं कर्जे से निकलूँगा, I'll reinvest that money back into my field, कल को मुझे और फ़ायदा होगा, मैं और प्रॉफिट कमाऊँगा. तो जब तक वो प्रॉफिट मोटिव सामने नहीं आएगा नज़र, वो तो कहेगा यार मेरे जेब से जा ही रहा है, आ नहीं रहा. तो जब तक वो आप नहीं दिखाओगे कि भाई इससे आपको आमदनी वापस आएगी, तो वो कैसे राज़ी होगा आपकी बात पे.
तो मेरा मकसद कहने का ये है कि हमने EWRF के साथ देखा है कि अडॉप्शन बहुत ज़्यादा थी बिकॉज उसमें फार्मर का फ़ायदा था. तो जब तक आप फ़ायदा नहीं समझा पाओगे कस्टमर को, बहुत मुश्किल है सेल करना. So let's try to close this now because I think she's asking for the time. Very quickly, I'll ask you one thing. How do you believe, because हम technology से move कर गए actually product development के ऊपर, और the reason I've not talked about challenges, we know the challenges are same. Awareness challenge है, technology challenge है, accessibility challenge है, affordability challenge है. But quickly, for the claims purpose, technology plays a vital role, right? So I can understand that through technology, Jazz Cash or Easy Pass and all these fintechs can play a serious role. But what about in your case, Sarah, when the corporate actually apply for the claims, does this come to you guys or directly goes to the insurance company and they actually then leverage it? And whether they leverage it in 3-4 days like these people do it, or they do it in the normal process of 15-20 days? So claim management is something that we have started recently because we first wanted to build a user base of our primary product and have people trusting us as that provider. If people come to, and I completely agree with the gentleman there, that if the customer experience in the end is not good, whether it's any product, no one is going to come back to it. Now that we have a sizable base of users trusting us with our primary product, now we can go and create these top-line products or additional products such as claim management, such as online pharmacy services. I, for one, believe as a medical doctor, there's a huge value of home healthcare services, which is non-tertiary care essential services that can be covered by insurance as well, including diagnostics in another option altogether. So we believe that now that we have a sizable user base, now we can challenge the insurance company to think that can we digitize and automate the claim management process as well. Also, can we get one step ahead and make our doctor that primary gatekeeper that the patient needs to come to, get checked, then they decide if the patient actually needs to go to a tertiary care hospital or not. And this conversation I've done with many colleagues of mine, and we've had this discussion that how can we integrate products like ours within the user journey of insurance companies and not just being a value-added product. That's very important to make that change now, but that will only happen if an ecosystem of HealthTech product develops, captures the market, and then starts creating these system integrated products and not value-added products into the ecosystem. Kamran sir, very quickly to you because आपको time कम मिला. Sorry about this. I think totally agree. Not only for health segment, जो भी end user consumer driven products होते हैं, उसके लिए आपको claim process आपको बड़ा easy और immediate करना होगा. It's not like that कि आपने document submit करा, you have wait for 15 to 20 days to chunk down this claim. Within a day or two, up to IBFTs भी आ चुके हैं, तो then and there you can pay out the claim. So I think that's great. Thank you. That's all for us. If there are any questions, we're ready to answer. Thank you so much for this panel discussion. Now we'll have 10 minutes for a Q&A session. So I'd like to request the ushers in the audience, please. You can raise hands if you have any questions for these panelists. Are there no questions at all? Or we do? We're done well then. See if it's open. My name is Asim Raja. I'm Chief Commercial Officer at Fifth Pillar. Since nobody was asking the question, so I just felt कि एक comment कर दूँ. I think Gasharib is here. The way your name is unique, I think your ideas are really unique. Being the student of this insurance industry, I think these insights can help us a lot in developing our new products. And जहाँ तक Insurtech की बात है, I think Ali साहब ने बात की and जावेद साहब ने बात की कि already जो पिछले 30 साल से companies काम कर रही हैं, they are not technology based. So first तो Insurtech का जो summit जो ये हो रहा है, पहली बात तो ये कि वो सारा system, सारे जो back end processes हैं वो digital हो. जो हम insurance बेच रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं, वो सारे digitally enabled हो. And अभी तक वो लोग properly, मुझे लगता है मैंने कोई आज से 10-12 साल पहले भी हमने ऑनलाइन पॉलिसी इशूइंग स्टार्ट की थी. स्टिल वो फिजिकल मॉडल ही है, उसको अडॉप्शन बड़ी मुश्किल है. सो अडॉप्शन इज़ अ चैलेंज, बट जैसे गशारिब ने बात की, वो आरती वाला सिस्टम, वो सोशल फैब्रिक को अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. उसको अंडरस्टैंड किए बगैर हम बात तो करते हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ये चैलेंज, दूसरा अवेयरनेस चैलेंज, तीसरा चैलेंज, मतलब यू कैन नेम
all these challenges. But by understanding the social fabric and channelizing this social fabric के जो उसमें influencers हैं वो through TikTok हैं या वो through WhatsApp हैं उनको utilize करते हुए हम अगर पहुँचेंगे end user तक so I think हम mass market में entry ले सकते हैं and बहुत अच्छा एक conversion ratio बन सकता है जैसे कि अगर conventional banks जो normal banks चल रहे थे काम कर रहे थे पिछले 70 सालों से उन 70 सालों में उन्होंने 20% की penetration की पूरी country में 40-45 million के टोटल अकाउंट होल्डर्स हैं बट पिछले 7 सालों में उतने अकाउंट्स या मोबाइल वॉलेट्स डिजिटली ओपन हुए हैं जो कि 70 सालों में ओपन हुए सो हमें वो रूट डिफरेंट लेना पड़ेगा थोड़ा सा पहले तो अपने एग्जिस्टिंग चीज़ों को डिजिटलाइज करना पड़ेगा देन एक डिफरेंट रूट के साथ सोशल फैब्रिक को अंडरस्टैंड करते हुए इन्फ्लुएंसर्स को कनेक्ट करके हम उस मासेस तक पहुंच सकते हैं एंड कन्वर्ट कर सकते हैं बना सकते हैं एक सक्सेसफुल मॉडल फॉर अ डिजिटल इंश्योरेंस Thank you so much. Are there no further questions? Oh, there is. There is one gentleman at the back, please. Hi, my questions to Dr. Sara Said Kuram. Thank you for your comments on saying that yes, there's some middleware that is required to connect all these insurance and these health tech players together. My question to you as a doctor today, if we talk about telemedicine and doctor consultations are today not covered in health insurance because it's a cash-based economy, and that is, in my view, we work in health insurance, is one of the biggest hurdles to having health insurance spread across the country, because as you probably know, 60 to 70% of your out-of-pocket expenses on health go towards OPD consultations. If we in today's world, how do you see, you being a doctor yourself, how do you see doctors and OPD being included in the health insurance, not from a telemedicine perspective, but actual physical consultations? How do you see that playing out? And what role do you see insurance companies and other health tech players playing in making that happen, where doctor consultations, either on a copay model or on a cashless model or any other model, come into the sector and becoming cashless for someone who has health insurance? Yeah. So, just to answer your question, and you're absolutely right, I think a big problem in the outpatient structure is a lot of physical doctors still charging cash from patients, whether you call it habit or it's avoidance of tax. I don't want the doctor community to hate me, but unfortunately that is a true fact in a lot of tertiary care hospitals that a lot of my fraternity doctors do. I think, again, we have around 7,500 doctors and 1,200 to 1,300 doctors consult on a daily basis. And contrary to popular opinion, these are just not doctors who are sitting at home idle. These are a lot of doctors who are working with us for making an additional income out of their tertiary care hospital practice or their primary hospital practice. The reason why they work with us is they know that at the end of the month, they will get 60% of each consultation, they will get it on time. They will get a transparent sheet that will tell them how many consultations that they've done, and it's all digitized. So we have been able to establish trust with that doctor who's also sitting at a tertiary care hospital and charging cash. The day you create trust with those doctors that they will be reciprocated transparently within time, and they will not lose the customer that they're creating, because I don't want to call patient a customer, but that is their target market that they're activating. That day you will start seeing cashless transactions in primary care as well. A part of that has to be handled through digital healthcare, because Pakistan has a big gap of doctor-patient disparity. We have half a doctor for 1,000 patients in the country. There is no way you can handle equitable healthcare in the country without getting access to technology. But there will be a flow of doctors that will convert into digital healthcare practices, and those will be the younger generation of doctors. Pakistan's primary healthcare ecosystem is right now driven or monopolized by doctors between their 50s to 60s that handle majority of the patients. Now, there will be a wave of these new key opinion leaders who are between 30s and 50s. And if they change their habits using solution like ours or creating a transparent digital transaction system with the insurance company they work with, they will then get into the habit very early on of doing a cashless transaction, and that's going to generate a wave that you will see in the next 5 or 10 years of now. But I can tell you from my experience that a lot of doctors that we've gotten on our platform from tertiary care hospitals really find it very easy to use telemedicine for follow-up consultations. It's just that someone has to explain to them
how does it benefit them transparently and clearly? Absolutely. Thank you so much, and thank you to the panel. If I may request all of you, Asim, Abu Turab, Ghasharib, Sara, Kamran, to stay for a picture, please, a group photo. Thank you so much. That was a very honest and a very thorough feedback from the market. So a round of applause for these guys as well. Thank you. Next, if I would like to request Mr. Wajahat Khwaja, who's the head of strategic initiatives at Salam Takaful, to come and present us with an overview of Salam Takaful Limited as the first Islamic Insurtech in Pakistan. I thought I was going to sit in a panel and then have a discussion, so I've been told I'm making a presentation. So let me just get ready for that. Just give me a minute, huh? Take your time. Assalamu alaikum, everyone. It's very good to be here. I'm seeing some old faces, actually, so it's nice to mix with my fraternity after a while. So while the presentation goes up, it was a very interesting discussion, and I just wanted to jump up and share some of my thoughts, but I kept quiet because I wanted the panel to speak about it. I think there was a discussion around how we build trust on the insurers. Unfortunately, it's our doing, I acknowledge that, but I think key to that trust building is also an extremely robust legislative framework that we need to have, and not just having it, whose key implementation is extremely important. So if we have that, then it becomes easier for insurers also to go out and be able to support the customers. So we also have a lot of corporates sitting here. Unfortunately, what happens at the end of the day when we go to our corporates, regardless of health insurance or motor insurance, it really boils down to the price. So when you talk about literally offering a product free of cost, then don't expect good quality service also. Because humko bhi apna business chalana hai, so we are also there to make some money. If you want to drive a Mercedes, you have to pay for it, right? But you want to drive a Mercedes, sorry, I'm not bashing anyone, but just being apologetic also, but if you want to drive a Mercedes, you have to pay for it. You can't get a Mercedes without paying for it. Right, so basically, I've been told that I need to speak here also, because apparently we are one of the largest sponsors of this event also, but it's a pleasure to be here. You know, Salam Takaful is the first and the only Islamic fintech of Pakistan, and we are truly digital in a lot of respects. And I say this from my own observation, not because of I'm an employee of Salam, but because I've seen them from the outside, and I've only literally just joined them, and I'm learning what they have done. Let me just move forward and let you know basically how we are trying to do things and what we've done and what has been good and where we've also failed and lost money also. And I'll also touch upon both parametric products and our livestock product, actually. That's where we lost money. But we were the first company who's been heavily engaged with SCCP on their sandbox cohorts, actually. The life company, where one of my colleagues has already probably spoken about, we wanted to run through that sandbox cohort, but we were a little late. So we ran that separately, and we ran it at parallel, basically. And currently, of the 3 cohorts that SCCP has run on the sandbox model, we have had 2 of them. So one of them was our parametric flagship product, basically on crops.
And the second, obviously, was our pay-as-you-go motor insurance also. By the way, we also have pay as how you drive, which is really looking at a driver's behavior and then adjusting our pricing and rewarding our drivers accordingly. So that's slightly different from pay-as-you-go. Now, our approach is very customer-centric. So we touched upon a lot of ideas. Sorry, I didn't catch your name, actually. But we talked about that we need to understand the customer's landscape. What we did when we decided to go into livestock space, our colleagues spent months with the farmers. Baade mein jaake, bhaison ke, farmers ke saath, we spent time trying to understand their challenges and convincing them the value of our product, basically. And then we launched that product. So it's not that we don't go out and try. All of this costs a lot of money, actually. Now, at Salam, we are a relatively small company, yet we are trying to innovate to the best of our abilities. And we are reaching out to the customer to try and understand their actual needs before we launch our product. And this is exactly what we've also done for our parametric crop product. We haven't just developed a product. A parametric product is extremely expensive for an insurance company also, but it requires tons of data. Data that we currently do not have the capability in our country. We have data available from open sources, but to crunch that data into a format that can actually come up with a pricing model is extremely difficult. So we have to source the data from international organizations, and it's really expensive. So when we add that data to our pricing model, to our end product, it becomes extremely expensive for the farmers. So what we did, we went about, and by actually getting that data for free, we ran 2 pilots, one with Syngenta, one with FFC. So much so, the success of those 2 pilots is that the farmers are now coming to us directly because they know that we understand their needs, they know that we have the right product, and then we can afford them the coverage that they really want. Now, as I mentioned, it's really expensive, it's not easy. So we're working with the likes of UNEP, we're working with the likes of ADP, we're working with the likes of NDMRF, IBM, Global Parametric, Blink Parametric, you name it. We are just throwing out there and we are trying to connect with everyone. And we've built those relationships. Hopefully, if we can get that funding either from the World Bank or the IFC, we will be able to really launch that product through a landscape that we've ourselves created. The relationships that we have created and the ecosystem that we've created. And I promise you that product will be extremely beneficial for the farmer. It will be very cheap also for the farmer to buy. And you'll be surprised how knowledgeable your farmer is. And we're targeting small farm holders. Huh? We're not targeting large farm holders, basically, because they are already sophisticated. But there was a talk about, really trying to understand the ecosystem and your customer needs. Those farmers know exactly what they want. They will challenge you to ask questions on the type of fertilizer to be used. They will challenge you on the type of product that we have and or the type of product he's going to sow in the next sowing season. So, we should not kid ourselves. We've got to be very, very prepared ourselves when we go out actually and speak to those people. So, sorry, I digress a little bit, but I just wanted to give you the overview as to what Salam is really doing. We're really using technology and leveraging, basically. Because, if you look at the products that are on offer, sorry, I'm terrible at managing my mic and voice, so I apologize. We are working currently on cybersecurity. That's something that has recently come out. The State Bank has put out a mandate that every bank has to offer cyber, and it's really vague, it's really confusing at the minute, so we're trying to figure out basically what is the best product for every individual customer. We are engaged with a couple of reinsurers and our partners, basically, hopefully will come up with that product actually. Then, we're the only one that has come up with a parametric product. No one has come up. So we have that in the travel space. If your flight is disruptive, we will pay for that. As long as we get the notification that your flight is disruptive, we'll just immediately pay that out into your account. There are no questions asked on that. And that's the basis of the parametric product. For us, insurance, the beauty of the parametric product is we already know our exposure. So we've already done our calculation, our modeling, basically, to price that product. And then, of course, I've already talked about pay how you drive. I think Kamran already spoke about pay as you drive. Then we have our Salam app, actually, that every customer, regardless of the line of business they're insured with us, they get it. That app actually provides them health services. It provides you telemedicine also, which I see is becoming quite common in Pakistan. And, from the perspective of the industry in general, there's a lot that needs to be done, obviously. But I think the corporates also have a role to play in that. They need to really understand that we are also running a business, and when we offer you a product at a certain price, we have
tons and tons of data based on which we've done our crunching and come up with a price. At the end of the day, if you're just asking a random price, it's not really possible for us to do that. But you will, in Salam, you will find a partner actually that is really looking to revolutionize the insurance industry. We are 60% paperless. We don't use papers. We are environmentally friendly. That's the reason why we brought out these parametric products, and we are heavily engaged with, again, going back to IFC and the World Bank with regards to ESG products. And that's the only space, by the way. The only two spaces where the insurance industry has progressed in the last sort of decade or and a half is cyber and ESG. The insurance industry only responds when a customer comes up with a new challenge. And unfortunately, that's the way the insurance industry responds, actually, because it's the customer that comes up with a specific need, and then we would then subsequently develop a product. And that's really the reality for cyber and ESG also, because all of the businesses, the large corporates are moving towards net carbon, and net zero emissions. So we had to develop products in those spaces. So there are a couple of products out there in the market. Carbon credits is one, excess emission product is another one. And that's, by the way, something that we are also looking to develop at Salam also. So you'll soon see that we are coming up with that innovative product in the market also. That's a bit of a shebang and story about Salam Takaful, actually. So if you have any questions, more than happy to answer you guys. I can't be that good that I've made everything clear. So there's got to be some questions. We're really doing it for our own company right now, measuring a carbon footprint. There are formulas out there, but it's very difficult, and I don't think we have the expertise in our country also at the minute. The NDMRF has started a project on that. They want to bring about, carbon credits in the voluntary carbon market, but this is such a novel idea for Pakistan currently, and I don't think our large corporates also realize how to measure the carbon footprints also. So unfortunately, nothing is so. We've got to either borrow a framework from somewhere, with the likes of UN, for example, or IFC, and bring it about over here. Sure. It is a standalone product, just for your travel. You buy your travel policy, so we offer you a parametric product. Exactly, it's a travel disruption. So it only covers disruption. It doesn't cover everything. So as a result of that disruption, if you know your flight has been delayed, you instantly get paid half of the price of the ticket, as an example, whatever coverage you buy. It depends on the product you've bought. So you can have a silver, gold, and the limits can vary. Basically, it depends on what you can afford in terms of the premium. So for both. Not for PIA, unfortunately. Sorry, guys. Question like that. I'm still awake. It's working. Yeah. Look, that's always a challenge. You either tie up with travel agents, right? Or you go to your corporates and offer them. We have our own portal through which we can sell our products. It's available, so all our corporates have access to that portal, basically. And then, of course, the field force that we have, the production officers and the business development officers, they would go out and tell their corporates and their clients individually, basically. The best model for us is tying up either with an airline directly and or with a travel agency that has a large volume. Then historically, travel is not really an expensive product. I mean, and I'm fairly experienced in this field. I've worked for a travel insurer for 7 years globally. I shouldn't be saying this, but almost 80% of the price used to go to the agent, actually, right? It doesn't work like that for us because we also believe firmly in value for the customer, right? So it's not really a very expensive product, especially if you're buying a ticket which costs you 300,000 rupees, you can always add on another 10,000 rupees to that. So, yeah, you get half of that or, 1/3 of that, basically.
Thank you so much for such a detailed presentation on what Salam is doing right now. And it's good to know that there are multiple need-based products which Salam has already worked upon and marketing it. Since our today's agenda is to push the technology with insurance at a faster pace, and as the regulator correctly mentioned, that we cannot just take the baby steps to get this implemented. So with the advent of technology with insurance or financial sector with such a fast pace, there is always a risk of cyber attacks. I was just noting that cyber security thing in the last slide of your presentation. Can you just detail us further about how this cyber security insurance can further bundled up with this advancement in the technology at a faster pace, and how the insurance companies can also leverage on selling this cyber insurance to the segment which is currently advancing in terms of technology with insurance? Thank you. Let me ask you a question myself. As a business, what is the biggest threat when you talk about cyber? So in terms of business, the cyber, it takes you down in seconds. It takes your business down in terms of Effectively talking about hacking, right? Oh, exactly. Now, basically, as I mentioned, we respond when a customer comes to us, right? Now, within the cyberspace also, it's an area that is evolving. Even if you go to the markets with the likes of London and Europe, there is a lot of evolution going on within cyberspace because nobody really understands what to cover. It's really difficult. For example, the recent mandate. So I'll come back to your answer also directly, huh? Don't worry about it. The mandate by State Bank is every bank has to offer cyber cover, right, as an optional cover to every individual customer, right? Our interpretation is that what the State Bank wants from every bank is to protect the financial loss, right? Now that financial loss can be as a result of a scam. So we get multiple scam calls, right? Oh, this is your OTP and this is what, and willingly if a customer provides all of that information, how do we really cover that? Because the customers really offered all of that information willingly. So these are some of the questions the cyber market will ask us. And we need to be absolutely clear as to the kind of cover we can offer, right? So we're engaging with our banking partners right now, get that clarity and that cover. But overall, within the corporate world, you're looking at data breaches, which is the single biggest threat, especially within the advanced economies, because there are laws around data protection and data privacy. So that becomes a huge reputational issue also. So you can cover anything from, plugging that breach, from paying out for reputational damage, from paying out for cleaning up the data and the impacts, the afterward domino effect of all of that, right? Then you can also cover something which is called as individual cyber, which is your coverage for your identity theft, right? And basically, I mean, even if you look at a corporate, basically, the cyber attack will be if you take the server down and then you transfer the financial money. I mean, a lot of that does happen, obviously. So there are financial losses also associated. So the multiple perils or multiple coverages that can be offered within the cyber scope. It depends on the appetite of the customer. It also depends on their appetite of the value they are prepared to dispense off with against that coverage, because these coverages are not cheap. Let's be very, very blunt and honest, right? And this is where we as an industry also, as the insurance industry, we struggle to convince our corporates, look, you need to understand the cover yourself. For them, it's just a cover for the sake of cover, right? And they just want it for, literally, if they wish, I mean, all they want is they don't have to pay anything, they'll get the cover. It doesn't work like that. Some covers are expensive inherently, basically. Thank you so much. I am done. I can speak for another hour. It's okay if you want. Well, thank you very much, everyone. Thank you so much. Thank you so much. So many successful products are already available in the market that are working through these years. And only working through the data available through these products can we make the customer experience better for the next coming years. Let's move on to the next panel discussion, which is going to revolve around transforming insurance, leveraging health, tech, and wellness for enhanced customer satisfaction. The moderator for this panel discussion is going to be Ms. Nilofer Sohail, if I may invite her to come to the stage, please. She's an accomplished professional with 18 years of exceptional expertise in the financial sector as Deputy General Manager and Head of Channel Strategy and Execution at EFU Life Assurance Limited since 2013.
She has consistently demonstrated her results-oriented approach and dedication to driving organizational success. She's going to be joined by panelist Dr. Iffat Zafar, if I may request her to come to the stage, please. She's the co-founder and chief operations officer for Sehat Kahani, a telemedicine startup based in Pakistan. We'll have the panelist, Mr. Asim Alam. Again, please, if you may join us now as a panelist, we'd love to hear your views. And we'll have Mr. Sardar Abu Bakr. He's got 20 plus years of experience across several countries in Europe and Asia, recipient of Global Innovation Award from ITU UN for Digital Accelerator Work, founder of the State Bank Recognized Women Inspiration Network Program, and co-author of the OICCI Pakistan's Digital Transformation Report and 9-point Agenda for Financial Inclusion. He's also going to be joined by Mr. Ali Nadeem, who's an actuary by profession. He has over 16 years of experience of providing consultancy services in various countries in Middle East and Africa. And we'll have Mr. Ali Haider, who's been in the executive insurance industry with 20 plus years of experience in various leadership roles, head customer relations, head of health, country head EB practice, and COO within the insurance industry in Pakistan and the UAE. So we'll have 40 minutes for the discussion, please, and we'll have 10 minutes question answers, after which we're going to head out for the lunch break. So I'll leave it to you, Nilofer. Assalamu alaikum. So yes, already I am feeling it. The most difficult panel, I think, before the lunch. So I'll try, and I'll request my fellow panelists to try to keep it within time so that every one of us could have a wonderful lunch together. So I would just start, and it's very important. Sabse pehle to I would like to thank Pakistan FinTech Network for organizing this conference, the first Insurtech conference. और बहुत जल्दी से मैं बताती हूँ कि ये स्टार्ट कैसे हुआ था आइडिया. So last year पाकिस्तान FinTech Network ने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी फिनटेक्स के बारे में. I was in the panel of digital lending, and I was telling them कि why am I in the panel? Like I totally remember Abu Bakr was with me in that panel. हम जो है ना, और हम ये बात कर रहे थे कि यार इंश्योरेंस इस पैनल में चलो कर लेते हैं फिट किसी तरह हम डिस्कस कर लेते हैं. And we were surprised. 10 questions came in which were related to insurance in the digital lending panel. और उसके बाद मेरी फ़ाहद से डिस्कशन हुई, और डिस्कशन ये थी कि maybe you guys can think of कि एक ग्रुप बना लेते हैं, एक पैनल डिस्कशन कर लेते हैं on Insurtech in your FinTech conference. यहाँ से वो बात स्टार्ट हुई, and today we are all sitting together here in the Pakistan Insurtech Summit, the first conference organized by PFN. So this context was important. हमने बहुत सारा सुना, सुबह से जो है ना वो various rounds of exchanges थे, बहुत सारे views थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि लगा कि जो है ना वो शायद एक मोमेंट पे लगा कि शायद इंडस्ट्री कुछ भी नहीं कर रही है. Like literally ये feeling आई. बहुत सारे moments पे लगा कि नहीं कर रहे हैं पर अभी room है बहुत कुछ और नया करने के लिए. काफ़ी दफ़ा लगा कि दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है. So I'll give you my personal example. मैं अभी जून में I was in the micro insurance network की जून members meeting, और वहाँ पे हर कोई अपने projects discuss कर रहा था. And I discussed about जो हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं. And believe me, people were pleasantly surprised. They were not ready to believe कि ये काम पाकिस्तान में हो रहा है. They were not. Everyone had so many questions कि really like a big telco like Jazz वो इतने involved है इस business में. अच्छा, so Jazz Cash और Easy पैसा भी involved है. अच्छा आप लोग ये भी कर रहे हैं. अच्छा ये भी हो रहा है पाकिस्तान में. So many different perspectives, and that's when I realized कि हम शायद एक चीज़ में वाकई बुरे हैं अपने आप को market करने में. I think as an industry हम सब जो है ना वो शायद अपने आप को demonstrate नहीं कर पा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं to the world. I don't take it in any way कि improvement का room नहीं है. I think हमने अभी start किया है. There's a lot of room to improve, but we have started.
we are there, all of us sitting in this conference. और इतना engagement I think जो इस conference में आ रहा है, जो सवाल जवाब हो रहे हैं, people are meeting, people want to know more about it. So how can we say कि जो है ना वो insurance का रुझान नहीं है? बिल्कुल वहाँ तक नहीं पहुँचे और पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह. So किस तरह? So now coming back to my topic, I think ये context important था क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा बात की in the day कि हमें ना engage रखना चाहिए अपने customers को. They want to understand what insurance is, but they also need to be approached. They also need to be contacted. So I thought कि I'll give you some stats. Globally जो digital health है, that is growing at a rate of annual growth rate of about 9%. और यही projection है till 2028. जो industry है वो $504 billion expect कर रहे हैं in 2025. In 2022 जो wearables हैं that was about $25 billion. फिर अब बात करते हैं थोड़ी सी पाकिस्तान में आके. Again, not discouraging anyone. जो हमारे पास as HealthTech startups जो register हुई हैं, and I rechecked this like 3 times, 450 register हुई हैं. ठीक है, some grew, some pushed them back, कुछ sell हो गई, कुछ acquire हो गई, कुछ are doing very well. Some are being represented on my panel too. They are doing really well. हमारा जो डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो है दैट इज़ लो 0.83 over 1000. हो सकता है ये नंबर्स 8.83 ना हो 1 हो, बट डज इट मेक अ डिफरेंस? बड़े कॉन्टेक्स्ट में इट डजेंट, राइट? हमारी एक्सेस टू हेल्थ केयर लाइक ऑल आर वंडरफुल स्टार्ट्स हमारी 130 है, आउट ऑफ 195 हमें ये रेट किया जाता है. सो अब 2 तरीके हैं ना इसको देखने के, वेरी लो, बट अगेन जैसे हम इंश्योरेंस में हमेशा बात कर रहे हैं और आज भी बहुत बात की कि पेनिट्रेशन बहुत लो है, बट यही तो रूम है ना कि इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है, लोगों को अवेयर करने की बहुत गुंजाइश है, आगे बढ़ने की बहुत गुंजाइश है. एंड सेम गोज़ हियर विद हेल्थ-टेक. कोविड ने बड़ा हेल्प किया है इस वाले पूरे एरा को पुश करने में. सो आई विल ऑल्सो एंगेज यू, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस हैज़ टू बी एन एंगेज्ड कॉन्वर्जेशन. जस्ट आप लोग, एवरी वन ऑफ यू, जस्ट रेज योर हैंड्स जो अब एज वी स्पीक जिम जा रहे हैं या फिर घर में अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं. बाय एक्टिव लाइफस्टाइल आई मीन कि वो नहीं कि एक दिन वीडियो देखी मोटिवेट हो गए एंड देन इट गोज, बट वीक में 3 times 5 times अपना रूटीन इंक्लूडिंग माय फेलो पैनलिस्ट. कौन कौन ऐसे हैं जो इस लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं? गुड. आई थिंक अ सिग्निफिकेंट हैंड्स हैव बीन रेज्ड. कितने लोग हैं जो प्री कोविड 4-5 साल ईयर्स डाउन द रोड इसको फॉलो कर रहे थे? I see a few hands up still, but a few. तो एक पूरी दुनिया में आफ्टर कोविड इम्पैक्ट बढ़ा है ऑफ फॉलोइंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल. वर्क फ्रॉम होम ने बड़ा हेल्प किया है. लोग अब ज़्यादा जो है ना अपनी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पे ध्यान देने लगे हैं. सो एंड दिस हैज़ नॉट बीन अ ट्रेंड जस्ट इन पाकिस्तान, इट हैज़ बीन वर्ल्ड वाइड. सो ये इवन दो आई एग्री पीपल सेइंग कि ये पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एंड वी नो वी आर ऑल इन दैट ब्लेस्ड वाला सेगमेंट कि जिसके अंदर जो है वो देयर इज़ बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी लग्जरीज हैं. मगर देखिए हमारा एटीट्यूड कितना चेंज हो गया है प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड. सो इम्पैक्ट तो आया है, हर सेगमेंट पे अपनी कैपेबिलिटी पे इम्पैक्ट आया है. आज आप वेलनेस की वीडियो टिकटॉक पे देख सकते हैं. You can see it on YouTube. You can follow channels. You can do bits and pieces. Everyone wants to look good. All females wants to look good. So उसके लिए बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो मौजूद हैं, जो they can do, they can follow, and they can make it a part of their journey. Gyms की opening आप देख लें. I'll talk about Karachi. कितने gyms rapidly open हो रहे हैं in Karachi. So a lot of development is being taken place. Insurance में HealthTech और wellness, both of them I think can contribute significantly, because when we say we reach the customers twice, once जब we collect the premiums और second जब वो claim आ रहा होता है. But enablers like HealthTech and wellness, they help us कि हम जो है वो इसको और frequently कर सकें, उनको engage कर सकें,
उनको जो है वो ट्रैक कर सकें और उनको ऐसे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर सकें जिसके थ्रू वो और ज़्यादा इंगेज हों और ज़्यादा उसकी यूटिलिटी को यूज़ करें, एंड वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों इंश्योरेंस को फ़ायदा देगा. Directly engaged customers, indirectly it will reflect into your claim ratios and your loss ratios. So this has been an overview. I have a very exciting panel with me, a good representation from insurance companies, from health techs, and from the giant Jazz, the telco giant, जहाँ पे एक बहुत बड़ा customer base है. I'll not waste more time. I'll move to my fellow panelists. एक थोड़ी सी housekeeping. Let's keep the answers brief क्योंकि वैसे ही हमारा panel थोड़ा छोटा हो गया है because of the timing issues. But क्योंकि primarily Insurtech conference है, so starting from the insurers. So Ali, my first question would be to you. We have heard IGI Life ने अपने आप को brand कर दिया है IGI Life Vitality. क्या है ये Vitality? मैंने सुना है ये एक wellness brand है और मैंने सुना है कि जो है ना वो आप लोग healthy living को encourage कर रहे होते हैं. In Pakistan, do you think that this concept has matured, and do you think कि जो है ना वो people are buying this concept? So I think for the benefit of everybody, I'll just brief what vitality really is. So वो जिस तरह नीलोफर अपनी I think opening remarks में बता रही थी how people are getting engaged and living a healthy lifestyle. Today, this concept actually came by in the early 90s by a gentleman called Adrian Gore in South Africa. और वो हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में थे एंड हिज डायलेमा ऑलवेज वाज कि हर साल एक कॉन्वर्सेशन करनी पड़ती है क्लाइंट से कि आपके जो फॉर एग्जांपल अगर क्लेम्स 1000 रुपीज़ के हैं तो वो अब 1100 के हो गए हैं ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मेडिकल इन्फ्लेशन है और लोगों की एज बढ़ गई है. सो ही स्टार्टेड टू थिंक व्हाट कैन आई डू और व्हाट कैन वी डू कि ये क्लेम्स या 1000 के हो जाएं या 900 के हो जाएं. सो जो कोर फंडामेंटल है कि वो जो मेडिकल क्लेम कहाँ से स्टेम करते हैं इज़ व्हेन पीपल गेट सिक. सो ही थॉट दैट व्हाट इफ नॉट इनफ पीपल गेट सिक. तो वन ऑफ द की रीजंस वुड बी कि अगर लोग अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो कम बीमार होंगे. सो बीइंग एन एक्चुअली ही डिड सम एनालिसिस एंड ही सेड कि अगर लोग अपना हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारेंगे तो क्लेम्स 1000 के नहीं आएंगे 900 के आएंगे. मगर उसको अगेन ये डिलेमा था कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताने से कि आप हेल्दी रहें, लोग हेल्दी नहीं रहेंगे. सो यूल हैव टू पुट समथिंग ऑन द टेबल. और उसने कहा कि बिकॉज आई विल स्टिल सेव 100, व्हाई डोंट आई गिव 80 बैक एज एन इंसेंटिव टू देम एंड स्टिल सेव 20 मोर एंड आई विल हैव अ वेरी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट प्लस आई विल हैव अ हेल्दी कस्टमर बेस. और अगले साल जब मैं कॉन्वर्सेशन करने जाऊंगा क्लाइंट से तो फिर मुझे उनको 1100 नहीं बताने पड़ेंगे. आई विल स्टिल बी एट 1000. सो आई थिंक दैट्स हाउ वाइटैलिटी एक्चुअली केम अबाउट एंड दैट इज़ रियली what we are doing here in Pakistan. And I think that's what Packages Group has always done, ke whatever is being happening globally, jab se ye company acquire hui thi, I think that question always remained, us being very small compared to, the likes of EFU Life and Jubilee, we were getting marginalized everywhere that we went. So what can we do different? And I think in just for that search, the group came about finding discovery. Pakistan mein, I think your question was ke is the market mature? I think ke इंश्योरेंस के केस में और हमारे केस में ये वेलनेस के एक ही बात है कि एज लॉन्ग एज जब लोगों के अक्रॉस आप पहुंच जाते हैं और अपना मैसेज पहुंचा देते हैं, आई थिंक पीपल I think in general tend to take rational decisions. So once you're able to tell them and communicate to them in clear terms what is in it for them, either on the health side or financial side, people buy into it. And that's why, we've seen that jab se ye concept aaya tha, it took us some time to really take off, but, we're going quite rapidly by the grace of Allah. So, and we feel that, हमें क्या उसको कहते हैं कि EFU Life is doing something, Jubilee is already doing something. So I think that space now, that concept is now going to get to more people, and I think that awareness will start coming gradually. और फिर वो market अभी mature तो as such नहीं हुई है, not even close. I think insurance की नहीं हुई है, तो wellness तो I think is going to start later. But there is a lot of room for people to, for us to convince them and get engaged with the programs.
Thank you, Ali. Moving on to next Ali from Adamji Life. So Ali, we heard Dr. Sara mentioning about you and the company using HealthTech. So do you think that it is increasing customer satisfaction for you? And how are you as an insurance company and specifically your customers benefiting from it? Thank you, Nilofer. Let me try to build up a case and then we can see how we can connect the gap between the insurers and these insurtechs. You talked about the customer services. Interestingly, customer service आती किधर से? Customer service naturally वहाँ से आती है when the entities who are into business, they are making money, वो जब खुशहाली वहाँ पे होती है. The case I'm trying to build is, I was into health, corporate health for all my life. The dilemma is, मेरे ख्याल से 20 billions या 21 billions की health insurance market है. I won't talk about that retail health या वो embedded products की मैं बात नहीं कर रहा, but pure जो corporate insurance की market है, that is around 20 billion. उस 20 billion की जो market है, उसके loss ratios they are standing at 90 or 95%. शायद एक दो companies maintain करती हैं कोई 85-90% loss ratios और mostly companies जो हैं उनके loss ratios they are touching their 100%. Now you tell me in that situation जहाँ खुशहाली का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है within insurance companies, तो जितने दिन मैंने health insurance में काम किया बोर्ड से हमेशा मुझे गालियाँ सुनने को मिली हैं कि भाई ये पैसा कब बनेगा इसमें. And that is अच्छा ये होता कैसे? Let me try to explain that. Out of that roughly मैं अगर बताऊँ out of that 20 billion की market में कोई utilization अगर आप अंदाज़ा करें 90% की यूटिलाइजेशन है तो आउट ऑफ दैट 20 बिलियन 18-19 बिलियन जो है वो स्ट्रेट आपके हॉस्पिटल्स ले जाते हैं. द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ दैट जब पेशेंट हॉस्पिटल जाता है तो नेचुरली या तो वो इलेक्टिव ट्रीटमेंट लेता है जो पहले से प्लान होता है या वो इमरजेंसी में जाता है. इन ट्रेडिशनल पाकिस्तानी मार्केट जिस मार्केट में हम रह रहे हैं आप KLI के 2-3 टॉप के हॉस्पिटल्स अगर हटा दें तो ट्रेडिशनली पाकिस्तानी मार्केट में जो पेशेंट हॉस्पिटल जाता है एमरजेंसी में और उसका कन्वर्जन फ्रॉम एमरजेंसी टू द एडमिशन दैट इज़ अबाउट 50 to 55%. 100 पेशेंट जो है हॉस्पिटल में एडमिशन एमरजेंसी में जाते हैं उनमें से 55 से 60% पेशेंट वो होते हैं जो एमरजेंसी से एडमिट हो जाते हैं. दुनिया भर में आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कैपिटलिस्ट मार्केट US की मैं बात नहीं करूँगा बट कनाडा की या UK की सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ ये रेशो है कोई 20 से 25% का. तो ये दिस इज़ द गैप, दिस इज़ सॉर्ट ऑफ अ गैप विच वी हैव टू कवर. एंड देन अगेन व्हाट आई सी एज दीज इंश्योरटेक्स एंड दीज कंपनीज जो इस जगह पे काम कर रहे हैं हाउ दे कैन कवर दैट अब्यूज़. ये जो अब्यूज़ हो रहा है इंडस्ट्री में we cannot blame the network hospitals. ये उनका काम है, ये network hospital का काम है, they are there to make money. This is us, the insurance companies, the ecosystem जिसका हम सब part हैं. Maybe we can see the regulators role इसमें क्या हो सकता है. And then again the insurers, how can they hook, जो डॉक्टर सारा भी कह रही थी, they can hook their system with these telemedicine companies. Yeah, that's one aspect that we can use them on outpatient products. वो अभी हम बात करेंगे आगे जाके. But primarily the pain is that at the moment the insurance companies is suffering from the huge loss ratios. जब तक वो loss ratios नीचे नहीं आएंगे, the insurance companies won't have the breathing space to offer the innovative and lucrative and adventurous product. Again, that is my take on these insurtechs and these startups. We should using them into that pure ecosystem to reduce the utilization cost. Interestingly, मैं आपको बताऊँ पिछले एक साल की अगर मैं आपको बात बताऊँ how it happens. अगर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो पिछले एक साल में जो उनकी हॉस्पिटलाइजेशन हुई हैं उनमें से कुछ नहीं तो कोई 10 से 15-20% जो थी वो सिर्फ डेंगी के उनका डायग्नोसिस डेंगी होगा. इंटरेस्टिंगली डेंगी में 90% केसेस में पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं होती. डेंगी के पेशेंट का हॉस्पिटल में कोई इलाज नहीं होता सिवाय इसके कि उसको हॉस्पिटल में पैनाडोल दी जाती है एंड दैट्स इट. ये दिस इज़ जस्ट अब्यूज़, छोटा सा अब्यूज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ. यही कोविड के सारे ज़माने में भी हुआ था. जो कोविड में हॉस्पिटल जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स दे टर्न आउट इनटू बी अ मैसिव कॉम्प्लेक्सेस, उसमें मेजॉरिटी उसका रीज़न ही ये था कि
जो अनड्यू हॉस्पिटलाइजेशंस होती हैं, दैट्स बिल्ट अप ऑन द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज एंड वी हैव टू मैनेज दैट कॉस्ट. अदरवाइज़ ये कॉस्ट अगर मैनेज नहीं की तो जितने भी हम इनोवेटिव और एडवेंचरस आइडियाज़ देख रहे हैं, हमें उसमें से कुछ नहीं मिलना. दिस इज़ माई टेक. थैंक यू अली. आई विल मूव ऑन टू आसिम नाउ. सो आसिम, पहले तो थैंक यू, आपने पिछले पैनल में एक अच्छा बैकग्राउंड और एक अच्छा सीन सेट किया था. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ऑल टू नो वेबडॉक की जर्नी. यू स्टार्टेड एज अ हेल्थ टेक एंटरप्रेन्योर और आपने बहुत अर्ली अपने प्रोडक्ट्स में इंश्योरेंस को बिल्ट इन कर दिया था. So we want to hear the experience, and now we know that you are also moving into a digital non-life direction. So obviously there would be some motivation जिसके behind आपने ये step लिया. So if you can let us know that why did you took this decision and how was your journey throughout? Thank you very much. First of all, पहले मैंने कोशिश की उधर बैठ के मैं actually answer दे सकता हूँ. So WebDoc ने जब start किया था, the whole idea was that because I used to work at Easy Paisa at that time, and then I understand बहुत सी rural population को health की services नहीं मिल रही थी. So I thought this is the right time to start providing health services to the rural areas, hiring doctors, and I'm not a doctor, so hiring the doctors in the company and then connecting those people on a very small price so they can actually have an access and affordability. So access and affordability के लिए जब हमने rural population को connect किया with the doctors, and they were all in-house doctors, we realized very soon that, you know, when doctor says कि आप जाके MRI करवा लें या कोई, you know, admit हो जाएं, आपको फलां problem है, then those people who were actually not affording that amount, 1, 2, 4 रुपए, then it was hard for them to actually get to the hospital now. So this is where we thought, hold on, with the doctor's advice, now they need some sort of insurance to actually go to the hospital and cover this. And this is, I think this is where WebDoc actually became, alhamdulillah, successful. कि जितने भी लोगों को today, alhamdulillah, we have got over 40 million customers. That's a huge number of customers we are actually serving now. So half of them, well, if not all, at some point in the year actually get our health insurance from one of our partners, right? So हमने लोगों को rural areas में ना सिर्फ के health care doctors provide करने शुरू किए, so they can have telemedicine services, but also then we took the next step that अब इन लोगों को अगर कहा जाएगा कि आपने जाके doctors अब कहीं दाखिल होना है, किसी हॉस्पिटल में जाना है, कुछ इलाज करवाना है, ऑपरेशन कराना है, तो एक्चुअली हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाए ताकि वो कर सकें. दिस मॉडल बिकम्स वेरी सक्सेसफुल. और उसकी वजह से देन वी वेंट इनटू वेटरनरी वेट डॉक्टर्स एंड देन लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस एंड देन एग्री एक्सपर्ट्स एंड देन क्रॉप इंश्योरेंस. बट इनफैक्ट हबीब साकिब साहब बैठे हैं, ए बी बैठे हैं यहाँ पे. They were actually the guys who actually understood very quickly in telcos कि इन products की क्यों ज़रूरत है. So I think that push from these guys, setting the corporate, इन्होंने हमें ये मौका दिया, and then we actually, you know, reached out to these millions of customers, and this is how health insurance became a very popular product for WebDoc. Thank you, Asim. That was very useful. My question would be to you, Dr. Rifat. So I think scene set तो काफ़ी अच्छा हमारा हो गया है. We know what सेहत कहानी is doing. But from you, I want to specifically ask कि आप लोग जो ये काम कर रहे हैं, how do you manage the cost side of it? आप कैसे इस मॉडल को cost effective बना रहे हैं for the end users? One part is your corporate side that you are going through corporates. मगर retail side पे how do you see it and how are you reaching out to the retail and how are you making it cost effective for them? First of all, thank you so much for inviting me. I think it's exciting to see that health, particularly digital health and insurance, are now seeing the synergies, and events like these are happening where the true value of collaboration between Insurtech, digital health, all of that is taking place. I think आपका बड़ा अच्छा सवाल है, इसलिए कि cost एक बड़ा अहम मसला है. Particularly, I think in the last 1.5 years, cost has been a major challenge that we all have seen. जो हमारा corporate product है, वहाँ तो बड़ा आसान है क्योंकि employer and employer या उनका insurer, that party becomes the payer on behalf of the employees and their families. So people get access to, for example, a certain number or unlimited number of consultations, in our case actually, for themselves and their families, जिसमें वो खुद अपनी पॉकेट से एक्सपेंस नहीं बेयर कर रहे होते और उन्हें उनका एम्प्लॉयर या इंश्योरर पे कर रहा होता है. वो क्यों पे कर रहा होता है? बिल्कुल जैसे अली ने बात की कि कॉस्ट एक बड़ा एक अहम मसला है, स्पेशली जो लॉस रेशो होता है इंश्योरेंस कंपनीज़ को. सो द कंपनीज दैट वी वर्क विद हैव
आइडेंटिफाइड कि अगर लोगों को डॉक्टर वक्त पर मिल जाए टू अ पॉइंट कि उन्हें अस्पताल जाना ही ना पड़े, तो बहुत चांसेस हैं कि ओवर द ईयर्स ये लॉस रेशियो कम होगा. And there have been studies, UNDP की एक study है that they did in around 7 African countries where they studied insurance models जहाँ पे वो telemedicine के साथ couple हुए हुए हैं. And what they saw over a period of 3 years was that there was a 47% reduction in hospital admissions for those companies which were taking digital health. तो I think ना सिर्फ इसमें ये एलिमेंट होता है कि लोगों को वक्त पे डॉक्टर मिल गया, बट आई थिंक कांस्टेंट आपके पास जब एक डॉक्टर का एक्सेस होता है तो वो एक फियर फैक्टर भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है कि अच्छा ओके, फॉर एग्जांपल डेंगू की अगर हम बात करें, इफ़ आई एम सफरिंग फ्रॉम डेंगू, लोग अक्सर फियर में एडमिट होते हैं कि रात को अगर मुझे ज़रूरत पड़ी किसी डॉक्टर से बात करने की तो क्या होगा. और अगर आपके पास आपके फ़ोन में ही डॉक्टर अवेलेबल है तो दैट फियर फैक्टर अल्टीमेटली स्टार्ट्स टू रिड्यूस. और हम इसमें बहुत एक्टिवली इस तरह से काम करते हैं जो हमने कोविड में भी किया, या अभी भी बहुत सारे क्रिटिकल पेशेंट्स को हम इस तरह से मैनेज कर रहे होते हैं, क्योंकि वेस्ट दुनिया भर में हॉस्पिटल से होम हेल्थ केयर की तरफ लोगों को लेकर आ रहा है कि बहुत सारे पेशेंट्स, क्यों हम हॉस्पिटल में हॉस्पिटल की कॉस्ट बढ़ाएं फॉर एक्सटेंडिंग एडमिशन, हम उन्हें घर लेकर आएँ, उन्हें घर पे मैनेज करें. And that's what we have done during COVID, and that's what we do even now through a 24/7 customer support helpline, ensuring कि हर patient अगर वो critical है तो उसे हम certain timelines पे follow up कर सकें, just so that we know कि patient is doing well, and if they need hospital admission उन्हें उस वक्त वहाँ पे refer कर दिया जाए ताकि patient stable रहे अपने घर की हुदूद में. Retail की जब बात आती है तो retail एक बड़ा interesting product है, चैलेंजिंग है पाकिस्तान में, बट अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान हैज़ अ ह्यूज पॉपुलेशन. देयर आर पीपल हु आर विलिंग टू पे फॉर दिस सर्विस फॉर देमसेल्व्स, देयर फैमिलीज़, और ऑल्सो फॉर अदर पीपल. फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों में डोमेस्टिक हेल्प होती है. सिमिलरली हमने कुछ सब्सक्रिप्शन पैकेजेस निकाले हैं जिसमें आप एक सब्सक्रिप्शन पैकेज लेंगे तो उसमें आप एक्सेस कर सकते हैं 2-3 डिफरेंट तरह की सर्विसेज, जनरल फिजिशियन, सर्टन स्पेशलिटीज़, वेलबींग के साथ हम इसे टाई कर रहे हैं. सो वी हैव पार्टनर्ड विद 2 or 3 लीडिंग फिटनेस सेंटर्स, ट्राइफिट इज़ वन ऑफ दैम, कि अगर आप एक सर्विस को एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आप अपनी वेलबींग के लिए आ रहे हैं तो यू ऑल्सो गेट एक्सेस टू अ डॉक्टर थ्रू दैट ऑनलाइन मीडियम. सो आई थिंक रिटेल में हम समझते हैं कि लोगों को पेबिलिटी चैलेंजेस हैं, या अभी भी एक फियर है कि अच्छा मैं डिजिटल पेमेंट करूँगा या करूँगी, बट देर आर ऑल्टरनेट वेज टू रीच आउट टू दैट रिटेल कंज्यूमर. फिटनेस चेन्स की मैंने बात की, सब्सक्रिप्शन पैकेजेस की मैंने बात की, मेंटल वेलबींग, गाइनी से रिलेटेड पैकेजेस, ये वो सारे पैकेजेस हैं जो लोग बहुत रेडीली ले रहे होते हैं क्योंकि वो अंडरस्टैंड करते हैं इसकी वैल्यू. एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमने टेलेनॉर के साथ एक्सप्लोर की कि लोग जब अपना कार्ड, प्रीपेड कार्ड अपना सेलुलर नेटवर्क का अपलोड करते हैं तो वाई कांट दे यूज़ दैट क्रेडिट टू ऑल्सो बाय प्रोडक्ट फॉर हेल्थ केयर. एंड आई थिंक दैट वर्क रियली वेल कि उसमें आप थ्रू योर ओन जो भी आपका क्रेडिट है, 100 रुपये के कार्ड, 200, 300, विद इन दैट रेंज आप सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं. एंड आई थिंक द लास्ट थिंग दैट वी हैव रिसेंटली एडेड इज़ एन ऑनलाइन फार्मेसी. हम इसकी स्मार्ट आउटलेट्स, एक आउटलेट हम कराची में बना चुके हैं, और इसकी रिटेल, द फार्मेसी वर्टिकल प्राइमरीली हैज़ स्टार्टेड एज अ प्रोडक्ट फॉर द कॉर्पोरेट्स, बट वी आर नाउ एक्सटेंडिंग इट टू द रिटेल ऑल्सो. सो वॉक-इन्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, एंड आई थिंक इन द नेक्स्ट 3 weeks आप अपने ऐप से, सेहत कहानी ऐप से फार्मेसी भी ऑर्डर कर सकते हैं. सो ट्राइंग डिफरेंट मीन्स के किस तरह लोगों को रीच आउट कर सकते हैं. थैंक यू डॉक्टर रिफत. आई थिंक यही है कि हमें बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए और करती रहनी चाहिए. सब नहीं सक्सेसफुल होंगी. 10 काम करेंगे तो शायद 2 वर्क करेंगे, बट वो जो 2 वर्क करेंगे वो शायद इम्पैक्ट और स्केल दोनों ही लेकर आएंगे. सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी टू मिस्टर अबू बकर. द रीज़न फॉर कमिंग टू यू लास्ट वॉज कि सारी तरफ से लोग आपको देख रहे हैं, द हेल्थ टेक प्रोवाइडर्स एंड द इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स, एंड वी हैव स्ट्रैटेजिकली मेड यू सीटेड देयर. जोक्स. द रीज़न इज़ कि आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है. यू आर लुकिंग आफ्टर 75 million कस्टमर्स. तो आपको कैसे लगता है कि हेल्थ टेक एंड इंश्योरटेक इज़ अ, आपको लगता है या नहीं लगता है कि इट इज़ अ वैल्यू एडिशन फॉर देम, एंड व्हाट कैन वी डू टू सर्व योर कस्टमर्स? Thank you, Neelofer. Assalamu alaikum, everyone. So very quickly, just before I get to this specifically, again, insurance industry
is doing a lot of amazing work, and then for it to grow, I say this across sectors, it's not really linked कि आप किस industry में हैं. तो पहले तो हर organization में, चाहे telco है, चाहे insurance company है, चाहे digital aggregator है, चाहे startup है, you need the right tone at the top, right? So I don't believe that organizations, unfortunately, are driven by processes. I truly believe that organizations are driven by people. And you need the people at the top जो कि चाहते हैं कि bureaucracy को break down किया जाए, जो चाहते हैं कि innovation for the purpose of impact लाया जाए, results on the ground लाए जाएं. अच्छा ये आसान नहीं होता, because देखें अगर किसी insurance company को भी digitize करना है तो ज़्यादातर challenges ना internal होते हैं. छोड़ दें customers को अभी 2 मिनट के लिए छोड़ दें, ज़्यादातर मसाइल जो होंगे वो internal होंगे. आपकी systems को कैसे change करेंगे, आप लोगों को कैसे on board लेके जाएंगे, आपके पास talents वो मौजूद है या नहीं है, आप क्या करेंगे. आप कोई अगर से digital native नहीं है तो आप उन मैडम या साहब को क्या कहेंगे, सर शुक्रिया आपकी 20 साल की सर्विस का. It's not easy. Organizations are living organisms, so I think ये एक ज़रूरी है. दूसरी चीज़ related to telcos, देखिए telcos, I was in another telco a few years ago जहाँ आसिम से भी interaction हुआ, डॉक्टर फिर के साथ अभी मोबलिंग बैंक में interaction हुआ था. Telcos are a big distribution partner. A lot of the startups and insurance companies that want to reach masses of Pakistan, उनको अपना distribution channel network ज़रूर खड़ा करना चाहिए. But at the same time, अगर आपके पास 75 million customers या 40 million customers या 30 million customers का access मौजूद है, it could take you 10-15 years to do this on your own. तो उस distribution की strategy जो है वो बड़ी important होती है. अच्छा वो भी पार्टनरशिप आसान नहीं है. देखिए बहुत सी पार्टनरशिप्स होती हैं नीलूफर, यू नो दिस, यू नो वी ऑल डू. मैं खुद इसका बड़ा गिल्टी रहा हूँ कि बहुत सी पार्टनरशिप्स में हम MOU साइन करते हैं, तस्वीर खिंचाते हैं, एंड यू नो इट प्रीटी मच स्टेज दैट. तो कौन सी इतनी पार्टनरशिप्स हैं जो एक्चुअली स्केल करती हैं. उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है लाइक ए टेलको, वो असेस करे कि किस पार्टनर के साथ काम करना है, किसके साथ नहीं करना, किसके साथ तस्वीर खिंचवानी है, वो क्या अलग चीज़ है. And at the same time, it applies for insurance companies and InsurTech companies as well. Because rather than going with 15 partners, I actually believe that insurance companies, telcos, InsurTech companies need to choose 2, 3, 4 partners जो लगता है जो strategically aligned है उनकी vision के साथ. क्योंकि फिर अगर हर जगह आपने जाके वो कोशिश करना है तो then it's spray and pray. So I think the telco, from a Jazz perspective, we worked with multiple insurance companies, we worked with insurance aggregators as well to scale. और पाकिस्तान market है, frankly, B2C market की बात कर रहा हूँ, micro pricing की. आसिम इसके champion है. मुझे याद है जब टेलीनॉर में launch किया था इन्हें, तो micro pricing was a unique concept. मतलब अगर आप, and I think इंशाल्लाह, you know, पाकिस्तान में utility services should also go to micro pricing. वाई आपको महीने के एंड में गैस का बिजली का बिल क्यों आना चाहिए? आप एक दिन की गैस या बिजली क्यों नहीं खरीद सकते? पे एज यू गो मॉडल सिर्फ लेंडिंग पे हमने अप्लाई करना है क्या? अगर किसी गरीब के पास एक दिन के पैसे हैं सर्दियों में गैस लेने के लिए, तो एक दिन की आप चार्जिंग क्यों नहीं कर सकते? सो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपको अगर इनेबल हो तो देन यू नीड टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर नीड्स, एंड देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हु आर द राइट पार्टनर्स जिनके साथ आप अलाइन करके स्केल कर सकते हैं. देखिए ये कस्टमर ट्रस्ट और अवेयरनेस जो है ना वो आएगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव जहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ फैलता है, एंड आई फाइंड दैट सिग्निफिकेंट रूरल कम्युनिटीज. टू समराइज माई पॉइंट, देखिए एक टेलको, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरटेक कंपनीज, टोन एट द टॉप इज की. इफ वी हैव पीपल हु आर नॉट गोइंग टू बी विलिंग टू लिसन टू व्हाट द यूथ सेज और न्यू कमर्स आर सेइंग, देन वी आर गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम. देन 5-10 साल बाद भी ना हम लेस देन 1% पेनिट्रेशन में रहेंगे, जिस पे शायद हमें उस वक्त शर्मिंदगी होनी चाहिए. लेकिन हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए ना, फिर तो हमें नीलूफर शर्मिंदगी होनी चाहिए ना. अगर नहीं है शर्मिंदगी उस वक्त हमें, तो फिर कुछ हमें देखना पड़ेगा कि यार ये प्रॉब्लम होगी. जो इनोवेशन की बात है ना, वो यू लुक एट इनोवेशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव जो आपकी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करता है. मिसाल के तौर पे हो सकता है कि एक स्ट्रैटेजी हो कि जी लॉस रेशो कम करना है. So then just look for partners that can help you reduce loss ratios by identifying the right customer segment, by identifying a different pricing model, by identifying a cheaper way to the market. तो आप उस strategy के लिए partner ढूंढे, बाकी strategy के लिए partners ना ढूंढे. And जहाँ तक telcos की बात है या Jazz की बात है, I think we have been a distributor for aggregators and insurance companies. But now I am very happy to say that we are also exploring more deeper interventions. We are exploring to see where we can play a bigger role in the InsurTech market as well.
थैंक यू, वेरी वैलिड पॉइंट. इससे मुझे एक एग्जांपल याद आ गया, वेरी फनी टू कोट. अब तो बहुत साल हो गए, बट व्हेन वी वर डूइंग दिस फर्स्ट प्रोडक्ट जो हम माइक्रो के लिए कर रहे थे, bringing the average ticket of 50,000 down to 5 rupees a day, I think as I recall it correctly. तो internally ये एक बहुत in a very joking way, nothing serious, but यही comment आया था, आप कहाँ से कहाँ ले जा रही हैं कंपनी को. So yeah, it is important. Internal mindset change is important. और वो शायद आपकी digital journey को आसान बनाता है और आपको दूर तक लेकर जाता है, और वही easy करता है for your external customers as well. So thank you. That was a very encouraging first round of comments from each and every one of you. Second round हमें शायद time shortage की वजह से छोटा रखना पड़ेगा. So let's, मैं भी question कोशिश करूँगी बिल्कुल to the point पूछूँ, and it will be appreciated if we get the same answers. So again, so we have 5 minutes. So 1 minute answer each is what we can distribute to. So second question मैं आप ही से शुरू करूँगी अबू बकर. So what do you think कि हमारा जो है ना वो, क्योंकि आप लोगों के पास जितना डेटा और जितना एक्सपीरियंस है, किस तरह से 2 points, किस तरह से इंश्योरटेक्स और हेल्थटेक उससे फ़ायदा उठा सकती हैं? कस्टमर सेगमेंटेशन, प्रोडक्ट बनाने से पहले कस्टमर की नीड्स अंडरस्टैंड करें, डेटा को लेवरेज करके कस्टमर के पास जाएं. ये बहुत बात की जाती है, लेकिन मैं बताऊँ ये बड़ा मुश्किल काम है. और वेरी क्विकली अगर कस्टमर से, मैं SCCP के हमारे एडवाइज़र बैठे, मैं अगर जाके कहूँ, आई आस्क अ बायस क्वेश्चन, तो कहूँगा आप हमारी सर्विसेज से मुतमईन है ना, मुतमईन है ना, वो कहेंगे जी हाँ. तो कस्टमर रिसर्च में जो बायस है ना, उसको आप एलिमिनेट करें और डेटा को यूज़ करें फॉर कस्टमर सेगमेंटेशन. कस्टमर सेगमेंटेशन के बाद प्रोडक्ट बनाएं, ना कि प्रोडक्ट बनाएं और कहें यार कस्टमर को फिट करते हैं इसको. दैट वुड बी माई सजेशन. एंड टेलको सेट ऑन अ वेल्थ ऑफ डेटा. ठीक है, रेगुलेशंस उसमें आते हैं कि आप क्या शेयर कर सकते हैं, क्या शेयर नहीं कर सकते, बट देन देयर आर वेज जिसमें आप म्यूचुअली इसको अडॉप्ट कर सकते हैं. थैंक यू. सेकंड क्वेश्चन टू अली नदीम. अली, आप यू आर रिवॉर्डिंग कस्टमर्स फॉर गुड बिहेवियर बेस्ड ऑन देयर हाउ दे कीप देयर लाइफस्टाइल. आई एम श्योर ये एक एक्सपेंसिव काम है. सो डू यू थिंक इट इज़ सस्टेनेबल? और जहाँ पे हमें लगता है पाकिस्तान में जो है हर तरीके हैं to take out things that do not exist. So what's your take on it? So I think जब हमने launch किया था तो there was a time we were actually out of money जितना हम charge कर रहे थे versus what we were paying. I think we were losing about $1 million a month. But I think that's what it is. जब आप चीज़ों को launch करते हैं, but then we learned a lot along the way कि कैसे लोग हमारे system को जो उसके loopholes हैं वो क्या हैं. हमने भी कुछ South Africans को सिखाया कि आप अपना सिस्टम कैसे बेहतर करें. So anyways, but we came through that, and now I think everything is aligned, and these are learnings. वो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि make a decision, move forward, and you learn along the way, and that's what we've done. I think now we have enough teams, controls. There's so much data with Vitality that we get to benefit from that. So I definitely think it's sustainable. हमें कोई as such, I don't see any issues as long as you have the right controls in place. I think it's okay to go. Great, thank you. My next question to Mr. Ali Haider. आपने अभी बहुत mention किया about the corporate. So I wanted to understand कि as a next step, are you thinking to bring this health tech या wellness वाला segment to your retail customers, or what two things mainly you think are important for any insurance company to do that? In my view, retail के लिए health में अगर कुछ भी हमने offer करना है और उसमें outpatient ना हो, तो that won't make any difference. Without outpatient retail market attract नहीं हो सकती. जो penetration level है insurance का, जो awareness है, जो understanding है हमारी market की, जनरली हम इंश्योरेंस लेते हैं और फिर देखते रहते हैं कि हमने प्रीमियम कितना दिया है और वो हमारी गाड़ी ने उतना क्लेम लिया है कि नहीं लिया, कि वो कवर हुआ है कि नहीं हुआ. दैट्स द जनरल माइंडसेट. तो अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिटेल मार्केट खुद से इंश्योरेंस लेगी, एम्बेडेड प्रोडक्ट्स नहीं होंगी, वो खुद से इंश्योरेंस लेगी, और वो इंश्योरेंस लेगी जिसमें इंसिडेंट रेट 1% है, 100 में से एक आदमी क्लेम ले रहा है, तो ये इंश्योरेंस नहीं चल सकती. तो फॉर दैट वी नीड टू हैव the outpatient for that inpatient, for that insurance penetration. But outpatient, जो traditional outpatient है, that works, that won't work. Whatever works, that's only come through these insurtechs. चाहे वो webdoc हो, चाहे वो सेहत कहानी हो, चाहे वो
हेलो डॉक्टर हो, बट अगेन दैट इज़ द solution. एक और interesting, not linked with the digital, but again the regulators are here. So that is one challenge which I would like to share, the challenge for the insurance company. And again, when we are talking about the retail market, तो इसकी example मैं कैसे दूँ? मैं इसकी example चले इसकी example ये है कि रमज़ानों में केले क्या हिसाब मिलते थे हमें? 400 रुपये दर्जन मिलते थे मेरे ख्याल से हमें ठेलों पे. वो एक्चुअली केला जहाँ से निकल रहा था वो क्या था, वो 40 रुपये दर्जन शायद निकल रहा था, जो DHA में शायद 400 रुपये दर्जन बिक रहा था. तो इंश्योरेंस जो है ना, जो इंश्योरेंस मार्केट की जो प्रोडक्ट है वो 40 रुपये की है, ठीक है, जो कस्टमर को मिलती है वो 400 रुपये की मिलती है. नाउ दैट डिस्कनेक्ट हैज़ टू बी आइडेंटिफाइड, दैट डिस्कनेक्ट हैज़ टू बी आइडेंटिफाइड कि वो क्या उसको रेगुलेट करना है, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का क्या रोल होना चाहिए. और लेट मी बी वेरी क्लियर, देखें, हेल्थ इंश्योरेंस एंड सेविंग्स लाइफ इंश्योरेंस आर टू डिफरेंट थिंग. 20 साल की लाइफ इंश्योरेंस और 1 साल की हेल्थ इंश्योरेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. जिन डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ हम बात करते हैं, वी ऑलवेज स्ट्रगल, क्योंकि उनके जहन में जब कॉम्पनसेशंस आती हैं तो दे ऑलवेज लिंक द कॉम्पनसेशन विद लॉन्ग टर्म लाइफ इंश्योरेंस. हम हेल्थ इंश्योरेंस दे के 30% 40% की कॉम्पनसेशन इंसेंटिव्स नहीं केटर कर सकते. अगर वो केटर करेंगे तो फिर वो प्रोडक्ट की शक्ल, आप सुराख से हाथी घुसा के अगले एंड से फिर हिरन ही निकालेंगे, फिर उसकी शक्ल बिल्कुल बदल चुकी हुई होगी. तो दैट नीड्स टू बी अंडरस्टैंड. इसमें रेगुलेटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ वो कोई डायरेक्शन दे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी, क्योंकि वेन एवर वी गो टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स के इंटरेस्ट की बात होती है. वो कहते हैं हमें हर चीज़ बैंका के पैकेज पे चाहिए, वी नीड टू रन थ्रू एवरीथिंग थ्रू द बैंका की कमीशंस तो 30% है, 40% है, तो हेल्थ की प्रोडक्ट वहाँ डेड हो जाती है, हेल्थ की प्रोडक्ट वहाँ चल ही नहीं सकती. एंड अगेन टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइफ इंश्योरेंस के कॉम्पनसेशन ने हम सबको, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, निकम्मा कर दिया है. क्योंकि जब वो कॉम्पनसेशंस इतनी आपको मिल रही होती हैं तो इनोवेशंस और प्रोडक्ट डेवलपमेंट बहुत बड़ा चैलेंज बन जाती है. तो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू अली. लास्ट क्वेश्चन क्विकली टू आसिम एंड डॉक्टर रिफत. हमने 2 साइड्स देखी हैं इंडस्ट्री की, एक जहां लॉस रेशियोज बहुत हैं, एक जहां पे हम जनरली लॉस रेशियोज आर फाइन, बल्कि कभी कभी हम तो अवेयरनेस और यूटिलाइजेशन बढ़ाने की बात कर रहे होते हैं. वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन, आप लोग इन टर्म्स ऑफ यूटिलाइजेशन रेट कितना है? आई अंडरस्टैंड लो होगा, बट क्या ग्रोथ देखी है आपने और आप लोग क्या काम कर रहे हैं उस यूटिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए? 2 points फ्रॉम ईच प्लीज. थैंक यू. So I think it's very interesting that we have been working with corporate partners since the last 2.5 years. हम जब कोविड एंड हुआ तो हमें लगा कि लोग या ऑर्गेनाइजेशन रिन्यू नहीं करेंगे, but that has not been the case. It's 3 years in the round and every organization that we worked with has renewed their contract with us. तो एक तो ये बड़ी एक positive चीज़ मुझे लगती है. इसमें से right now we are working with around 720 corporates. हम जाते हैं, हमारा राउट यूजुअली होता है कि हम इंश्योरेंस कंपनी से पार्टनर करते हैं एंड देन दे गिव अस एक्सेस टू देयर कॉर्पोरेशंस. तो इस वक्त 720 कॉर्पोरेट्स ऐसी हैं जिनके पास सेहत कहानी सर्विस का एक्सेस है. इंटरेस्टिंगली जिस शख्स ने एक दफ़ा ऐप डाउनलोड कर ली उनका यूटिलाइजेशन 70% है. Sometimes we've had individuals who have even done over 9 or 10 consultations in 1 year's period, which for us has been a great number. क्योंकि average international estimates के मुताबिक जब हम देखते हैं तो एक individual usually 3 से 4 consultations लेता है. So in our experience, the people who have downloaded it, the utilization is amazing. Downloads बढ़ाने के लिए we have set up a key account management team. हमारा major काम क्योंकि corporates के साथ है तो हम उसकी अकाउंट मैनेजमेंट टीम के साथ कोशिश करते हैं कि कॉन्स्टेंटली कॉर्पोरेट्स को इंगेज करें, उनके साथ सेशंस करें, रोड शोज़ करें, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दें. फॉर एग्जांपल बल्क डेटा अपलोड करने की. तो अगर 1000 लोगों की कंपनी है, एक बहुत बड़ा अक्सर जो चैलेंज आता है वो ये आता है कि
इतना ज़्यादा डेटा आप अपलोड कैसे करेंगे? सो बल्क डेटा अपलोड करके ऑटोमेटिकली उन 1000 लोगों का अकाउंट खुल जाता है. दैट हैज़ रियली ईज्ड द प्रोसेस कि वो HR को समझ आता है कि ओके दिस इज़ रियली सिंपल, एक दफ़ा हो गया, एवरीवन गेट्स देयर अकाउंट एक्टिवेटेड. इस चीज़ से बहुत हेल्प मिली है. दूसरी चीज़, जहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट का बाय इन है, एंड आई क्यों बैंकिंग सेक्टर के साथ हम बहुत क्लोजली काम करते हैं. सो 2-3 लीडिंग बैंक्स, HBL, मीज़ान, टू नेम अ फ्यू, जहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट ने एक दफ़ा इंडोर्स किया है, वहाँ पे द यूटिलाइजेशन बिकम्स एज सच कि हमें होता है कि अच्छा ओके अब बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो रही है, हम इसको कैसे कर्व कर सकें थोड़ा सा. सो आई थिंक सीनियर मैनेजमेंट का बाय इन जब होता है, पीपल रियली अंडरस्टैंड कि ओके दिस इज़ अ प्रोडक्ट दैट वी शुड टेस्ट आउट. और ग्रोथ माइंडसेट जिन कंपनीज़ का है, जिन्हें ऐसा लगता है जो नई नई इनोवेशंस ट्राई करना चाहते हैं, उन पे हम फोकस करते हैं. सो आई थिंक दैट हैज़ हेल्प्ड. थैंक यू आसिम. सो मैं थोड़ा सा आपको इसको डिफरेंटली आंसर करूँगा बिकॉज वी नॉर्मली वर्क विद द टेलकोज एंड द फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, जहाँ पे कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा है और वो कस्टमर बेस जो है वो हेल्थ के प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा कॉल्स भी करते हैं. सो ऑन एवरेज वेबडॉक डू रिसीव अबाउट 25,000 कॉल्स एवरी डे. दिस इज़ अ बिग नंबर. सो हम उसको डिफरेंट तरीके से हैंडल करते हैं. बट देन एक कस्टमर जो हमें महीने में अप्रॉक्सीमेटली 9 दफ़ा पैसे देता है, इसका मतलब कि 9 दिन वो रेगुलरली अनलिमिटेड सर्विसेज यूज़ कर सकता है. उसमें से एक्चुअली वो 3 दफ़ा सर्विस यूज़ करता है. सो दैट्स अबाउट 30% ऑफ इट. सो अभी वेबडॉक की अगर बात करेंगे 40%, वेल 40 मिलियन कस्टमर्स को हम सर्विस दे रहे हैं आउट ऑफ 190. सो वी ओनली डूइंग 25%. इज़ अ ह्यूज रूम टू ग्रो. वी जस्ट कनेक्टेड विद अली भाई एंड जैज़ रिसेंटली, जिनका बहुत एक मैसिव प्लेटफॉर्म है. वी वर्किंग वेरी स्ट्रांगली इन जोंग एंड हर टेलको के साथ मैंने देखा है, आई एम ट्राइंग टू क्विकली आंसर योर क्वेश्चन. हर टेलको के साथ मैंने देखा है कि कस्टमर के बिहेवियर्स डिफरेंट हैं. सो टेलेनॉर का इनिशियली 1 साल जो था, उस वक्त कस्टमर जो था वो अप्रॉक्सीमेटली 8% कस्टमर हमें कॉल करते थे और अब तकरीबन 33% लोग करते हैं. सो एज कस्टमर ऑल्सो लर्निंग दिस इज़ a viable product for them, not only that this is a real doctor services provided to them. और अब जिस तरह कोविड के बाद बहुत सी चेंजेस भी आ गई लोगों के अंदर, तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज़ कर रहे हैं. एंड इट्स नॉट फार where I can say we can penetrate more into this market, and we want to have this 70-80% of 190 million जो लोग फ़ोन के उनको रीच करने के लिए. So that's my answer on this. Thank you so much, Asim. I think a very interesting discussion. बहुत सारे insightful जो है हमारे पास comments आए. क्विकली समराइज कर देते हैं 3-4 पॉइंट्स के लिए, बिकॉज आई नो कि पीछे नोट्स बन रहे हैं, एक्शनेबल हमें आइटम्स लेकर आगे जाना है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको अगर समराइज कर दें. एक चीज़ जो बहुत क्लियर होकर सामने आई है, द बाय इन हैज़ टू बी फ्रॉम द टॉप. सो वो जब आती है वहाँ से तो वो एक कमिटमेंट का लेवल डिफरेंट होता है. एवरीवन वर्क्स टुवर्ड्स दैट मिशन. कुछ चीज़ें आपको करनी होती हैं एज द नीड ऑफ द आवर, और फिर अपने मॉडल को आप ट्वीक करें, आप उसको अजाइल करें. और वो चीज़ें शायद शुरू में लगेंगी कि अगर आप नहीं करेंगे ना, यू विल नॉट फाइंड आउट. सो यू हैव टू गो इन टू दैट मार्केट, डू इट, और उसके बाद विथ टाइम आप उसको ट्वीक करते रहें. कोलैबोरेशन इज़ अ की. शायद डायरेक्टली एज वी ऑल नो कोई बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत दफ़ा बात हुई, कोई नहीं उठता यहाँ पे टू बाय इंश्योरेंस. सो कोलैबोरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कोलैबोरेट विद पार्टनर्स हु हैव मिलियंस ऑफ कस्टमर्स and who are willing to do it, who take the initiatives and who are willing to do it. And then only by weighing both sides, कुछ आपको उनकी माननी पड़ेगी, कुछ वो आपकी मानेंगे, and एक win-win solution जो है वो create हो जाएगा. डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बट डेटा भी बाद में आता है. पहले वो विल हो, वो विलिंगनेस हो, वो एनर्जी हो to make those changes. Wellness, HealthTech are all very good value additions. इसको यूज़ करके जो इंश्योरेंस की एक इमेज बिल्डिंग है ना, उसको भी बहुत इम्प्रूव किया जा सकता है. So thank you so much everyone for participating and for contributing. Thank you. Thank you so much. We'll have a quick Q&A session. Would you like to be seated? We want our pictures. So chaliye ji, we'll have a quick Q&A session, please. Any questions from the audience? We have. Basically, I have 2 questions, one from Mr. Asim, one from Mr. Abu Bakr. Just a second, because our पीछे तक आवाज नहीं जाती. Ji, I have basically 2 questions, one from Mr. Asim and one from Mr. Abu Bakr. Mr. Asim, to understand the seriousness of this HealthTech, all the project, मुझे ये बताएं कि कितने लोग रिन्यू करवाते हैं आपसे ये HealthTech का जो पैकेज है, वो रिटेल साइड पे हो या डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू हो.
सो फिर मैं अबू बकर से सो इसके ऊपर नंबर्स थोड़े डिफरेंट. फॉर एग्जांपल जो टेलकोस के कस्टमर हैं वो फाइनेंशियल सर्विसेज ईजी के साथ जैज़ कैश से ज़रा डिफरेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड करता है उनकी रिटेंशन रेट किस सॉर्ट ऑफ कस्टमर को आप टारगेट करें. फॉर एग्जांपल हाई आरपू कस्टमर को जब आप टारगेट करते हैं तो उसकी रिटेंशन रेट बहुत अच्छी होती है. सो टेलकोस में दैट इवन गोज टू 30-35%. ऑल्दो जब आप जैज़ कैश और ईजी पैसा में जहाँ पे वॉलेट कस्टमर है और उसके पास एक्चुअली ज़्यादा पैसे होते हैं देने के लिए, वहाँ पे ये परसेंटेज अप टू 60% भी जा सकती है. बट देन आई विल से स्वीट स्पॉट जो है अबाउट 53-54% है विद फाइनेंशियल सर्विसेज, और विद टेलकोज अगर जाएंगे तो एनीवेयर बिटवीन 25 to 33% ये रिटेंशन होती है इनकी कस्टमर्स की. सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बहुत ज़्यादा है. सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्चुअली ज़्यादा होने की वजह से अली भाई का भी इसमें एक कमेंट था कि डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर को पैसे कम लेने चाहिए या शेयर कम लेना चाहिए. उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है. सो एक कस्टमर जो आपको ₹1, ₹2, ₹5 पे कर रहा है, एक्चुअली उसकी एक्विजिशन कॉस्ट कहीं 300-350 रुपये पड़ती है जाके. सो दिस इज़ वन रीज़न कि आपको रिटेंशन ऑफ द कस्टमर्स के ऊपर ज़्यादा काम करना पड़ता है, और अनलेस कि वो 30% क्रॉस करे इट्स नॉट अ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट. तो उसके लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि टारगेट जिसको हम कर रहे हैं कस्टमर को उसका आरपो हाई होना चाहिए और उस कस्टमर की रिटेंशन बेहतर होती है. Thank you. Excellent. Do we have any other question One from the question audience? from Abu Bakr, please. Abu please. Bakr, thank you so much कि आप इसका पार्ट हैं, and I think बहुत सारे लोगों के आपने हैंड होल्डिंग भी की डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज में फॉर अंडरस्टैंडिंग. आपका कमेंट था कि कस्टमर से सेग्रीगेशन की जाए, कस्टमर को अंडरस्टैंड किया जाए, फिर प्रोडक्ट दी जाए, ना कि प्रोडक्ट बनाई जाए और फिर दिया जाए. सो एंड अली साहब की ये बात थी कि डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स कमीशन कम लें एंड देन वो डिस्ट्रीब्यूट. मेरा बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए. यस. सो मेरा ये मानना है कि जैसे एट फिफ्थ पिलर हमने कुछ स्लाइड सी इनोवेशन की अपनी प्रोडक्ट्स के कस्टमर के हार्ट्स को टच करने के लिए, एंड हमारे साथ जो 2 डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स अलाइन हुए वो 30% ऑफ द गिवन कमीशन लेने के लिए राजी हो गए. सो बहुत थोड़े कमीशन के साथ वो हमारे साथ काम करने के राजी हुए. सो एक तो वो बात है. दूसरी बात ये कि इंश्योरेंस कंपनी ऑब्वियसली उस तरह अंडरस्टैंड नहीं करती कस्टमर को जैसे जैज़ कैश अपने कस्टमर्स ये जैज़ अपने कस्टमर्स को करता होगा. सो और आपके पास बिजनेस इंटेलिजेंस के डिपार्टमेंट्स भी ये डिफरेंट सब कुछ होता है. सो आपने इंश्योरेंस कंपनीज को सजेस्ट की डिफरेंट प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर बेस को देखते हुए. सो व्हाट चैलेंजेस यू फेस्ड कि वो प्रोडक्ट्स उस तरह डिज़ाइन नहीं हो पाई या हो पाई, आई डोंट नो अबाउट दैट. तो वो चैलेंजेस क्या हैं जो इंश्योरेंस कंपनीज ताकि वो उस तरह की प्रोडक्ट्स नहीं बना पाते? आई थिंक ये जो टू स्केल दिस थिंग ये कम्युनिकेशन टू वे होना ज़रूरी है. यू नो आई वाज इन बैंकिंग वेरी रिसेंटली, मोबलिंग बैंक एंड रकमी बैंक, एंड मैंने जो देखा है कि इफ़ यू आर एबल टू गिव फीडबैक टू योर पार्टनर, चाहे वो इंश्योरटेक कंपनी है चाहे इंश्योरेंस कंपनी है, एंड दे कैन यू नो अपडेट दैट एंड ऑफर समथिंग बेटर, दैट ओनली हैपन्स जब पता है कि रिलेशनशिप स्ट्रेटेजिक है. आई एम जस्ट बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू. तो पता है यार मैंने 40% कमाना है, इतने कस्टमर रीच करना है यार, मैं प्रोडक्ट कौन चेंज करूं, मैं क्यों जाऊं पीछे, अप्रूवल लूं, BRD बनाऊं, मैं विद इन द सिस्टम अप्रूवल लूं कि यार ये आप सिस्टम में चेंज करें, किसने करना है. दैट्स व्हाई आई से कि इट मे साउंड वियर्ड बट आई से ऑलवेज से फ्यूअर पार्टनरशिप्स बट मोर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स. स्पेंड द टाइम टू फाइंड द राइट स्ट्रेटेजिक पार्टनर. मैं सिर्फ अगर आपको एग्जांपल दे दूं, आसिम के साथ जो कोलैबोरेशन थी फॉर अ फ्यू इयर्स अगो, ही हैड अ लॉट ऑफ आइडियाज़ एंड देन वी वुड ऑफन गिव हिम फीडबैक कि यार ऑन द ग्राउंड कस्टमर क्या कह रहा है, एंड देन ही वुड ऑल्सो हैव इनसाइट्स फ्रॉम द कॉल सेंटर कंप्लेंट्स, और उससे बेहतर प्रोडक्ट बन के आ जाते हैं. फिर कस्टमर स्टिकीनेस भी बनता है, फिर यू नो विन विन सोल्यूशन भी बनता है. बट दैट ओनली हैपन्स जब पता हो कि रिलेशनशिप स्ट्रेटेजिक है. अगर KPIs पे डिपेंड करता है, यार हम पाकिस्तानी KPIs पे चलते हैं आसिम, अगर KPI ये 10 पार्टनरशिप्स करनी है, वो पार्टनरशिप हो गई, उसके बाद इम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ, चला ना चला, आसिम अगली कॉन्फ्रेंस में मिलेंगे चल, राइट. सो इफ इट्स अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इफ आई नो आई एम गोइंग टू बी जज्ड ऑन द रिजल्ट्स, if I'm going to be judged on the revenue, on the costs, then I will treat you very differently and vice versa. This wasn't for me, but मैं एक सिर्फ इसका point add करूँगी. We just had a meeting yesterday, with Jazz, और हमने उस वक्त ना 6 नए products बनाए हैं. 3 came from them, 2 were mutual, and 1 was because of that meeting. So बहुत important है आपके partner के साथ collaborate करके उस offering को लेना. Buy-in भी आएगा
और ये agree कर लेना कि they have more stats than you have. So this is very, very important. Thank you. I think we're done with the Q&A session, and everybody looks very ready to head out towards the lunch break. Oh, there's one more question. आप हमें रोक रहे हैं lunch पर जाने से. अस्सलाम वालेकुम. मेरा क्वेश्चन IGI से अली साहब से है. Basically, mind and body are not separate. Physical health जो है, mental health दोनों relevant हैं. जैसे आपने पॉइंट रेज किया कि मेंटल हेल्थ या वेलनेस जो जितनी बेहतर होगी उतना आपके पास ऑकरेंसेस कम होंगे. तो क्या आपने कोई मेंटल हेल्थ से रेलिवेंट कोई ऐसा काम किया हुआ है या ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कुछ ऐसा काम किया, आपके पास कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं कि आपके जो क्लाइंट्स हैं उनमें मेंटल हेल्थ कितने प्रिवेल करते हैं और उसके मुताबिक फिर कुछ वर्किंग की जा सकती है कि हम उनकी मेंटल वेलबींग के ऊपर काम करें जिससे ओवरऑल केसेस कम हो सकें, आपके ऑकरेंसेस कम हो सकें. So thank you for the question. I think that's a great one. क्योंकि यहाँ पे अभी हम पाकिस्तान में तो बिल्कुल उस जर्नी पे हैं जहाँ पे एटलीस्ट हम रिवॉर्ड कर रहे हैं ऑन being people being physically active, but vitality because उनकी जर्नी कुछ हो गई है more than 30 years. So वो अब वहाँ पे जो concept है is coming a lot on mental well-being. So अगर आप हमारी ऐप भी देखेंगे, so there are certain things that we encourage people to do and reward them for that but we leave it up to them if they want to choose that. For example, कि आपने सोने से पहले घंटा पहले आपने मोबाइल नहीं देखना. So that is something that you choose that I will do this week and then you get rewarded for it. And there are multiple other words. The other thing that we're able to do now because of these fitness devices is to track your sleep patterns. And now Vitality is currently in the process of developing how they can reward people for sleep patterns. कि जी आप कितना peacefully सोते हैं, because these are all the things that affect your mental well-being. There are other things that they are working on. कि for example क्या उसको कहते हैं कि journey. The one thing that is again in our app here in Pakistan is कि जो अर्ली इंटरवेंशन है कि मिसाल के तौर पे बहुत सी दफ़ा अंडरलाइंग कंडीशंस होती हैं बट लोगों को पता नहीं होता. सो वी इनकरेज पीपल कि एटलीस्ट गो एंड नो योर हेल्थ. तो आप जाके 4 बेसिक अपने टेस्ट करा लें, ब्लड प्रेशर, BMI, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड शुगर. एंड ओनली बिकॉज ऑफ गेटिंग दोज 4 टेस्ट डन, सो हो सकता है कि आप की कोई अंडरलाइंग कंडीशन हो जिससे आपको या हार्ट अटैक होने वाला हो या कोई और इलनेस आने वाली हो. सो जस्ट फाइंडिंग आउट दीज 4 वो आपको अर्ली इंटरवेंशन हो जाती है एंड यू आर एबल टू सेव लाइफ और हॉस्पिटलाइजेशन बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स. सो ये बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं एंड टेक्नोलॉजी इम्प्रूविंग, दिस विल जस्ट ओनली गेट बेटर, दिस होल प्रोग्राम. Alright, I think then we're done. Thank you. If I may request this panel, Nilofer, Dr. Iffat, Asim, Sardar Abu Bakr, Ali Nadeem, Ali Haider, for a group photo, please. Thank you so much, our esteemed guests. Thank you. And with this, we break for lunch. We'll be back in exactly 1 hour, so say 3:45 then. Thank you, everybody.
to be seated, please. We have some participants. So moving on to the next discussion. Welcome back, everybody. I hope you've had a great lunch. And as some of our guests have already left, so we'll move on with our fourth panel discussion, which is going to be navigating the insurance ecosystem, driving innovation and growth through strategic partnerships and alliance. For this group discussion, our moderator is going to be Mr. Sardar Abubakar, advisor and head of FinTech Future Jazz. If I would request him to come to the stage, please. He's going to be joined with Mr. Falak Sher Heather Sumro, advisor on insurance, SECP. He possesses strong insurance and actuarial expertise of over 16 years from Pakistan, GCC region, and Malta, EU, working as a consulting actuary and a chief risk officer. We'll also be joined by panelist Ms. Nilofer Sohail, Deputy General Manager, EFU Life Assurance. We'll have Mr. Habib Saqib also join us. He's the founder, Fasal Pay, Pakistan's first agri-fintech aiming to increase farmers' profits through improved access to affordable agri-credit products and services. And we have another panelist joining him, Mr. Muhammad Ali Khan, Head of Digital Products and Partnerships, Jazz Pakistan. In his current role, Ali is responsible for managing digital products portfolio covering primary verticals of gaming, insurance, and infotainment. He develops product strategy, go-to-market schemes, and portfolio enhancement plans for Jazz digital services as per market needs. If I may also tell you, I'm the voiceover for all your Jazz products, sir. And we'll be joined by Ms. Sara Irfan. She's a distinguished senior banker with an illustrious career spanning over more than 20 years in renowned financial institutions. She's the head liabilities and bank assurance, Habib Metro. I would lead this panel discussion with you, Vakar, and you can take this forward. We will cap it to about 30 to 40 minutes. Sounds good. We'll, because panelists would be leaving shortly. So I'll give you a cue from here to time move. So the agenda and just the topic for the panel, just to reiterate, is how we can drive innovation and growth through strategic partnerships and alliances. Nilofer, अगर मैं आपके साथ start करूं, जो strategic partnerships and alliances का जिक्र हो रहा है, और हमने हमारा objective ये है कि insurance को हमने scale करना है across Pakistan. So insurance for all, as it should be financial inclusion for all. MOU से आगे partnerships के results tangibly scale अक्सर नहीं होते. क्या वजह है और इस barrier को कैसे तोड़ सकते हैं? क्योंकि कभी-कभी एक vicious cycle आ जाता है. Vicious cycle ये होता है कि जी MOU sign करना है, and then we should all be happy. And उसके बाद everyone goes back to their day jobs. So the journey from an MOU to actually executing on a strategic partnership and creating impact, उसमें क्या hurdles हैं and why do you think that's the reason कि we stop at the MOU stage? Thank you, Abu Bakar. I think very relevant question. और काफ़ी सारा क्रक्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसको समराइज़ करूँगी क्योंकि वही एक इम्पॉर्टेंट ग्राउंड सेट कर रहा है. सो एज वी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट पैनल, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द विजन दैट द कंपनी हैज़. आप जो है ना वो आपने उस पार्टनरशिप को एक पिक्चर अपॉर्चुनिटी की हद तक रखना है तो वो भी बहुत हद तक पॉसिबल है. यू कैन डू दैट एंड दैट्स वेरी ईजी. आप जो है ना वो सबसे आसान बेटा है. बट अगेन उसको आपने उस मॉडल को in your company's direction कैसे strategize किया है, that is very very important. So I'll give you our personal example at EFU Life.
वी स्टार्टेड दैट्स अराउंड 6 to 7 years ago, बट लिटरली वो पायलट फेज में था, 1 या 2 हमने जो है वो स्कीम से ऑन बोर्ड किया था. एंड देन आई रिमेंबर 5 years पहले हमने बोर्ड स्ट्रैटेजी पेपर बनाया था फॉर दिस डोमेन. और स्टार्ट हुआ था ये जब NFIS आया था इन पाकिस्तान, जब पहली दफ़ा इंश्योरेंस का नाम बहुत प्रोमिनेंटली जो है ना वो स्टेट बैंक ने लिया था कि आपका साइकिल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन विल नॉट कंप्लीट टिल आपकी सेविंग्स, लेंडिंग, पेमेंट्स एंड इंश्योरेंस भी उसका पार्ट होगा, विच रियली मोटिवेटेड अस. और उसके बाद फिर ये एक डिस्कशन हुई कि लेट्स टेक इट एज स्ट्रैटेजी. सो अब जो डिजिटल और इंक्लूसिव इंश्योरेंस है जिसमें ये पार्टनरशिप्स आती हैं, MOU आता है, फुल बिजनेस मॉडल्स बनाने आते हैं, सो जो है वो सारा स्टार्ट हुआ था उस वक्त बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल हमने फेस किया था, जो बोर्ड से भी आया था, इंटरनली भी हम फेस कर रहे थे कि डू यू थिंक दिस बिजनेस मॉडल, ये हम CSR कर रहे हैं, इज दिस अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी आर एंगेजिंग इनटू. एंड वी थॉट ओवर इट एंड वी राइट अवे सेड नो, वी आर नॉट, बिकॉज वी थॉट कि अगर हम इसको इस डायरेक्शन में लेके चलते हैं ना तो 1 year 2 years डाउन द रोड, एंड ऑब्वियसली जब कोविड हिट होता ना तो ये पहली चीज़ होती जो बैक पे चली जाती. सो वी वेरी विजिलेंटली, और आज हम बड़े प्राउड हैं इस डिसीजन पे कि वी थॉट इट वाज अ स्ट्रैटेजिक बिजनेस मॉडल, और हम उसको इसी तरह से, इसके KPI सेपरेट होंगे, इसको मॉनिटर सेपरेट किया जाएगा. सो नाउ एज अ कंपनी हम ज़्यादातर इन 90-95% ऑफ द केसेस MOU साइन करने की पिक्चर न्यूज़पेपर में डालते हैं आफ्टर वी लॉन्च द प्रोडक्ट्स. So it's very important to launch it, go into the market, tweak it. Picture opportunity बाद में हो जाएगी, MOU बाद में sign हो जाएगा, but it will not be beneficial for the partner you are collaborating it with, for the company itself and for the customers, अगर वो ये सिर्फ MOU के phase तक रहता है तो. I like the bit where you said कि the photo is posted after the product is launched. That's a cool one, interesting. सारद, कमिंग टू यू वेरी क्विकली, एक परसेप्शन है, देखिए पाकिस्तान में अक्सर होती है, खैर कहीं भी ऐसे है, एक असलियत होती है, एक परसेप्शन होती है, और अक्सर परसेप्शन कैन बिकम रियलिटी. बैंक एश्योरेंस हैज़ बीन एन एवेन्यू, अ मॉडल जो कि बहुत से बैंक्स ने यूज़ किया है थ्रू देयर ब्रिक एंड मॉर्टर आउटलेट्स, थ्रू देयर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स एज वेल. It has been an add-on, there have been a lot of KPIs attached to it, and for some banks it's been a success, कुछ banks के लिए उसमें learnings भी बहुत रही हैं. How do you change the perception of bank assurance being a very conventional, traditional model of including people into the insurance ambit? And how do you make it कि यार ये सिर्फ KPIs या sales targets based force selling नहीं हो रही, you can do more? How do you see the evolution of bank assurance? Thank you, Abu Bakr. I guess being a banker and being in the banking assurance industry, I can totally relate to the question, perception and reality. अगर हमें लगता है कि ओवर सेल है या KPI है या फोर्स सेल है, तो सबसे पहले हम पाकिस्तान में इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन देखें. क्या हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन है? क्या हमारे मुल्क में राइट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पीपल आर इंश्योर्ड? नो, we are well below the required number if we compare it with our GDP or our neighboring country, India, if we talk about it. तो हमारे पास तो पूरी मार्केट ओपन पड़ी हुई है. फिर लुकिंग एट द करंट सिचुएशन, जहाँ पे महंगाई हैज़ गॉन टू द रूफ, वहाँ पे इन्वेस्ट करना इंश्योर्ड, अगर किसी इंडिविजुअल को कुछ हो जाता है तो उसकी एब्सेंस में फैमिली के लिए नाइटमेयर्स बन गए हैं. तो मुझे तो लगता है कि विद ओवर, जैसे जैसे टाइम अब बढ़ रहा है, पीपल आर रियलाइजिंग, एंड स्पेशली आफ्टर कोविड पीपल हैव रियलाइज दैट येस, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द नीड. रिक्वायरमेंट है, इंश्योरेंस होनी चाहिए. सो पर्सनली स्पीकिंग मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ओवर सेल है. मुझे बिल्कुल लगता है कि इट्स अ रेलेवेंट सेल, एंड यस परसेप्शन में भी, बट रियलिटी इतनी ओवर सेल इस हद तक इतने सारे बैंक्स मिलके नहीं कर सकते. एक आध बैंक आई कैन से ठीक है, बट इतने बैंक्स, 15-20 बैंक्स मिलके एक पूरी इंडस्ट्री को नहीं मूव ऑन कर सकते. दे हैव मैनेज्ड टू मूव द नीडल. तो हैड इट बीन ओनली अ परसेप्शन नॉट रियलिटी, तो वो नीडल मूव नहीं होती. ग्रोथ पोटेंशियल नज़र आता है आपको? बिल्कुल नज़र आता है, एब्सोल्युटली नज़र आता है, बिकॉज अब लोग रियलाइज़ कर रहे हैं कि उसकी नीड है. विद अवेयरनेस, यस, अवेयरनेस बढ़ाने की अभी भी ज़रूरत है. सिंस इट्स अ फिनटेक फोरम, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए कस्टमर ईज़ बढ़ाने की अभी भी बहुत ज़रूरत है. फॉर एग्जांपल, एक डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस हम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं कि जी कस्टमर को पॉलिसी टर्म्स एंड
एक्सपेक्टेशन डिलीवर नहीं हुए, उसके लिए हम टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करें, मैसेज के लिए टेक्नोलॉजीज़ को, प्रोसेस ईज़ के लिए हम टेक्नोलॉजी को बहुत प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते हैं. बट डेफिनेटली मुझे अब ऑलमोस्ट 20 साल से ज़्यादा हो गया बैंक इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, एंड विद एवरी ईयर एंड रिगार्डलेस ऑफ विथ विच बैंक आई हैव बीन, मुझे ग्रोइंग ट्रेंड ही मैंने विटनेस किया और मैनेज किया. अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह द बैंक आई एम फ्रॉम अभी मेट्रो कंसेक्यूटिव 5 साल हमारा ग्रोइंग ट्रेंड ही है अल्हम्दुलिल्लाह. Fantastic. Yeah. Habib, coming to you. You've been associated with the agri-tech and agri-space for a long period of time. I think, I'm not sure a lot of people know this, but I think it's important I mentioned it here. Habib was also a founder of, I think, one of the first agri-tech telco platforms, and he successfully took it to 8 million customers. और उसके बाद मुझ जैसे लोगों ने आके बस थोड़ा सा credit लिया, but he was actually the person who understood what the farming community, what the agricultural sector needed. इसी ambit में Habib, the question here is, we say agriculture हमारी backbone है, but at the same time the whole value chain has opportunities but it also has risks. अगर हमने agri पूरी life cycle में insurance की penetration बढ़ानी है, because there are needs. There are needs when it comes to livestock insurance, there are needs when it comes to the health of farmers and their families as well. There are needs when it comes to crop insurance, but at the same time we understand the macroeconomic difficulties, we understand realities such as floods. We understand कि अगर आपने एक अगर जानवर की इंश्योरेंस करनी है तो उसके अगर आप तस्वीर खींचते हैं तो वो रिपीट भी हो सकते हैं, टैगिंग में इश्यूज हैं. आपको टेंजिबली सबसे बड़े चैलेंजेस लेकिन और अपॉर्चुनिटीज़ क्या नज़र आती हैं एग्री सेक्टर में फ्रॉम एन इंश्योरेंस पर्सपेक्टिव? Okay, so thanks for the compliments and for the intro. I think I'll take a step back, and one of the reasons why we were very successful is that we were able to understand the customer properly, and I think that's one element which, when it comes to Insurtech partnerships, is generally ignored. So when we are talking about Insurtech partnerships, whether it's traditional banks or mobile money players, the insurance companies look at them as distribution partners. They already have a lot of customers. And so we have a product in mind and we want to go and distribute it because they already have a lot of customers. This is good, this is okay. However, the first step is to partner with organizations that can help you understand the customer's needs. For example, if we want to launch, for example, an extended warranty for electronic devices, the RAS understands the customer's challenges and where do the providers fall short in terms of warranty claims and services better than anybody else. Similarly, park wheels, for example, when it comes to vehicles or travel insurance on motorways, FWO understands it, or the motorway police understands it better. So the penetration would come, or distribution would come, after we are able to identify what exactly is the challenge that the customer is facing today, and you develop that with the partner who is there with the customer and actually feels the pain of the customer, and then you use different distribution channels. It may be park wheels or the RAS or FWO, but then you have other channels to distribute it as well. So one thing that I would like to stress upon, and probably this forum and PFN could be a vehicle to kind of enable these kind of conversations, is where we bring in those players onto the platform and help them talk to and facilitate those discussions so that customers' real pain points could be identified. So now coming towards agriculture, I think, so one, it was very heartening to hear, Salam Takaful's representative was saying that, their agri or parametric insurance product is seeing a lot of uptake, and it is now becoming more of a pull product. And he mentioned that they were able to do this, and because they developed it in partnership with two of the leading organizations in the agri sector. FFC, which is the biggest fertilizer manufacturer in Pakistan, and then of course Syngenta, which is probably the biggest multinational agri company in Pakistan. So my 2 cents are that the partnership starts when you're trying to understand a customer's needs and problems, and then comes the distribution bit. So that distribution will be easier if you have understood the customer's problems properly.
So when we go to farmers in my new role and we ask them what keeps them up all night. So one, of course, is climate change, definitely, and there's a lot of good work happening. Sure. The other is that even if there's no climate effect and they're able to successfully grow a bumper crop, the prices will go down. Now, can we devise a product around that a farmer contributes a small amount of money, and if the market prices for a particular month or when the harvest is there goes below a certain threshold, there is a contribution by the insurance provider. So instead of creating products, thinking on our own that these are the problems of a particular segment, I think you mentioned the segmentation challenge in your earlier talk. I think it's very important to partner with the people or the organizations who are deeply entrenched into those ecosystems, into those segments, and then develop products and services. And really good points. Before we come to you, Falak, just want to go very quickly to Ali. Ali, yaar, when you're representing Jazz, you would probably have a whole lineup of partners that want to engage and access a 75 million customer base. Now you have the responsibility where you're leading high growth verticals such as gaming and insurance. What kind of criteria do you apply? Because देखिए organizations में हम theoretical बात तो कर सकते हैं, but practically, अब you're sitting there and your team is saying, Ali यार ये 12 partners हैं, उसकी ये gaming company है, ये insurance party है, 7 business cases सबके बने हुए हैं. How do you decipher the kind of partnerships you're looking for, and is it more that they come to you, or do you go to them, or a combination of both? What has your experience been? So Abu Bakr, thanks. Basically, I am slightly new to this area. In a couple of months back, I have started looking at insurance vertical within Jazz. But I have observed कि Insurtech के अंदर जो technology का part है, उसका सबसे biggest enabler जो है वो telco ही हो सकता है. And if we put our levers right and push the pedal correctly, हम इसको Insurtech से Insurtel बड़ा quickly transform कर सकते हैं. सबसे बड़ा हमें advantage ये है कि technology के levers and apart from technology कुछ जो soft parameters हैं, जिस तरह आज सारा दिन बात हुई, for example trust, for example ecosystem, for example products, इससे भी बड़ी बात जो आपने भी की कि जो end user है वो कौन है, वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस हमारे पास अवेलेबल होती है जो कि सेगमेंटेशन है, राइट. सो इफ़ वी स्टार्ट राइट, विच इज़ द बिगेस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम राइट कस्टमर स्लाइस एंड डाइस कर लें. एंड आई थिंक नीलोफर वुड एग्री कि हमने सिर्फ अपने डेटा सेट को फाइन ट्यून करके इनकी आउटपुट डबल से भी ज़्यादा कर दी. सो दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द सेगमेंटेशन वी हैव. ट्रस्ट में अगर मैं आपको बताऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जैज़ इज़ अ नेम विच people trust. They know Jazz is with them throughout the day. Their living is based on that, because आपका फ़ोन कनेक्शन जो है या आपके वॉइस ऑन डेटा नीड जो हैं वो अब आपकी प्राइमरी नीड्स बन गई हैं. तो जब जैज़ कोई चीज़ लेके जाता है किसी के पास भी, उसमें एक नेचुरल ट्रस्ट आ जाता है. फॉर एग्जांपल एनी पार्टनर गोइंग डायरेक्टली टू द कस्टमर and partner goes via Jazz, there is a huge difference. And that is what we see, that people really trust us in doing that. उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की है वो ये है कि इन तमाम चीज़ों की आप जितना मर्ज़ी मास्टर कर लें, एंड आई थिंक एज एवरीबडी एल्स इज़ ऑल्सो रीट्रेटिंग ऑन दैट, कि प्रोडक्ट को कोई बंदा नलिफाई नहीं कर सकता. नथिंग सक्सीड्स लाइक गुड और राइट प्रोडक्ट. और उस प्रोडक्ट में मैंने जो रियलाइज़ किया है, जिस तरह एक माइंडसेट था कि इंश्योरेंस वो होनी चाहिए जिसके अंदर अनसर्टनिटी के एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो, तो आप वो वाले प्रोडक्ट्स बना के बेचें. ये इंश्योरेंस का मेन कॉन्सेप्ट है, विद विच आई डोंट एग्री. आई थिंक ये ओल्ड माइंडसेट है जो अगर हम पुश करते रहेंगे तो वी वोंट बी एबल टू कवर, एज एवरीबडी एल्स हैज़ एग्रीड इन दिस रूम, कि हमने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कोई माइलस्टोन्स कवर नहीं किए हुए सिंस मैनी डेकेड्स. The numbers have not reached to a level, and I think ये वही गैप है जो आपको याद होगा कि बैंकिंग अकाउंट और जो फिनटेक, जब डिजिटल बैंकिंग आई, जिसको हम ब्रांचलेस बैंकिंग कहते हैं, यू सॉ
in just 1 or 2 years or very limited time multi-fold हो गया banking account से because of the fact कि वो technology ने उसको enable किया लोगों को उन accounts को खुलवाने के लिए या उनकी ज़िंदगी में उसको इस्तेमाल करने के लिए certain facility या ease provide की गई. तो इसी तरह जो product है, जिस तरह non-life product के बारे में भी काफ़ी बातें हुई during travel, your commodities like phone, like vehicles, like motorbikes. आप अगर ग्लोबली देखें तो आप बाज़ार में इंटरनेशनली घड़ी भी ख़रीदने जाते हैं तो वो साथ ही आपको कहते हैं कि 100 यूरो की घड़ी है तो 20 यूरो की इंश्योरेंस है, राइट? सो इट इज़ बंडल्ड विद दैट. तो माई टेक ऑन दिस इज़ कि अगर हम टेलकोज इसको राइटली प्लेस कर लें then the time would come to select the partner. अभी हमें partner selection के phase में honestly speaking हम पहुँचे नहीं हैं because we are still in the phase of understanding कि इस product को कैसे mature करना है. And you know the numbers कि अगर आप for example obviously telco की base पाकिस्तान में 160-170 million को touch कर रही है. अगर मैं आपसे insurance की base का कहूँगा तो it's hardly not even 5 million. Which means कि जो telco का right potential था to enable this industry वो utilize ही नहीं हुआ. It is far behind that. So my take on this is that we have to put these levers rightly in place ताकि ये जो strategic partnerships हैं ये align हो and every partner have the opportunity to maximize the maximum potential. And I think every partner brings something unique on the table. EFU के पास लाइफ नॉन लाइफ दोनों की एज है. जो वेब डॉक वाले हैं उन्होंने बड़ा इनोवेट किया हुआ है प्रोडक्ट्स में. स्पेशली आपने राइटली कहा कि जो टेलको की रियल यूएसपी है चार्जिंग वाली प्राइसिंग. वी हैव द कंट्रोल ऑफ अ कस्टमर मेन बैलेंस अकाउंट जो कि एक बड़ी यूनिक स्ट्रेटेजिक हमारे पास एडवांटेज है. और उसके ऊपर छोटे प्रोडक्ट्स बनाना 1 रुपए दिन 2 रुपए दिन 5 रुपए दिन the small which customer can understand totally transforms the nature of the product, and I think that is the key to success. Excellent. Falak, just a comment before we ask a question. I've been very lucky and fortunate to work with a lot of regulators over the last 20 years as well. I think regulators को by definition भी बहुत सा criticism face करना पड़ता है. It's like the Pakistan cricket team, it comes with the territory, right? अगर है तो सबकी opinion होती है. कुछ topics ऐसे होते हैं जिस पे पूरे पाकिस्तान की opinion होती है. उसमें से cricket एक चीज़ है. Regulators भी एक usually common unifying factor होता है, सबको इकट्ठा करता है जब regulators के बारे में हम बात करते हैं. But I have to compliment one thing. बहुत से sessions में, and I think this is our first interaction, so we don't know each other, so it's not कि कोई हमारा. But I think बहुत से sessions में the regulator is present for only their part of the session and then they usually leave. I think it's a positive thing to see that the team has been here for almost all of the day. So I think I wanted to appreciate that. बहुत सी चीज़ें हम assume करते हैं कि हमें पता है, लेकिन if I ask this audience, अब ये सारे insurance experts बैठे हुए ना, roughly, अब कोई हाथ नहीं उठाएगा, but insurance के background से सब हाथ उठाएं कौन-कौन insurance background से है. I would assume कि we all know कि SECP के इस वक्त initiatives and forms of licensing क्या है, regime किस किस्म की है, जो digital insurance की अभी चीज़ें हुई हैं, तकाफुल पे focus है. बहुत से पाकिस्तानी कहते हैं भाई इस्लामिक होगा, शरिया compliant होगा तो बात होगी, वरना भाग जाओ यहाँ से, right? I would really like, as a starting off, and I have a follow-up with you, if you could also kind of summarize how SECP is looking at not only the licensing, but the regulatory regime for insurance, and what your overall objective is. Well, I must firstly congratulate the PFN for such a nice event that they have conducted. Firstly, I must say that I have just recently joined SECP, and it's an exciting opportunity. Rahi baat, what the licensing, obviously SECP has the digital insurer and the micro insurance licenses that are being issued, and a lot of uptake has been coming in. 3 digital insurance are in the discussions. Salam Takaful was here early in the morning, FTT and one more. So SECP is encouraging the Insurtech arena, and just basically making immediate strides is expected. Obviously, given the fact that 0.86% penetration hai,
telcos के साथ associations and telcos के साथ associations and everybody else is a lovely initiatives. मैं जो समझता हूँ कि it's important to understand the whole ecosystem and हबीब साहब ने mention agri के ऊपर जैसे उन्होंने बात किया. Similarly, it's important that we need to understand कि motor insurance में कैसे हम लोग engaged हैं. इसी तरीके से health के साथ हम लोग कैसे engaged हैं. I do not see the representation on the third-party administrators here, which is kind of a news to me because they are connected with this. I do not see hospital networks here, a representation of hospital networks here. That is also surprising because when you're talking about partnerships, right, and navigating and attempting to grow through Insurtechs, these are the key participants as well. There is no representation on the insurance tax. So, there has to be a standard effort on bringing together standard products which can then be, demonetized and they can be made into minuscule areas. And then rightly mentioned, I think last session you mentioned, product classification. That is always a, forte of actuaries. I mean, being an actuary by myself, right? That's always been a forte of actuaries, and that's where, the actual action can happen, where, the scalability can be enhanced on that direction. I think the time is short, and the next two questions, of course, we haven't discussed this. Thoda sa putting you on the spot. I'd like everyone's views on two questions. एक क्वेश्चन ज़रा ऑपरेशनल है, दूसरा स्ट्रेटेजिक. पहला क्वेश्चन जो ऑपरेशनल है वो ये है कि अगर किसी के पास एक अच्छा आइडिया है या प्रोडक्ट है, बिकॉज द थीम ऑफ दिस सेशन इज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस, ऑर्गेनाइजेशंस में किस फॉरम से लाया जाए? क्या सीईओ को एक ईमेल की जाए? क्या लिंक्डइन पे लिखा जाए? रेगुलेटर के पास तो एक सैंडबॉक्सिंग रिजीम है. प्रैक्टिकली स्पीकिंग, practically, if you want to connect with your institution or in your experience for a strategic partnership in the insurance domain, what is the best way to get in touch? Let me be very candid. Jazz 2-3,000 employees honge, Habib Metro, huge organization, you represent a large group, Nilafar. How do you get, what is the best way for an organization to get in touch, and what is the best avenue to do that? That's operational. Strategically, मैं इस पे ये भी चाहूँगा कि आप सारे 1 minute में बताएं कि यार, if there is one intervention that is needed to improve the insurance penetration in Pakistan, हो सकता है आप sector specific बात करें, आप कहें कि जी देखें कार इंश्योरेंस पे फोकस करके करें और ये हम जो हो सकता है कि जी एग्री पे आप कहें. इफ़ देयर इज़ वन इंटरवेंशन कि अगर पाकिस्तान की इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को हमने बढ़ाना है, देखिए मोबाइल फ़ोन की पेनिट्रेशन बढ़ी, डिजिटल वॉलेट्स की बढ़ी, इंश्योरेंस की क्यों नहीं बढ़ सकती? सेक्टर स्पेसिफिक को छोड़ दें, व्हाट डू यू थिंक वुड दोज स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस बी? अब इसको सवाल के ऑर्डर में सबके पास एक फ़ायदा है, जिससे पहले पूछूंगा उसके पास कम टाइम है, जिसके पास एंड में आऊँगा उसके पास ज़्यादा टाइम होगा. But I'd like to start with you. Ali is volunteering. Over to you. Maybe I can start. So two parts. Best way to partnership, and then what is the one intervention you suggest? देखिए जो आपका operational सवाल है वो तो बड़ा tricky है, and knowing the organizations, I can't firmly say कि इसका normally top down ही होता है, but top down interfaces develop नहीं हुए होते. ये थोड़ा सा मतलब real life में इसको आप सही तरह से judge नहीं कर पाएंगे. अगर हम जैज़ की बात करें तो obviously it is very clear and evident that there is a specific function which looks after insurance vertical. So getting in touch with those guys should be ideal. And then naturally idea अच्छा है बुरा है वो सारा वो follow करेगा. मगर strategically आपने बड़ा अच्छा, and I think I have been thinking this besides this conference, because when I came to this role, in my free time, I normally, I keep thinking that how to transform this, इसमें क्या potential है, कहाँ लेके जाना है. और जो मैंने somehow 2-3 conclusions निकाली थी, उनमें से एक जो मुझे बड़ा strongly, जो मैं उसको बड़ा quickly implement भी करना चाहता हूँ, वो ये है कि आप अपनी core products के साथ जो कि लोग used to हैं इस्तेमाल करने के, for example, telco need is like an oxygen, right? You cannot name a person who will say कि यार telecom is not my need. उसके साथ उसने रहना है. I think अगर आपने इंश्योरेंस को कोई impulsive
राइज देना है, अगर ये उसके साथ बंडल हो जाए, फॉर एग्जांपल आई नो X million of my people are on monthly XY package, right? And if I bundle my insurance with that, I can tell you the numbers of insurance industry right now can triple, you know, that can, you know, bust the roof. So from telco side, I think my idea is कि अगर strategically जाना है तो इसके अंदर आपको telco bundling on the baseline core product is an impulsive rise. सिर्फ आपको fit in ये करना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि आपने कोई product bundle कर दी है and nobody needs it. जिस तरह वो अक्सर ट्रैवल के ऊपर एक ज़बरदस्ती इंश्योरेंस दी जाती है शेंजन कंट्रीज़ में, जो आज तक हमें पता नहीं चला उसको यूज़ कैसे करना है। सही बात। उस तरह का ना हो, रेस्ट आई थिंक इट शुड बी एबल टू फ्लाई। वेरी गुड। नीलूफर? सो अबू बकर, मुझे आई एग्री विद अली, आपका जो पहला आपने ऑपरेशनल टर्म किया है ना सवाल, वो भी एक्चुअली स्ट्रैटेजिक सवाल ही है जिसको आपने बड़ा क्लेवरली ऑपरेशनली टर्म किया है। सो आई थिंक इट्स वेरी, जो आपका ये सवाल है वो बहुत रेलेवेंट है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट वी डिड वाज दैट हमने जो है ना वो बहुत क्लियरली एक टीम को सेपरेट कर दिया था फ्रॉम द इंटायर कोर, जिसको हम कहते हैं लेगेसी ऑर्गेनाइजेशन से, और उसको हम बिल्कुल एक स्टार्टअप विद इन अ बिग कंपनी ट्रीट करते हैं, और उसको हमने लगा दिया है फॉर ऑल दीज न्यू आइडियाज़। एंड आई थिंक उस तरह से जो है ना इट्स बीन सक्सेसफुल फॉर अस, बिकॉज जो हमने फील किया था ना, ऑब्वियसली जो लोग ऑन ग्राउंड हैं उनके पास बहुत आइडियाज़ होते हैं, बट दे डे इन एंड डे आउट दे आर सो बिजी विद देयर टास्क कि वो जो है ना वो शायद उस तरह से उसको आगे नहीं फॉरवर्ड, ये एक और काम हो जाएगा, वो वाली चीज़ आ जाती है। सो व्हेन अ सेपरेट टीम इज़ ओनली वर्किंग ऑन न्यू आइडियाज़, दैट इज़ एटलीस्ट व्हाट हैज़ प्रूव्ड सक्सेसफुल इन आवर केस। और दूसरा जो आपका सवाल था, अली ने बहुत वैलिड बात की एम्बेडेड इंश्योरेंस की, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वे इंटरनेशनल सारी चीज़ आपको ये शो करती है कि 70% चांस है कस्टमर का इंश्योरेंस बाय कर लेने का, अगर आप उसको राइट टाइम पे पिच कर दो। राइट टाइम क्या है? फॉर एग्जाम्पल, वो मोबाइल फ़ोन ख़रीद रहा है तो आप उसको इंश्योरेंस पिच कर दो, वो आपका ट्रैवल कर रहा है तो आप उसको ट्रैवल इंश्योरेंस पिच कर दो। राइट टाइम फॉर द कस्टमर। एंड फ्रॉम some another important thing which I think will increase insurance penetration is compulsory insurance जो है। I know it's a very big debate, फलक के पास बहुत सारे, I think they have been working actively, मगर पूरी दुनिया में जो है ना वो compulsory insurance is something that is proved successful। आपको वो करना पड़ेगा फॉर द मार्केट लाइक पाकिस्तान। नेशनल हेल्थ स्कीम वॉज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, बट उसके साथ गाड़ी की इंश्योरेंस हैज़ टू बी कंपलसरी। कॉर्पोरेट्स को कंपल्जन होनी चाहिए टू टेक ग्रुप लाइफ फॉर देयर एम्प्लॉयज़ है, बट उस तरह से क्या वो अप्लाई हो रहा है? और जो नहीं है वो होना चाहिए, क्योंकि नेशंस जिन्होंने इंश्योरेंस बाय, ऐसा नहीं है कि आप उसको कंपलसरी दोगे तो वो बाय नहीं करेंगे, बट आपने एक्चुअली डेटा ये प्रूव करता है कि जिनको कंपलसरी दी जाती है ना वो एक लेवल अप करता है, क्योंकि वो उसका मज़ा चख लेता है, उसको उसका टेस्ट आ जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पीपल को उस नेट में, लोगों को उस नेट में लेकर आया जाए। बेस लेवल देयर शुड बी अ कंपलसरी इंश्योरेंस फॉर सर्टेन क्लास ऑफ थिंग्स, एंड देन पीपल विल बी मोटिवेटेड टू बाय इट, एंड आई थिंक दैट विल इंक्रीज द पेनिट्रेशन। सारा? Well, जो operational बात है अबू बकर, I would say like everyone it vary from culture to culture. If you talk about bank, अगर आपकी मैनेजमेंट हेड स्ट्रॉन्ग है, कुछ करना चाहती है जो कि बड़ा इजीली पता लग जाता है, देन आई वुड से नथिंग लाइक अ टॉप टू डाउन अप्रोच। बट अनफॉर्चुनेटली बड़ा एविडेंट होता है जी टॉप पे जाके बात फिजल डाउन हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है, देन थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। एंड आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है कि चेंज जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन टीम के थ्रू आएगा। यू मे कॉल इट अ बिजनेस टीम, यू मे नेम इट, बट आइडेंटिफाई करना कि जी चेंज कैटलिस्ट कौन होगा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर टॉप लेवल पे कमिटमेंट की कमी, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, मिलती है, बट अगर टॉप लेवल पे कमिटमेंट है तो नथिंग लाइक इट। सेकेंडली, जो स्ट्रेटेजिक लेवल पे बात है, I will still say step back. Let's collectively, regulator, sari insurance companies, banks, private companies, work collectively
इंश्योरेंस का परसेप्शन पॉजिटिव करने के लिए आज हम ही हैं, आज अमेरिका आप जाएं, कनाडा जाएं, सबसे पहली चीज़ इंश्योरेंस मुझे चाहिए, उसके बगैर मेरा कुछ गुजारा ही नहीं है। आज आपके पास बैंक इंश्योरेंस बेचने कस्टमर के पास आ जाएगा, वो कहेंगे ओहो ये मिस सेलिंग आ गया। क्यों भाई, इट वाज द सेम गाइस, द सेम प्रोडक्ट, वही कवरेज रुपये में मिलेगी, वही कवरेज रेगुलर वहाँ पे मिलेगी। सो अगेन जो एक हमारा डिलेमा है, गवर्नमेंट लेवल, रेगुलेटरी लेवल, बैंक लेवल, इंश्योरेंस लेवल, मेरी तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्ली हमेशा ये होती है, स्टेप बैक। इंश्योरेंस एक पॉजिटिव फिनोमिना है and we all have to collectively, aggressively come out and tell a पढ़ा लिखा CFO कि नहीं जी इंश्योरेंस आने वाला, आपको कोई ना मिस सेलिंग कर रहा है ना कोई आपको ओवर सेल कर रहा है, वो जेन्युइन प्रोडक्ट बेच रहा है जो बाहर जाके आप खुद अपॉइंटमेंट दे के बुलाएंगे। तो पाकिस्तान चोर मुल्क नहीं है, इट्स अ पॉजिटिव इंडस्ट्री, पॉजिटिव मार्केटिंग। यू नो, अगर इंडिया में सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान मूवीज में इंडोर्स कर रहे हैं, हमारे पास कहाँ हैं वो हीरोज? वाई दे एंड गवर्नमेंट हैज टू प्ले शुड प्ले अ रोल, और गवर्नमेंट नहीं करती तो आई वुड से रेगुलेटर नीड टू डिसाइड। आई एम नॉट पुटिंग यू सॉरी ऑन स्पॉट, बट एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे कि जी ये इंडस्ट्री बढ़ानी है, ओके फाइन, अगर बढ़ानी है तो ये मेजर स्टेप्स लेने हैं, अदरवाइज ये सारी बातें हैं। सो येस, इंश्योरेंस इज पॉजिटिव, इट एड्स वैल्यू टू माई लाइफ एज अ इंडिविजुअल कैपेसिटी में। ओनली देन सारी चीज़ें टाइज अप हो सकते हैं, टेलकोस पे बात हो सकती है, टेक्नोलॉजी कैन प्ले एक्टिव रोल, बट सबसे पहले image. Understand. Let's improve that. Yeah. Falak, and then we'll close with you, Habib. Yes, I agree with Sarah, right? Yeah. So I agree with Sarah. Embedded insurance is important because otherwise it will not be, touched. Certainly, motor में हम लोगों ने देखा, सामा में, Saudi Arabia में mandate कर दिया था, and that's what we are trying to initiate here in Pakistan as well. आप अगर motor third party के law को देखें, I mean, how many of us would probably be buying comprehensive insurance here? मेरे पास है, yes, of course, because I wanted to buy it for my own self. We have to feel the need for it as well, because otherwise फिर वो उसका sense भी नहीं है, and we will be contributing towards a greater objective as well. वहाँ पे आपको tax मिलता है, वहाँ पे आपको opportunities मिलती हैं. रही बात coming back to your question on the strategic initiatives, I think there was a regulation which came in, not in Pakistan, but in Saudi Arabia, which mandated that you need to keep 3 motor insurers on your leasing portfolio so that you can see and assess which one is a good option, rather than sticking out. अब यहाँ पे पाकिस्तान में जाहिर सी बात है, a lot of insurance companies are owned by big groups. We know that, Adamji, EFU, they have their parent companies, they are only promoting their own product. But yes, of course, what I saw, they started issuing, tarification structure, जिसमें properly जो नदीम साहब का एक मंत्रा है, जिसमें he was planning to introduce used cars insurance. That used car insurance is not just used car insurance. They have a year as a primary, risk classification, right? Year of manufacture is a primary risk classification. हम लोग पाकिस्तान में initiatives नहीं लेते इस चीज़ के. The insurance industry needs to see as well. रही बात strategic initiatives के लिए, we are talking about 2 things. I mean, I personally would, if I were to go, this is my opinion, of course, not in the regulatory sense, I would really see, what is your vision and what is the company's vision, and then how quickly they would be able to, work with you with whatever, your wish list is. Even if you want to introduce bespoke products, for example, अगर आप जो है ना एक पाकिस्तान में एक bundle product को हर चीज़ के साथ coverage देना चाहते हैं, right? The app there was once I saw at Allianz was उन्होंने life भी डाला हुआ है, उन्होंने health भी डाला हुआ है, motor भी डाला हुआ है, travel भी डाला हुआ है. We are all working again at each and every single things on a silo basis. We need to work collectively. So I think that is a 2 perspective that I want to see: speed and agility, and vision, जो कि आपको assess करने की ज़रूरत है with your strategic objectives. Thank you, Habib. Yeah, so just adding on to the 2 points of the last 2 panelists, I think if I were to take at a strategic level an example from a similar market, that is India, this role is played by aggregators. Yeah. So Policy Bazaar and other aggregators of this kind,
Actually just last week I saw an ad where this guy is really frustrated because his wife didn't allow him to buy a cancer insurance worth 5,000 rupees, and he actually ended up spending 17 lakhs. So there, there's always a little bit of a humor, and it relates to a common man. So I think that kind of awareness, that having a safety net, insurance is primarily a safety net, and we generally don't use this term. I think this term is more easily understandable and would relate to a lot of people, that it saves you, this covers you against a lot of adversities and adverse circumstances that can actually push you towards poverty and a lot of lifelong challenges. So at a strategic level, I think probably it's SECP or PFN, somebody needs to bring all the insurance companies together and other players and launch this kind of educational and promotional campaign, which takes off all the apprehensions from insurance and highlights the importance of it, especially in a society like ours where people are vulnerable to a number of economic shocks. On an operational level, being from a startup-like organization, I think one of the reasons why I see that a lot of big companies or distributors are not, or could, potential distribution organizations are not sold on integrating or partnering with an innovative startup is that they haven't seen the numbers. So, I use this example from a book called Lean Startup, and he talks about different kinds of MVPs. So you launch an MVP. So I came across a startup who came up with an innovative product, and they didn't have that product actually, and this happened in Pakistan. They just ran a no incentive campaign on their website that if you want to get this, once we launch, just drop your phone number here. And it was a 4-week long campaign. They got over 10,000 people to drop their numbers over there. It was just ran on family and friends WhatsApp groups. Then they took those numbers, and now they're now the VCs are talking to them. There are angel investors ready to invest in them. So I think for any innovative idea, at times a big company really is, especially a bank. And I was speaking to Yahya a few days ago, and then he mentioned the same, that their app has the least number of integrations because they're very careful. They had their hands burnt. They partnered with a few companies who didn't deliver on the promise, and these were their customers. And then they had to feel the brunt of it. So it's very important that you do a little bit of a proof of concept to give confidence to potential partners to help you exploit the subscriber base that they've earned after a lot of time, effort, and money. So excellent. Strategic and operational. Very nice. Do we have time for 1 or 2 questions? No? So I think a round of applause for the panelists is really settled. Thank you. Thank you so much, because we would like to take some questions from the audience. So we'd like to take the next 5 minutes for that. Or you did? Yeah. So just for the Q&A session. Yeah, wait, that was the question. So absolutely. So yes, we'll have the Q&A sessions now. I think there's a... Hello. My question is, यहाँ पर मैं एक चीज़ जो गैप मिस कर रहा हूँ, I guess, जो इस्लामिक इसमें एक थॉट है इंश्योरेंस में, I guess that is a major, जिन लोगों से मेरी बात होती है इंश्योरेंस से रिलेटेड, वो इस्लामिक पर्सपेक्टिव मिस करते हैं कि क्या ये हलाल है, हराम है. So I guess रेगुलेशन के साथ साथ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए उनको, कि वो इसके ऊपर बात करें, वो क्लियर करें, क्योंकि आप लोग चाहे 1000 बार भी हमें अवेयरनेस दें चीज़ें, लेकिन हमें जो एक्चुअली कन्विंस करेगा लाइक 40-50% लोगों को, वो ही जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, वो अगर मुझे बताएंगे कि ये हलाल है, देन आई कैन adopt the insurance model. So, उसमें very relevant question. Nilüfer? Yeah, so I'll take it first. नहीं, आपका बहुत valid question है. I think सुबह के panel में भी आया था, और जावेद साहब did mention, and same starts for our company also, कि जो हमारा Islamic segment है, या हमारा जो total customer base है, उसका 40-45% is now Islamic. तो अब जो पहले हमारे पास dedicated Islamic companies थी, only they used to do Takaful. Now there are conventional companies like EFU Life who can do Takaful. और आज भी हमारे पास, I will not say all of the customers, but एक segment है that wants only Islamic products. तो अब उनके लिए एक option है, and that is
तकाफुल वाला ऑप्शन, जो आप वाली बात कि लोगों को पता नहीं है ये बात, और वही जो अभी हमने डिस्कस किया, क्योंकि ओवरऑल इंश्योरेंस की अवेयरनेस इज सो लो, सो तकाफुल उसके एक स्टेप बाद आता है, सो उसकी अवेयरनेस इज ऑल्सो लो. बट यस, इस्लामिक प्रोपोजिशन है, हर बड़ी कंपनी ने स्कॉलर्स को अपने बोर्ड पे लिया हुआ है. सो देयर इज़ अ शरिया बोर्ड के जो एडवाइजर्स हैं या जो स्कॉलर्स हैं वो इंस्टीट्यूशंस लाइक दारुल उलूम वहाँ से सर्टिफाइड हैं. सो यस, वी हैव बोथ ऑप्शंस ऑन टेबल एंड यस, कस्टमर्स डिमांड इट. अभी I think the insight, so I had a conversation after this, that panel with Ali, who's heading EFU, and the insight was that the Islamic insurance customers are pull customers. So these are the customers, or very small number of them are the ones these guys are pitching to. Most of them are actually coming and asking for Takaful product themselves. So I think that's very, that was a big insight for me. एक क्वेश्चन उस तरफ भी था अगर वैसे. Yes, there's one gentleman at the back there, please. Salam Alaikum ji, my name is Irfan. I'm representing TPL Insurance, part of the TPL Insurance team that is here today. एक challenge हम face कर रहे हैं इस market में, and while we talked about digitization and automation and all, the capacity available in the insurance industry for agri sector, ठीक है, बहुत कम है. और उसका एक reason ये है कि जो हमारे key players हैं, leading players हैं in the market, insurance companies, उनकी इतनी inclination नहीं है इस sector के अंदर. I see presence of EFU Life today, Jubilee Life is represented today, Adamji Life is represented today, but the general side of these institutions is not present today. So, I don't know whether it's the regulator or who can, look into this. इसमें partnerships में ये होता है कि जी partnerships जब करने जाते हैं, we are talking about selecting partners and all, तो जो बड़े low risk products हैं, vanilla products हैं, like auto हो गया, building plant machinery हो गई, उसमें the leading players like Adamji, EFU, Jubilee, they are very keen to participate in those kind of risks. But जब agri की बात आती है तो उसमें they are very hesitant. उसकी वजह से जो mid tier companies हैं, let's say TPL हो गया, Habib is here, Salam Takaful is here, who are trying to build capacity in these kind of products, उनको challenges आते हैं. So I don't know how we can address this side, because जब तक in agri sector, livestock sector में capacity build नहीं की जाएगी, reinsurance market से support नहीं लाई जाएगी with the help of these big players, the sector may not grow to the extent that we're looking for and compete with. Yes, so of course, Irfan and I have worked in the past as well, so I want to comment here that this may not be a SECP's comment, but I think it's a good idea that the capacities on the agri side needs to be done. It's important that all the stakeholders needs to understand that पूरा ecosystem क्या है, right? All the way from geotagging से लेके all the way from marking on the territories या farms कितनी वो रखनी चाहिए, और the risks क्या हैं उसी product के अंदर. तो मेरे ख्याल में with respect to capacity underwriting capacity enhancements, right? आपको reinsurer को buy in करना चाहिए. Certainly it's a difficult question given that कि आजकल reinsurers जो है they are tightening up their belts and the numbers are there, right? And certainly companies can set up probably an IAP level initiatives जहाँ पे they can try to bring together all the respective participants as well as the industry experts, right, from the different ecosystems. And certainly from that side, insurance and the regulators can also be a active player into that domain. So certainly ऐसी कोई proposition आती है तो SECP would definitely consider this. Please. Just one point I want to mention here, because वो directly agri insurance से related तो नहीं है, लेकिन problem ये है कि देखें हम diversified products क्यों नहीं बनाते. सबसे बड़ा issue ये हो जाता है कि हमारे पास distribution एक challenge बन जाता है.
अभी भी प्रॉब्लम ये है कि इंश्योरेंस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बड़ी लिमिटेड है. ऑन बोर्डिंग के बड़े कन्फाइंड और कन्वेंशनल मेथड्स चल रही हैं. जो टेक्नोलॉजी या डिजिटल है, इट इज़ स्टिल इन इन्फेंसी. इंश्योरटेक तो हम कह चुके हुए हैं लेकिन वो अभी अंडर डेवलपमेंट है. सुबह भी बड़ा क्लियरली लोगों ने कहा कि जी कोर बिजनेस तो हम नहीं छोड़ सकते, दैट इज़ आवर लाइफ लाइन, उसको तो हमने साथ साथ चलाना है. एंड वी वांट टू गिव वे कि ये सारी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट साथ साथ होती रहे. तो आई थिंक कि जब तक हम डिस्ट्रीब्यूशन को सॉलिडिफाई नहीं करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन को सॉलिडिफाई करने के लिए टेलको बड़ा की रोल प्ले करता है और कर भी सकता है. उसकी वजह ये है कि हमारे पास हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर पीरियड ऑफ टाइम, इफ़ यू ऑब्जर्व कि आप रिमोट से रिमोट एरिया में चले जाएं, आपको वहाँ हो सकता है चाय ना मिले, पानी ना मिले, लेकिन आपको लोड मिल जाएगा. वो लोगों की जो पूरी ज़िंदगी है अब वो टेलीकॉम पे डिपेंडेंट हो गई है. डिस्ट्रीब्यूशन को हमने मास्टर कर लिया हुआ है. उससे भी इम्पॉर्टेंट अच्छी बात हमने ये कर ली है कि उसको हमने डिजिटाइज भी किया हुआ है. ऑल आर रिटेलर्स आर डिजिटली लिंक्ड विद अस. हमारे पास बायोमेट्रिक मशीन्स हैं, उसके अंदर हमारे पास बड़ी ह्यूज कैपेबिलिटीज़ आ गई हैं. अब फॉर एग्जांपल अगर आप एग्री की बात करें तो फ्रॉम टेलको साइड आई कैन पिन पॉइंट के फार्मर्स किधर हैं, किस जगह कौन सा सीज़न है, कौन सी क्रॉप ने उतरना है, कौन सी क्रॉप ने चढ़ना है, किस वक्त कौन सी इंश्योरेंस चाहिए होगी, और वहाँ के लोगों को वो चीज़ें पुश की जाएं और उसका एक ऑनबोर्डिंग जर्नी बनाया जाए. चाहे आप उसको रिटेल लेवल पे लेके जाते हैं, चाहे आप उसको डिजिटल लेके जाते हैं. तो जब तक हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को मास्टर नहीं करेंगे, हमारी प्रोडक्ट्स के अंदर डाइवर्सिफिकेशन नहीं आएगी. और वो आपने सही कहा कि प्लेन वनीला टाइप प्रोडक्ट्स चलती रहेंगी, उसी को हम पुश करते रहेंगे बिकॉज लिमिटेड एक्विजिशन कैपेबिलिटी है. अगर इंश्योरेंस ने, बल्कि ये आपके स्ट्रेटिजिक क्वेश्चन उससे भी कॉन्सेप्ट से लिंक होता है कि अगर हमने स्ट्रेटिजिकली भी इंश्योरेंस को फ्लाई कराना है तो डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अनदर टॉप की एरिया अपॉन विच वी नीड टू फोकस. All right, great. One last question, just like a quick answer from this gentleman, please. Asha, if you could move here. अस्सलाम वालेकुम. क्वेश्चन के दो हिस्से, एक रेगुलेटर से, सॉरी आपसे ज़्यादा क्वेश्चन हो गए, और इंडस्ट्री की तरफ एक है. जो क्वेश्चन रेगुलेटर से, आपका पॉलिसी मेकिंग का काम है, आपने तो कर दिया, बट जो गवर्नमेंट का एक्चुअल रोल है वो हमें कहीं इंडस्ट्री में नज़र नहीं आता. फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम इनके साथ मिलके सेल कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल लेडी पोलियो वर्कर्स इस वक्त मुल्क में काम कर रही हैं हज़ारों की तादाद में, कोई गवर्नमेंट की तरफ से इनकी इंश्योरेंस नहीं होती. हमने पिछले 8 सालों में मिलियंस ऑफ BISP बेनिफिशरीज को सर्व किया, कोई इंश्योरेंस नहीं है. सो देयर इज़ नो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, जिसकी वजह से हम प्राइवेट सेक्टर्स को बड़ा प्रेशर मिलता है. क्योंकि एक तो हराम हलाल वाला जो भी इन्होंने क्वेश्चन किया वो एक अलग है. सो अगर गवर्नमेंट बीच में आए, जिस तरह हम ईरान के एक एग्जांपल दूं, तो गवर्नमेंट लेवल पे वहाँ पे पॉज को उन्होंने मैंडेटरी किया हुआ है काफ़ी बड़े लेवल पे, तो हाईएस्ट रेट ऑफ पॉज आपको वहाँ मिलता है बिकॉज के गवर्नमेंट का प्रेशर है. सेम गोज विद अदर कंट्रीज़ के, वहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत कुछ जो है ना स्ट्रिक्ट किया हुआ है. तो आपको वहाँ पे बड़ी हेल्प होती है कि प्राइवेट सेक्टर सिर्फ अच्छी प्रोडक्ट्स बनाते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से पुश की वजह से उसको हेल्प मिल जाती है. सो इज़ देयर एनी वे कि जी हम गवर्नमेंट को कहेंगे जी अभी हम दोबारा से BISP का पूरा काम शुरू हो रहा है, पोलियो वर्कर्स हैं, और इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और हैं, रेन इफेक्टिव्स के सिंध गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं. सो उसमें कोई ऐसा ऑप्शन हो सकता है कि जी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करे और इसको करे एक काम. तो ये क्वेश्चन है. जो इस्लामिक वेरिएंट वाला पॉइंट इन्होंने रेज किया था, जिसपे नीलोफर मैडम ने एक जवाब दिया कि 40% ऑफ योर पोर्टफोलियो इज इस्लामिक नाउ, बट दैट्स 40% इज योर पोर्टफोलियो, नॉट द कंट्रीज 40% ना. सो इस्लामिक, जैसे अब दारुल उलूम से वो सर्टिफाइड तो है, बट लोग दारुल उलूम की वेबसाइट पे जाके वो सर्टिफिकेशन पढ़ते नहीं हैं. नोबडी नोज कि जी मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे वो मिल जाएगा. सो जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वहाँ पे जो बड़े उलमाए कराम हैं, उनका मैसेज होना चाहिए कि जी हमने इसको टेस्टेड वेरीफाइड है, जिस तरह मीज़ान में अकाउंट्स के लिए करता है. फॉर एग्जाम्पल से, सॉरी थोड़ी सी बात कर रहा हूँ मैं, कल उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, एक एड पब्लिश किया जी उम्रा ऑन इंस्टॉलमेंट्स. सिर्फ 1.5 दिन में उनके कॉल सेंटर पे 13,000 कॉल्स आई हैं सिर्फ इस एक इंक्वायरी के लिए कि ये है क्या. बिकॉज कि उनका ट्रस्टेड बिल्डर है कि जी हाँ जी उन्होंने एक टाइम पे वो काम कर लिया. सो ये दो क्वेश्चन हैं, एक पे आप लोग अगर कोई बात करना चाहें और एक पे सारा. थैंक यू.
Well, I cannot comment in terms of the government's initiatives, but that is a right approach जो कि globally practice होती है. Government initiatives होते हैं. Flood हो गया तो उसमें government participate करता है और insurance companies participate करती हैं. The way I see it, अगर if we do not have the infrastructure जहाँ पे दोनों side की stories नहीं match up होती है, तो there are a lot of affinity groups जैसे BISP itself है, जैसे NGOs हैं जो कि काम करती हैं collectively, और insurance associations के अंदर pools बनते हैं जो कि basically they actually ensure कि यार ये चीज़ को साथ में मिलके काम किया जा सकता है. And I'm sure there were some initiatives conducted by ICCP in the past, जैसे terrorism pool था. We are working to try to reframe the insurance pool's dynamics as one of the objectives. जो कि industry can standardize it and all the participants come into a play in that direction. Farmers के लिए होगा, catastrophes के लिए होगा, all these things. रही बात शरिया compliance की तरफ से, I think insurance तकाफुल rules जो है, तकाफुल rules जो है 2012 के और 2017 के insurance regulations है, उसमें शरिया advisors की जो consent होती है वो companies की website पे दिया हुआ होता है, ठीक है, और वो consistent है with their approval, plus along with that you have your insurance का शरिया board भी है, शरिया उनका auditor भी होता है, और external auditor भी जो है ना इस चीज़ को insure कराते हैं. तो SECP इस चीज़ को insure करता है कि credibility जो है ना उन सारी चीज़ों की maintain रहे. तो yeah, I think if you want to add something, yeah, that would be Definitely. great. Thank you, Falak. आपने बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव दिया है. I would just like to add to it कि जो फलक ने बोला that's absolutely true. अब तो even हम अपने marketing brochure का भी हिस्सा बनाते हैं the Sharia certificate. So that is there. आपके जो disclosures हैं वो होते हैं. काफ़ी जगहों पे websites में ही एक तकाफुल products का पूरा एक segment ही अलग है जिस पे you can go and you can visit. बात आपकी सही है कि वो कितने लोग जाके visit करेंगे, that is a separate thing. और वहाँ मुझे लगता है कि जो हमने बहुत सारी awareness पे बात की है, that plays its role. Second, जो अली ने बहुत डिटेल में डिस्ट्रीब्यूशन कहा है ना, so when this तकाफुल मैसेज reaches to every jazz customers, आप सोचें वो रीच कितनी बढ़ जाएंगी. तो आपकी as UBL digital same, when it goes through you, when it goes through them, when it goes through everyone sitting here, I think वो चीज़ें उसी लेवल पे increase होंगी. So that's it. Right, and with that, we'd like to conclude this panel discussion. If I may request all of you, Sadar Abu Bakr, Nilofer, Muhammad Ali Khan, Falak Sumro, Habib Saqib, Sara Irfan, if you could all get together for a group photo, please. Thank you, panel 4, for your time. Thank you. Thank you, and with this, we'd like to head towards our last panel discussion for the day, which is going to revolve around the impact of digital insurance brokers and aggregators on boosting insurance market penetration. The last panel is going to be moderated by Mr. Siptan Jivani, who is the CEO Smart Choice. He's an accomplished entrepreneur with a strong foothold in the insurance space, with a profound understanding of both the payments and insurance industries. He has made significant contributions by launching 2 innovative platforms, Smart Choice and Smart Benefits. Thank you. He's going to be joined by panelist Syed Ali Hassan Zaidi, who is the COO TPL Insurance. Ali is a thorough professional with diversified experience of over 15 years. He's currently serving as a Chief Operating Officer for TPL Insurance, where he also oversees the strategy functions with a special focus on Insurtech and digital initiatives. Our next panelist is going to be Mr. Tohral Amir Turab Ali. He's the Executive Vice President, UBL. Brings a wealth of experience from the digital financial services sector, having successfully managed diverse responsibilities across local and regional roles in Asian
and African markets. Mr. Noman Zahoor will join this panel as the COO VADA Digital Insurance, as the Chief Operating Officer of VADA. Noman draws upon his extensive background in mass market, small ticket products to drive the company's strategic growth and innovation, and has propelled VADA to the forefront of the industry. Our last panelist is going to be Mr. Umair Khalid. Before joining Hello Doctor, Umair worked at VADA Digital Insurance as co-founder and COO, Bima MILVIK Pakistan, and as COO for almost 5 years. Umair, your profile is so long that if I start now, I think that'll be one complete panel discussion. Thank you so much for joining us. And again, we'll leave this for another 30 to 40 minutes because we're short on time, because we're going to have a quick Q&A session at the end as well. Sure. I'll leave it to you. Thank you. Thank you, everyone. Assalamu alaikum. I've been associated with the insurance industry since 2016, and this is the first interactive, engaging conference that I've been part of. So kudos to PFN for putting this together, and also a great panel over here. So obviously the topic is around insurance aggregators. I think this only started to happen again 6-7 years ago. This never existed. Well, insurance brokers always existed 15-20 years ago, but insurance aggregators, digital brokers were not part of the insurance industry, and it is only less than a decade ago that it happened. And when I started Smart Choice, it was primarily because when I moved from England to Pakistan after completing my studies, so I was looking for insurance for myself, और मुझे गाड़ी की इंश्योरेंस करवानी थी, एंड वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी कि एजेंट है, इससे ये फ़ोन करो और इससे बात कर लो और ये तुम्हें एक दे देगा रेट और गाड़ी की इंश्योरेंस करवा लेना. एंड इट वाज टीपीएल इंश्योरेंस बाय द वे. सो आई गॉट माई कार इंश्योरेंस, बट मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया कि ये सिर्फ एक ही ऑप्शन क्यों है और इसमें क्या कवर है, क्या कवर नहीं है. एंड देन व्हेन द क्लेम 2-3 साल बाद जब क्लेम आया तो मुझे पता ही नहीं चला कि क्या क्लेम हो सकता था. दोस्त ने मुझे बताया, एंड आई गॉट दैट क्लेम. And that made me, get to this point where I should build a own platform where I can, aggregate different insurance products and increase awareness, increase penetration. And then I did the research and I found out that Pakistan has the lowest insurance penetration in the region. India is standing at about 3%. Pakistan is less than 1%. अगर आप UAE की market देखें, with a 10 million population, the premium over there underwritten every year are more than $7 to $8 billion. Pakistan ki market with a 250 million population, unfortunately we are less than $2 billion of entire premium. That includes life insurance as well. So this is a very integral theme that we'll be talking about. और मेरा सबसे पहला question Ali Zaidi से ही है, because I think it's time to diagnose this problem, this disease that we have, which is lack of penetration. So I want to put a very hard question in front of Ali based on his experience. And the first one is that what did the industry not do in the last couple of years or decades that kept the insurance penetration so low? So what are those missing pieces that we could have done as an industry based on your experience and expertise? Thank you, Saptan. So I think there is no one particular reason. There are multiple. And of course we can discuss it, but starting off with a few things that we have already seen in the last session. First one was, of course, Islamic or Takaful was missing. It was not the piece, it was the missing piece as well. But of course there are different ways to look at it, right? So we have been in the industry, I mean this industry existed for past 7 decades, 7.5 decades. So we were never very focused on actually increasing the penetration. So everybody, including my own company maybe, we were focusing more on the business that already existed. So it was mostly cannibalization of the same business which everybody was doing. And we were not really focused on getting new customers on board and creating the awareness which should be there in a country like ours. So, and I think if you talk about even the last decade, we have been talking about how telcos can help and how banks have basically come into play as well. But we have been pushing the products down their throats, the customers. We have never really understood what the customers want, what their perceptions are, what are the needs that they exist, what are the problems that we are trying to solve.
So, as an industry, I think we lacked in that dimension. There are few players who are now focused on retail insurance, and they are trying to improve that the penetration overall. But I mean, let's break down these problems in bits and pieces. So, a customer perception about insurance is not very good, and there are multiple reasons for it as well. There have been mis-selling across the insurance industry because we use different partners, so banks being one, telcos being other. So when you give a target to a certain channel to sell, वो क्या करते हैं कि वो product की understanding दिए बगैर चीज़ें बेचना शुरू कर देते हैं because it's their target, and the customer doesn't know what is being covered and what's not. और जब क्लेम आता है उस वक्त उनको पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ तो कवर्ड नहीं थी यार, या आपकी पॉलिसी के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है. सो दैट्स वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स. दूसरी चीज़ ये कि इफ़ यू कंपेयर आवर इंश्योरेंस इंडस्ट्री विद फॉर एग्जांपल द बैंकिंग इंडस्ट्री, आई वोंट गो इनटू टेलकोस, दे आर ह्यूज, but the equity that the whole insurance industry has is less than the top bank in Pakistan. So the whole industry with 30 companies, 34 odd companies, having an equity of 120 million, and I think that's lower than one of the top 2-3 banks in Pakistan. So we don't really have the bandwidth needed to create that sort of awareness and do the marketing campaigns which are needed. So हमने बचपन में I think we saw State Life की कुछ ads वगैरह and marketing campaigns that we used to see. बट उसके बाद से कभी भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और प्रोडक्ट अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कभी मार्केटिंग कैंपेन्स नहीं की. पुश जब करने पे हम आते हैं तो ठीक है, हमने एक टारगेट दे दिया कि यार मिलियन पॉलिसीज़ राइट कर ली टेलकोस के थ्रू, एंड वी आर सच अ बिग कंट्री, 220 मिलियन पॉपुलेशन. आई थिंक अभी बात हो रही थी कि 160 मिलियन मोबाइल फ़ोन यूज़र्स, 75 मिलियन विद जैज़, दैट्स बिगर दैन अ लॉट ऑफ कंट्रीज़ इन यूरोप, राइट? तो the potential is there. Now the other challenge may be कि there are different target segments. हमने कभी target segments को उस तरीके से नहीं देखा कि हमने corporate से हट के, क्योंकि we have never focused on the retail where the penetration will actually come into play, that we have never segmented कि कौन से segment की क्या needs हैं. So we are trying to sell the same products to each segment. और उसमें of course purchasing power of the customer and the basis of जो हमारा population base है, that comes into play as well. You can't expect a lot of people to pay higher premiums for a comprehensive sort of products. So, I mean, I can go on about the challenges because of which awareness नहीं create हो सकी, but the main is something that हमने काम नहीं किया उस हिसाब से, to be honest. So if I put it very, bluntly, we've not done the hard work. We've done the easy work of going after the existing businesses जो हमने साइन अप कर लिए. दूसरा नई इंश्योरेंस कंपनी है, उसने भी उसी को टारगेट किया, उसी के लिए ही प्रोडक्ट्स बनाए, रादर देन के नई ऑडियंस के पीछे हम जाके एड्रेस किया हमने उसको. So देखिए, so of course insurance is one industry. We are part of the bigger ecosystem. These challenges exist in other industries as well. Telcos के पास जो उनका ARPU है या जो revenue per user है, it's not increasing. It's actually decreasing. We were having this discussion with Jazz last week as well. So there are challenges which every industry is facing, and it's not only residing in insurance industry. हमारे पास हमने शायद उस तरह से scale नहीं किया. Product development was weak. Product development अगर थी तो उसकी awareness उस तरह से create नहीं की गई. You have to start from the customer perspective. We have never co-created. अभी बहुत अच्छी बात हो रही थी कि agri के अंदर जो है जाके product को co-create किया गया. So I was attending a conference in Kenya because हम बात तो करते हैं इंडिया वगैरह की, but India is now far ahead of us, not only in insurance but बाकी fields के अंदर भी. So we have to see comparable industries and comparable countries. So we did a 2 weeks sort of a conference in Kenya where these products, especially on the micro side, they are very advanced in it, and there are a lot of investment coming into those insurtechs as well. So the first thing which we learned there was the co-creation of product. So आपको जो है ना वो अपने ठंडे कमरे में बैठ के आप इंश्योरेंस नहीं बना सकते फॉर एग्रीज, या अगर हम बाइक राइडर्स की बात करें, देयर आर सो मेनी बाइक राइडर्स, आप जब तक उनकी प्रॉब्लम्स नहीं समझेंगे, उनको जो रिस्क हैं, देखिए रिस्क होना इज़ वन थिंग, बट रिस्क परसेप्शन क्या है. सो यू नो कि व्हाट रिस्क दे आर कैरिंग व्हेन दे आर, बट उनके हिसाब से रिस्क की परसेप्शन क्या है. हो सकता है कि उनको एक्सीडेंट से इतना डरना होता हो जितना इनकम continuation की वजह से प्रॉब्लम होता हो. So unless you understand their pain points, you cannot create the sort of product which is needed for them. Great. So Tural, if I put you the same question to you as well, and if you can also talk about the micro insurance sector, how that can help in the penetration, because you've worked in the blue marble
micro-insure as well in different parts of the world. So what's your perspective on that? I think I'll just carry forward from where my colleague left off. People have shared very valuable perspective already. लेकिन एक दो चीज़ें जो मैं ज़रा highlight करना चाहता हूँ. एक तो ये कि हमारे जो सारा जो ये जो seduction है ना of technology, हमारा सारा focus आ जाता है distribution पे. आप distribution का इसलिए सोचते हैं क्योंकि वो sales लेके आता है और sales के साथ आपके पैसे बनते हैं. जो दूसरा साइकिल है दूसरी एंड से विच इज़ द कस्टमर्स एक्चुअली रीचिंग आउट टू यू विद अ क्लेम, अब वही टेक्नोलॉजी किस तरह लेवरेज करते हैं टू मेक योर प्रोडक्ट रेलिवेंट टू दैट कस्टमर, बिकॉज दिस इज़ वेयर द ब्रेक डाउन हैपन्स. और वो माइक्रो इंश्योरेंस में मैंने देखा हुआ है, हमने बड़ी बातें की वो उसके बारे में कि जी टेलको उसके ऊपर आप डिस्ट्रीब्यूट करें मिलियंस ऑफ कस्टमर्स. वी यूज्ड टू ऑलवेज टॉक अबाउट मिलियंस ऑफ कस्टमर्स. हाँ कि लाइफ इंश्योरेंस कर दी, आपने हेल्थ इंश्योरेंस कर दी, बेच दी. वो अक्सर अगले बंदे को पता भी नहीं होता था कि उसने क्या खरीदा, साइन ऑन किया हुआ है. अब द क्वेश्चन दैट वी हैड टू आस्क, वी शुड हैव आस्क्ड वाज हाउ मेनी क्लेम्स केम थ्रू. अब वो अगर आपने प्रोडक्ट सही तरह डिज़ाइन किया है तो यू हैव अ सर्टन रिस्क प्रोफाइल जो आपने बीच में एक्चुअरियल साइंस जो है वो प्रिडिक्ट करती है कि आपका लॉस रेशियो, अभी तो देखें लॉस रेशियो कहते हैं हम, जब क्लेम आता है तो उसको लॉस कहते हैं. तो लॉस रेशियो आपका क्या होना चाहिए, वो एक प्रिडिक्शन होती है. यूजुअली अ गुड इंश्योरेंस प्रोडक्ट शुड हैव ए लॉस रेशियो अराउंड 70%. बाकी 30% आपका मार्जिन होता है, ऑपरेशनल कॉस्ट उसमें से आप निकालते हैं. 70%. एंड माइक्रो इंश्योरेंस के अगर आप प्रोडक्ट्स उठा के देखें तो टिपिकल लॉस रेशियो आपका 15, 16, 18% के आसपास होता है. दिस इज़ फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. अब फ़र्क भी हो सकता है. अब 18, 19, 20% पर आप बैठे हुए हैं तो बाकी जो 50% है वो किधर जा रहे हैं, वापस तो आप नहीं कर रहे हो, तो आपकी जेब में जा रहा है. सो अ लॉट ऑफ द माइक्रो इंश्योरेंस फर्म्स वर आल्सो सॉर्ट ऑफ showing inflated returns based on this. But from the customer's perspective, you have to ask the question, why aren't the claims coming through? Are people not dying? Are they not getting injured? They are, but the claims aren't coming through because they simply don't know how to make a claim. वही distribution channel जो आपने use किया to sell it, आपने वो ये सोचा ही नहीं कि जी जब क्लेम उसने फाइल करना होगा, हाउ इज़ दैट पर्सन गोइंग टू कम बैक टू यू, एंड देन यू पुट सो मेनी हर्डल्स इन द प्रोसेस दैट इट ब्रेक्स डाउन. आई गिव यू एन एग्जांपल फ्रॉम Ghana. That's one of the markets I was looking at when I was head of Africa for a firm. तो उस वक्त हमने जब आई वेंट एंड आई एक्चुअली कॉल्ड अप पीपल जो हमारे क्लेमेंट से, एक सक्सेसफुल एक अनसक्सेसफुल. तो आई कॉल्ड देम एंड आई सेड कि टेल मी द होल प्रोसेस. सो दे सेड कि जी व्हेन पहले तो जब हमारा कोई इंसिडेंट हुआ, सो वन लॉस्ट अ मेंबर ऑफ द फैमिली एंड वन हैड एन एक्सीडेंट. तो दिस सेड कि जी हमारा जब इंसिडेंट हुआ तो पहले तो हमें याद ही नहीं था कि हमारी इंश्योरेंस है, बिकॉज माइक्रो इंश्योरेंस ये होता है कि वो प्रीमियम जो है कहीं आपने छुपा दिया होता है इन द फ्रीमियम मॉडल, राइट. सो द पर्सन डजंट इवन नो. वो फिर कहीं किसी ने याद कराया कि जी आप तो इंश्योर्ड होंगे, देखें. तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा हाँ ये कोई SMS आया था एक ज़माने में. तो दे कॉल्ड अप द कॉल सेंटर एंड द कॉल सेंटर सेड वी हैव नो आइडिया what is this insurance, because वो टेलको बीच में इन्वॉल्व थी, टेलको के पीछे माइक्रो इंश्योरेंस की फर्म थी. तो वहाँ से उन्होंने कहा अच्छा वील गेट बैक टू यू. दे हैंड हेल्ड द पर्सन. फिर उसने किसी ने कॉल बैक किया, इंश्योरेंस की कंपनी ने पिक किया, उधर से पीछे वो पूरा प्रोसेस चला. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट द प्रोसेस इटसेल्फ डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल हद तक तो बहुत क्विक था, but when it went the other way, it was a pain point. And because of that reason, वही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, वही टेक्नोलॉजी जो फूड पैंडा बड़ा अच्छी तरह लेवरेज कर रहा है, वही है ना, सेम वही मोबाइल फ़ोन है, वही टेलको है, उसने बड़ा अच्छा लेवरेज किया. फूड पैंडा के देखें अकाउंट्स कितने, वॉल्यूम क्या बिजनेस जनरेट हो रही है. वही चैनल जो टिकटॉक के कितने आपके बन गए अकाउंट्स पाकिस्तान के अंदर, वही जिसके ऊपर अभी आपकी ई-कॉमर्स चल रही है, उस पर इंश्योरेंस नहीं बिकती. दिस इज समथिंग दैट्स रॉन्ग. एक तो ऐसी इंश्योरेंस इज़ अ हार्ड प्रोडक्ट टू सेल. नोबडी वेक्स अप wanting to buy insurance, and those who want to buy insurance, believe me, the insurance companies don't really want to sell to them because typically वो कोई claim आने वाला होता है. Absolutely. तो then you know the only way, जिस तरह आतिफ मेरे कोलीग हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल पूछा. इन्होंने कहा कि जी गवर्नमेंट क्यों नहीं इन्वॉल्व होती, और गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा. इंश्योरेंस ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो बाय इटसेल्फ जो है वो डिमांड क्रिएट करता है. The government has to come and think about why agri insurance की product की भी बात हुई थी अभी, और sorry if I'm taking too long, but there are some points I picked up when I was listening. Agri insurance आप किसी farmer से जाके पूछें कि उनका क्या experience होता है.
जितने भी लोन्स ये माइक्रो फाइनेंस बैंक्स देते हैं उसके अंदर एग्री का इंश्योरेंस जो है वो बिल्ट इन होता है। कभी फार्मर से ऑन द ग्राउंड जाके पूछें इंश्योरेंस क्लेम का प्रोसेस उसके लिए क्या था, नन ऑफ देम गेट पेड until there's a disaster which is declared, और वो disaster declare करना भी जो है वो एक government का prerogative होता है, which happens when something really extreme has happened. So I think a long answer, but short of it is that we are simply not relevant to the life of the customer. Yeah. The customer is not a fool. They will pay when they see benefit. And आपको अगर सोचना है तो start thinking not from the distribution side, but from the other side, जहाँ से claims आने. And the success of your product is if you're hitting that 70% mark. If you're not hitting that 70% mark, the product is a failure. I think it's a very valid point. There was a time when obviously consumers did not have access to information. तो उसको आप चीज़ें छुपा सकते थे, नहीं बताते थे, उसको बाद में भी नहीं पता चलता था, वो बोलता था शायद मैं जाहिल हूँ, मुझे नहीं पता वो पॉलिसी में क्या लिखा हुआ है। आज नहीं कर सकते आप। आज वो वॉइस ऑफ कंज्यूमर के ग्रुप पे जाता है, वहाँ पे वो 2 बातें लिखता है, सामने से कोई एक्सपर्ट आता है, उसको जवाब देता है और फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है अब ऐसे बात करनी है। आज सबको पता है कि क्लेम इंश्योरेंस कंपनी के भी क्लेम कैसे निकलवाने मतलब उसको भी पहले से तरीके पता चल गए, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी ने उससे छुपाया तो उसने भी फिर अपनी चीज़ें सीख ली। सो एंड आई थिंक just to add one point, because we are also in the business of health insurance, and health insurance is considered a loss business, right? Because claim ratios are too high. But I think this is one of the best products to penetrate is health insurance. When I say health insurance, because it actually solves a problem for the end user, be it that person directly or his family member, and for an employer as well, giving that benefit to their employee. Just to take this forward with Numan, because Vada is also in the micro insurance segment, if I am not mistaken. You work with telcos. How are you addressing this challenge which Tugral just mentioned about claim loss ratios and ensuring that the claims are given out, or it's easier to take claims rather than just to buy a policy? Okay, so Tural ने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मेंशन किए हैं विच वर वेरी पर्टिनेंट, स्पेसिफिकली विद माइक्रो इंश्योर बैकग्राउंड के साथ और माइक्रो इंश्योरेंस के हवाले से. वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन वेयर वी फेल्ड एज एन इंडस्ट्री इज़ टू सिंप्लीफाई द प्रोडक्ट. हम वो 70 साल पहले जो इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी विद 60 पेज डॉक्यूमेंट, वी आर स्टिल एट द सेम लेवल. हम लोगों ने उसको सिंप्लीफाई नहीं किया. जिस टाइम पे एग्रीगेटर्स या इंश्योरेंस ब्रोकर्स सेल करने जाते हैं टू द मासेस, इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू द कस्टमर. और जिस टाइम पे हमारे पास क्लेम लॉन्च होता है, क्लेम को हम फैसिलिटेट करना चाहते हैं, देयर आर सो मैनी क्लॉजेज. इवन एज एन इंश्योरेंस ब्रोकर, एज सम एक्सपर्ट, आई डोंट नो कि यार ये कहाँ पे एक्सक्लूजन्स थी और ये कैसे एक्सक्लूजन्स हो सकती हैं. परमानेंट डिसेबिलिटी के ऊपर कोई 4 पेजेस का डॉक्यूमेंट होगा कि कैसे जो है ना उसको आपने निकाल के देखना है. उसके लिए 2 बाजू काट के उसकी परमानेंट डिसेबिलिटी है. हमने आज तक, अगर हम टेलको की और इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो जस्ट टेक अ लेमैन, उससे पूछें सुपर कार्ड क्या है, उससे पूछें इजी पैसा क्या है, वो आपको बहुत आसानी से बता देगा. लेकिन आस्क हिम कि हादसाती इंश्योरेंस या पर्सनल एक्सीडेंटल क्या है, वो नहीं बता सकता, क्योंकि हमने प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई नहीं किया. यहाँ पे हम लोगों ने चैलेंज जो है ना उसके लिए हम तैयार नहीं थे. कस्टमर को अवेयरनेस उस हिसाब से नहीं दे सके. इंश्योरेंस एग्रीगेटर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं टू सिंप्लीफाई दोज प्रोडक्ट्स, और उनकी कोशिश ये होती है कि वो अपने क्लेम्स जो है ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा करें. वादा के ऊपर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, सो हमने क्या किया, एक्चुअली हमने क्लेम्स को इंक्रीज़ करना शुरू किया बाय रीचिंग आउट टू द कस्टमर्स वाया द सेम चैनल्स एज तुगरल वाज मेंशनिंग. सो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो कस्टमर रूरल एरिया में बैठा हुआ है उसके पास सबसे ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी क्या है. इधर मोबाइल फ़ोन, या तो सब कस्टमर को दोबारा से कॉल करो और उसको बताओ कि आपके पास ये क्लेम अवेलेबल है. अदरवाइज़ फेसबुक इस टाइम पे, अगर हम 160 मिलियन हमने बात की कि मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं, जिसमें से तकरीबन 55 to 57% स्मार्टफोन यूज़र्स हैं, तो those 55 to 57% have access to Facebook. They are watching content on Facebook, Insta Reels, TikTok. Try to address those things that you have insurance. Try to
recall that thing कि यार आपने ये इंश्योरेंस ली थी, आप ये क्लेम करें, और उसको सिंप्लीफाई किया, जस्ट ड्रॉप योर नंबर. अगर पिछले 1 साल में कभी भी हॉस्पिटल में दाखिल थे तो वी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लेम्स. और जिस टाइम के ऊपर हमारे पास क्लेम्स आने शुरू हुए, वी were able to penetrate deep down in that community, क्योंकि लोगों को ये पता चलना शुरू हुआ कि that there is one company who is paying the claims. Now they are perceiving us and they are seeing us as the company who is paying claim instead of the company who is selling insurance. So they are coming to us and asking for different variants. हमारे UN के ऊपर एकदम से inflow बहुत ज़्यादा बढ़ गया, which was a good problem to have. तो वहाँ पे हम लोगों ने claims को जब डिलीवर करना शुरू किया तो वहाँ पे हमारे पास एक मेजर डिफरेंस क्रिएट हुआ. इसके अलावा जी और चीज़ जिसके ऊपर हमें मेरे ख्याल से बात करनी चाहिए, विच इज़ कि हम इस टाइम पे सर्व किसको कर रहे हैं. हमारा एरा शायद गुजर गया या गुजरने वाला है, बट इट इज़ नाउ द एरा ऑफ मिलेनियल्स, हाउ दे परसीव थिंग्स. हम उन पुराने कॉन्सेप्ट के साथ इंश्योरेंस को आगे लेके नहीं चल सकते. हमें यहाँ पे रेवोल्यूशन चाहिए. इंश्योरेंस इंडस्ट्री को इस टाइम के ऊपर नए कॉन्सेप्ट्स को लेके आना है, नई चीज़ों को लेकर आना है. इस टाइम पे 21 to 35 की एज के जो लोग हैं, 55% में से वो तकरीबन 45% लोग वो हैं जो कि इस यूथ जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है. सो वी नीड टू प्रोवाइड, फॉर एग्जांपल, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्लान्स टू देम. वी शुड प्रोवाइड हॉस्पिटल कैश प्लान्स टुगेदर विद हॉस्पिटलाइजेशन प्लान्स. हम वो IPD की अगर वो कम्बरसम किस्म के प्रोसीजर्स बनाने शुरू कर देंगे, दे वोंट बी गेटिंग दोज. हम जो तकाफुल के हवाले से बात अभी बहुत दफ़ा हो चुकी है, सो वी वर एक्चुअली एक्सप्लोरिंग सम ऑफ द तकाफुल ऑप्शंस, और आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एग्री करेंगे. सो दिस इज़ एक्चुअली सेड कॉस्ट ऑफ बीइंग मुस्लिम. आपको तकाफुल प्रोडक्ट एक्सपेंसिव मिलती हैं. इफ़ यू वांट टू प्रोवाइड तकाफुल प्रोडक्ट, आपको वो एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ता है टू द कस्टमर. वाई? सो वी एज एन इंडस्ट्री हमें बहुत सारी चीज़ों पे अभी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है. और एग्रीगेटर्स या जो हमारे पास इंश्योरेंस ब्रोकर्स हैं, इनको थोड़ी सी लेवरेज मिलनी चाहिए कि वो अपनी प्रोडक्ट्स खुद डिवाइस कर सकें. इंश्योरेंस कंपनी, स्पेसिफिकली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जब वो रेगुलेटर के पास जाता है प्रोडक्ट अप्रूव करवाने के लिए, पता चलता है 3 महीने के बाद प्रोडक्ट अप्रूव हुई है, उसके बाद आपने जैसे ही उसको इम्प्लीमेंट किया फेल हो गई. एज अ स्टार्टअप यू नो कि हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं. अब अगर हमें फिर से 3 महीने का साइकिल चलाना है, और इस तरह साल में हम शायद 4 एक्सपेरिमेंट्स कर सकेंगे. लेकिन अगर हमें प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है तो वी विल बी एबल टू प्रोवाइड मोर प्रोडक्ट्स, वी विल बी एबल टू कंडक्ट मोर एक्सपेरिमेंट्स, और उसकी वजह से हमारे पास ज़्यादा बेहतर बेनिफिट्स नज़र आ सकते हैं टुवर्ड्स द इंक्लूसिव इंश्योरेंस सेक्टर इन पाकिस्तान. So are you suggesting a more flexible regulator who addresses? Yes, exactly, or a kind of thing which KSA is now pursuing, that MGA license thing, जहाँ पे आप सिर्फ रिस्क को जो है पास ऑन कर देते हो, बट द प्रोडक्ट इटसेल्फ इट शुड बी मेड बाय द इंश्योरेंस ब्रोकर और एग्रीगेटर, और वो सारी की सारी जो है उसकी वर्किंग्स हैं उसके पास होती हैं. I think the MGA concept is still new to Pakistan. I spoke to a few insurance companies and they were not aware of this MGA concept, but I think it's very common now in US and other parts of the world, and it's high time that we start exploring that as well as an industry. I'll now move towards Umair. Hello, Doctor, Chief Operating Officer, if I'm not mistaken. You've been in the industry for long, so I want to understand. You have a very good perspective on brokers, digital aggregators. So आपके हिसाब से क्या अपॉर्चुनिटी है जो कि इस वक्त डिजिटल एग्रीगेटर्स ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं की है, या क्या चैलेंजेस आपको नज़र आते हैं जो कि जिसकी वजह से ये पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे? बिकॉज इफ़ यू लुक एट द नेबरिंग कंट्री इंडिया, पॉलिसी बाजार, पॉलिसी जीनियस, देयर आर in UAE there is insurancemarket.ae. They are now one of the major platforms where consumers go and buy insurance from that platform and not directly from insurance companies. So क्या opportunities या क्या challenges है जिसकी वजह से हम अभी तक again this channel which only started a couple of years ago has still not made a huge mark, including ourselves. I won't call ourselves that we made a mark, but just trying to understand. Assalamu alaikum. Thank you PFN for arranging this amazing Insurtech summit. I think based on my experience from telco to Insurtech and to HealthTech, and primarily looking after different Southeast Asian countries,
where awareness is a lot more as compared to Pakistan. I think कि जो पहले माई पॉलिसी के नाम से एक वो प्लेटफॉर्म बना था, मेरी पॉलिसी के नाम से जो शायान ने बनाया था, जो फोकस था डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज़ का, जो ट्रस्ट होता है एग्रीगेटर्स के ऊपर, वो कहते हैं हमारे पास एक वो पोर्टफोलियो के ऊपर एक प्रोडक्ट पड़ी हुई है शेल्फ के ऊपर, जाएँ ये ले जाएँ आप भी बेच दें। एक बंदा जो कि इंटरनेट के ऊपर आ रहा है, एक एग्जांपल थी जो कि हमारे पास शेयर हुई, फूड पांडा की शेयर हुई, हमारे पास उबर है, करीम है, और हमारे पास जो है वो पाक व्हील्स की एग्जांपल हबीब ने शेयर की। तो उसके अंदर यही है कि आपके पास एक डिफरेंट ऑप्शन और एक्सेस था कि आई कैन पिक एंड चूज़। अब क्या जो इंश्योरेंस जितने भी एग्रीगेटर्स हैं ऑनलाइन जो डिजिटली अवेलेबल है, क्या उनके पास सारे इंश्योरेंस कंपनीज़ की प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं? अगर होंगी तो वो इतनी जम्बल्ड अप होंगी, यूज़र इंटरफेस इतना डिफ़िकल्ट होगा जिसको एक नॉर्मल कस्टमर जो है वो रिलेट ही नहीं कर पाएगा। फिर हम लोग एक उस एरा से हैं जहाँ पे हम लोगों ने ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें, तो एक हर एक के माइंड के अंदर इंश्योरेंस के नाम के साथ आता है एक सेविंग प्रोडक्ट है, लाइफ की एक प्रोडक्ट है, मरने पे कुछ है, जबकि देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स जो कि अवेलेबल हैं जो कि हमारी डे टू डे नीड के लिए मैंडेटरी हैं। सो इंश्योरेंस एग्रीगेटर्स को और ये जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, being a telco background, myself, Noman and Tughral, we can easily relate to कि telco के पास कितनी information और knowledge थी, and that's why we were able to make inroads and improvements in our previous organizations, जहाँ पे हमने beneficiary की details लेनी शुरू कर दी। अगर हमने एक customer को enroll कर रहे थे PA या health के ऊपर, हमने beneficiary की details नहीं, हमने उनको भी broadcast करने शुरू कर दिए cover SMSs के, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाएगा तो beneficiary ने राब्ता करना, घर वालों को तो पता ही नहीं होता था। सो इंश्योरेंस एग्रीगेटर्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक तो जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो जनरल वाला नहीं होना चाहिए, एक तो ये चीज़ है। सेकेंडली इंश्योरेंस साइट के ऊपर जब हम जाते हैं तो हमें एक चैलेंज आता है, वो हमारी बात नहीं सुनते उस तरह से कि यार ये तो लॉस रेशो यहाँ पे बहुत हो जाएगा, पहले इमीडिएट एक रिटेलिएशन आता है यहाँ पे लॉस रेशो। जब ₹1 वाली प्रोडक्ट, ₹2 वाली प्रोडक्ट बैक इन 2015 आई थी और ये निकलना शुरू हुआ था सारा काम, तो वो कहते थे यार ₹1 में क्या, ये हम क्या कर रहे हैं, तो ₹1 में से 90% हमें दे दो, बाकी 10% तुम लोग लो और टेलको लो और डिस्ट्रीब्यूशन भी तुम ही करो। सो इट टुक द एंटायर इंडस्ट्री टाइम टू अंडरस्टैंड दिस एंटायर कॉन्सेप्ट एंड एवरीथिंग। आई थिंक इंश्योरेंस एग्रीगेटर्स व्हाट तकाफुल बाजार इज डूइंग, फोकसिंग ऑन द मोटर इंश्योरेंस साइड और इस्लामिक इंश्योरेंस वाली साइड के ऊपर अवेयरनेस, प्राइमरली इन कराची विद बाबर आजम। व्हाट यू गाइज आर डूइंग एटलीस्ट गोइंग इनटू द SMEs इज क्वाइट अमेजिंग, बट इंडस्ट्री जब तक हम पे ट्रस्ट नहीं करेगी, हमारे साथ बैठ के एक ओपन माइंडनेट्स के साथ, वी आर ब्रिंगिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम डिफरेंट सेगमेंटेशन, टेलको वाला सेगमेंटेशन है, वी इंटरैक्ट विद पीपल, वी इंटरैक्ट विद डिफरेंट बेनिफिशरीज एज वेल जो हमें कॉल करते हैं, एंड दोज इनसाइट्स व्हेन दे आर बीइंग शेयर्ड विद इंश्योरेंस एंटिटी, चाहे वो लाइफ है चाहे वो जनरल है, दे नीड टू सपोर्ट अस इन अ वे जहाँ पे ऑन आर प्लेटफॉर्म्स, अदर देन यूज़र इंटरफेस प्यारा बनाने से फ़ायदा नहीं होगा अगर वही चीज़ वहाँ पे भी नज़र आ रही है, वही एक XYZ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे नज़र आ रही है, मैं किसी बैंक की ऐप में जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पे सब कुछ ही वही नज़र आ रहा है, तो फिर सारे के सारे वो फिर प्रोडक्ट वहाँ से क्यों नहीं ले लेते? तो आई थिंक कि जो इंश्योरेंस जितने भी एग्रीगेटर्स हैं, वी ऑल कम टुगेदर, वी शुड सिट टुगेदर एंड गो टू डिफरेंट इंश्योरेंस एंटिटीज़ विद द सपोर्ट ऑफ SECP एज वेल, कि यार वी नीड सम लेवरेजेस टू प्लेस थिंग्स ऑन द वेबसाइट्स। प्लस हम लोग जो नुमान ने भी बात की कि एक्सक्लूजन्स हैं, सिंप्लीफाइड एक्सक्लूजन्स होनी चाहिए। कोई भी बंदा वेबसाइट पे जाता है वो समझ ही नहीं पाता है, वो कहता है ठीक है ओके फाइन, प्राइस में कंपैरिजन आ गया, एक XYZ कंपनी 18,000 रुपये में मिल रही है, एक 20,000 में मिल रही है, माई प्रेफरेंस वुड बी 18,000 वाली ले लो, जबकि मुझे ये पता है कि शायद 18,000 वाली में मुझे लॉस की सूरत में बहुत ज़्यादा मसले हैं, वहाँ पे एक्सक्लूजन फाइन प्रिंट है। फॉर मी 20,000 इज़ मच बेटर। आई थिंक जो इंश्योरेंस एग्रीगेटर्स को ये भी करने की ज़रूरत है, दे नीड टू बी वेरी ओपन टू द पब्लिक, दे नीड टू शो व्हाट एग्जैक्टली आर द फाइन प्रिंट्स, bring out those fine prints, remove the hurdles, and then move forward. Great, Umair. I think you touched upon awareness as one of those things that is lacking. And Ali, coming back to you, I would like to understand whose responsibility is to increase awareness. Is it the aggregators or is it the insurance companies? And because and this is an integral part, and what each party should play as a role in increasing the awareness.
तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है और क्या रोल प्ले करना चाहिए? ऑब्वियसली दोनों की है, ऐसा तो नहीं है किसी एक की है, लेकिन स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. So no, you're spot on. I think it's a collective responsibility, not only for aggregators or insurance industry, but as regulators. SECP, of course, is the regulator. उनकी भी एक responsibility है, and they have to come up with a strategy of how insurance companies and insurance industry can improve this awareness. I think हमने जब कुछ surveys किए तो what we found was कि product wise awareness different होती है. Product wise awareness से मतलब ये है कि लोगों को ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस का लफ्ज़ ही नहीं पता या उनको ये नहीं मालूम कि इंश्योरेंस क्या चीज़ है. अवेयरनेस आई थिंक जो क्रिएट करनी है वो देखिए यूजेज होती है. आई एम जस्ट होपिंग कि ये इवेंट भी जो है ना, इवेंट इंश्योरेंस भी होती है, ठीक है. आई एम नॉट श्योर कि इंश्योरटेक का इवेंट जो है ना इंश्योर्ड है कि नहीं. आई एम 99% श्योर इट्स नॉट, बट आई एम जस्ट सेइंग हम सब इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करते हैं. मेरा घर इंश्योर्ड नहीं है, ठीक है. बाहर अगर मैं जाता हूँ, इस तरह भी जिक्र हुआ, तो आपका मोबाइल फ़ोन भी आप इंश्योरेंस, यू आर कैरिंग रिस्क एवरीवेयर, राइट. यू आर सिटिंग इन योर ऑफिस, दैट कैरीज अ रिस्क. आपका घर रिस्क पे है, आपका मोबाइल, आपकी गाड़ी, आपकी हेल्थ, एवरीथिंग इज़ एट रिस्क, राइट. हाउ मेनी पीपल एक्चुअली बाय इंश्योरेंस इन पाकिस्तान, इंक्लूडिंग द पीपल हु आर वर्किंग इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री? ये आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा नहीं है इसकी पेनिट्रेशन, इवन इन फॉर द पीपल हु वर्क इन इंश्योरेंस एंड हु अंडरस्टैंड इंश्योरेंस. तो सिर्फ इंश्योरेंस का पता होना जो है काफ़ी नहीं है, ठीक है. इंश्योरेंस के लिए जो पुल की बात हो रही थी ना, कि वो पुल क्रिएट करना, दैट इट्स एक्चुअली अ यूजफुल फॉर प्रोडक्ट फॉर यू, दैट इज़ वे वी आर लैकिंग. उसके लिए कुछ मिसकंसेप्शंस हैं कि कंपनीज पे नहीं करती. आई थिंक इज़ स्पॉट ऑन कि जो फाइन प्रिंट्स होते हैं ना, वो सबसे बड़ा चैलेंज है. और एग्रीगेटर्स में आई थिंक वी हैव स्पोकन अबाउट इट एज वेल, कि एग्रीगेटर्स अभी जितने भी हैं, दे आर ओनली वर्किंग, वो हाईलाइट जो करते हैं ना, वो प्राइस पॉइंट्स करते हैं, एंड नॉट द फीचर्स और द रेटिंग और द सर्विस, क्वालिटी ऑफ सर्विस दैट ईच कंपनी इज. तो हमने अब बात करना शुरू करनी है ऑन द सर्विस साइड. वी आर सेलिंग क्लेम्स 70% और 60% और 80%. ये तो हर प्रोडक्ट का ऑफकोर्स नेचर फॉर डिफरेंट है, बट वी आर सेलिंग क्लेम्स. वी डोंट हैव एनीथिंग अदर देन द पेपर, जो हम, या अब तो पेपर भी नहीं, अब तो ईमेल पे ही चली जाती हैं. सो यू नॉट गिविंग एनीथिंग फिजिकल, यू आर जस्ट गिविंग देम अ कॉन्फिडेंस. वो कॉन्फिडेंस उस वक्त आएगा जब उसको एक तो समझ होगी कि यार मुझे ये चीज़ क्यों चाहिए है, एंड ही हैज़ द विलिंगनेस टू बाय दैट. वो विलिंगनेस क्रिएट करने के लिए ऑफ कोर्स इट्स नॉट गोना हैपन ओवरनाइट. उसके लिए इंश्योरेंस कंपनीज को अपना रोल प्ले करना है. वी हैव टू कम अप विद न्यू प्रोडक्ट्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड द पेन पॉइंट्स फॉर द कस्टमर्स एंड देन स्टार्ट पेइंग क्लेम्स. वो हमारा पार्ट है. जो भी सेल चैनल्स हैं, मैं सिंगल आउट एग्रीगेटर्स को नहीं करूँगा. बैंक्स हैं, टेलकोज हैं, एजेंट्स हैं, इंश्योरेंस अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जो ये फाइन प्रिंट्स हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी बिल्कुल दूर करे, लेकिन क्लैरिटी होना टू द कस्टमर कि व्हाट दे आर बाइंग इज़ नेसेसरी. सिर्फ इसलिए नहीं कि यार आपको 5% कमीशन मिल जाएगा या 15% कमीशन ले लेंगे. दैट शुड नॉट बी द एम. इफ़ यू हैव टू गेट रिपीटेटिव कस्टमर्स, जो भी सेल्स चैनल्स हैं, बीट बैंक्स और एनीवन, हमें क्लियर होना चाहिए. एंड आई थिंक एज इंश्योरेंस कंपनीज हमने एक चीज़ स्टार्ट की कि वी स्टार्ट डूइंग वेलकम कॉल्स. हमने, हमारा एक एक्सपीरियंस था, वी वर सेलिंग माइक्रो हेल्थ इंश्योरेंस थ्रू टेलकोज. क्लेम जैसे उन्होंने जिक्र किया, आ ही नहीं रहे थे क्लेम. 16% वॉज हाई, 8% क्लेम भी नहीं थे. वी एक्चुअली स्टार्टेड कॉलिंग द कस्टमर्स दैट यू हैव बॉट दिस इंश्योरेंस. हाफ ऑफ देम डिड नॉट इवन नो. बाकी उन्होंने पूछना शुरू किया क्या है, अच्छा हमें मालूम तो है क्या कवर्ड है, क्या नहीं कवर्ड. सो वी स्टार्टेड डूइंग दोज कॉल्स, एंड इन 4 years टाइम वी रीच 30% क्लेम्स. सो इवन एक ओवरनाइट में भी ये वाली चीज़ नहीं हुई. सो इट टेक्स टाइम. तो इंश्योरेंस कंपनीज ने, आई थिंक वी हैव टू बी वेरी क्लियर विद द कस्टमर व्हाट इज़ कवर्ड, व्हाट इज़ नॉट कवर्ड, व्हाट दे आर पेइंग फॉर, द वैल्यू फॉर मनी. एंड देयर हैज़ टू बी, वी हैव टू क्रिएट अ पुल कि उनको समझना है कि भाई आप एक अच्छा मोबाइल फ़ोन लेने जा रहे हैं, व्हाई आरंट यू बाइंग एन इंश्योरेंस फॉर इट बाय पेइंग समथिंग एक्स्ट्रा, जब आपको पता है कि यू आर लिविंग इन अ सिटी जहाँ पे स्नैचिंग है. चलें आप किसी और शहर में हैं, स्क्रीन क्रैक इज सो नॉर्मल, तो आप क्यों नहीं ले रहे? आप इफ़ यू आर बाइंग एन AC और अ TV, व्हाई आरंट यू बाइंग एक्सटेंडेड वारंटी? तो हमारी लाइफस्टाइल के अंदर जो है इंश्योरेंस मिसिंग है. इट्स गोना टेक टाइम, बट एवरीबडी हैज़ टू प्ले इट्स पार्ट, इंक्लूडिंग द रेगुलेटर. हमने बहुत दफ़ा रेगुलेटर से कहा है कि यू चार्ज, हमारा एक सिंस 1989 देयर इज़ अ 1% FIF जो कि उस पर चार्ज होती है. एंड द सोल रीज़न वाज कि हम उसके जो है ना उसको जनरेट करेंगे रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट टू क्रिएट अवेयरनेस. उससे आज तक कुछ नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है पैसा. मतलब आई एम श्योर कि इट्स देयर, बट उससे अवेयरनेस क्रिएट नहीं हो रही. सो एवरीबडी हैज़ टू प्ले देयर पार्ट. राइट, ग्रेट.
So Tugrul, coming to you and trying to understand from your perspective, it's, you know, as Ali mentioned about awareness के सबको अपना role play करना है, and you know it has to become a lifestyle. But you know, if you look at the West, if you look at Middle East, you know, Oman, Dubai, wherever you go, UK, US, right? Insurance has been, in one way or the other, has been made mandatory for basic, you know, things. You know, गाड़ी की इंश्योरेंस है तो करवानी है, बेसिक करवानी होनी ज़रूरी है, थर्ड पार्टी होनी चाहिए. And it has a lot of other, you know, benefits. Apart from benefiting the insurance industry, it has a lot of other benefits in terms of social upliftment. You know, at least, you know, benefit किसी को मिल जाता है, किसी का कोई नुकसान होता है, तो instead of the blame coming to the government, it can be taken up by the third party insurance company and the claim can be given. और यहाँ पे वो फड्डे ख़त्म हो जाए, आपकी लड़ाई ख़त्म हो जाए रोड के ऊपर, अगर ये जो ना अगर इस तरह से हो जाता है. How much do you think is this, you know, the need of the time, या हम ये नहीं कर सकते, as in regulator कहता है अब ये क्या हमें करना है, let's say. Do you think we should do it, or is it something नहीं यार ये, is this something too burden for the, you know, आम आदमी कि यार वो टैक्स भी भरे, वो ये भी भरे, तो अब वो इंश्योरेंस भी कराए. तो it's, you know, trying to understand from that perspective. देखिए, so the fundamental question over here is, is insurance relevant? Because if the answer is yes, then the answer to your question is no doubt we should. And I believe the answer is yes. Insurance is, in my opinion, there are three fundamental factors जो financial inclusion को drive करते हैं. एक होती है आपकी access to finance, which is credit. एक होता है आपकी access to trading opportunities, ये आप e-commerce समझ रहे हो उसे. और जो तीसरा जो बहुत बड़ा important एक पिलर है, वो है risk mitigation. आपकी ज़िंदगी, हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई ups and downs आते हैं. ये रिस्क मिटिगेशन वाला फैक्टर जहाँ पर मुझे फील होता है हम ज़रा शॉर्ट कमिंग हमारी है, वही आई थिंक माय पैनल, एस्टीम्ड पैनल हैज़ टच्ड अपॉन ऑल द पॉइंट्स ओवर हियर. वो प्रॉब्लम सिर्फ ये हो रही है कि आपने उसको पैकेज कैसे किया है और डिलीवर कैसे किया है इन अ वे दैट इट्स यूज़फुल. अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. हमने वो बात की थी लॉस रेशियोज़ की, जब आई वाज रेफरिंग टू 70% लॉस रेशियो और क्लेम्स रेशियो एज योर आइडियल. The last role that I had was actually in climate risk insurance, and we were using satellite data. पाकिस्तान के अंदर ही हमने लॉन्च किया था एशिया इंश्योरेंस के साथ. हमने एक पैरामेट्रिक कवर डिज़ाइन किया जिसके अंदर सैटेलाइट डेटा यूज़ करके फार्मर्स को हमने इंश्योर किया अगेंस्ट इंसिडेंट्स ऑफ रेनफॉल, एक्सेस एंड ड्राउट. अब उसकी ब्यूटी ये थी कि उसमें रजिस्ट्रेशन के वक्त हमें ज़रूरत थी लोगों की. क्लेम जो था वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो रहा था. वो इसलिए ट्रिगर हो रहा था बिकॉज उस सैटेलाइट का डेटा जब रिन्यू होता था, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स हमारे पास फार्म के थे, फार्मर को पता भी नहीं होता था कि उसका ही इज़ क्वालिफाइड फॉर इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस वुड ट्रिगर. इज़ दिस पॉसिबल इन अदर एरियाज? आई थिंक येस. और उसमें एआई का प्ले आता है. सो अगर हम टेक्नोलॉजी का सिर्फ जो यूज़ है वो इधर तक ना रखें कि हाउ डू वी डिस्पर्स और हाउ डू वी डिस्ट्रीब्यूट इंश्योरेंस, but we actually start working on the other side. How do we use technology to make those claims automatic? You'll see a vast change happen. देखें, even telcos की हम बड़ी example देते हैं. telcos में वो जो कहते हैं कि easy load, and वो अभी पिछले पैनल में भी कोई example दे रहा था कि जी वो कहीं आप remote area of बलूचिस्तान भी चले जाएं तो वहाँ पर easy load आपको मिल जाएगा. बिल्कुल. और इसकी डिमांड क्यों है? वो डिमांड इसलिए क्योंकि जब आप easy load कर लेते हैं, उसके बाद जब आप कॉल करते हैं तो वो मिल जाती है. तो वो कस्टमर को पता होता है कि यार ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसका रिटर्न मुझे मिलेगा. तो दिस इज़ व्हाट वी नीड, दिस इज़ द सॉर्ट ऑफ थिंकिंग वी नीड टू ब्रिंग एज अ बैंक. व्हाट आई कैन टेल यू, हमारी अप्रोच अब क्या है. आपने एग्रीगेटर्स का बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा था, एंड देन आई विल स्टॉप. कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हमें ये फील होता है कि एज अ बैंक हम अब बहुत सारे पार्टनरशिप्स में एंटर कर रहे हैं विद फिनटेक्स, विद इंश्योरटेक्स. वी फील कि हमारा एक रोल है, बट जो relationship का जो the person who's closest to that customer is actually the aggregator, because उनकी relationship है context driven. True. And they are the ones जो बार बार touch करेंगे उनको. So we as a bank feel कि जो specialist का काम है वो specialist को करने दें. As partnerships, let the partners help you get to the customer. So I think even वो awareness वाली जो side है वहाँ पर I think that we would prefer to work with aggregators who understand their customers well enough to drive that usage also.
Great. I think one of the most important point is the experience of not just how you buy the product, but how you actually get the claim out of it, and which is that is where the value is. And if the seamless you can make it, the better it would be. So coming to Umair, Numan, sorry. So obviously you work in the micro insurance sector. So which market segments are more receptive to buying insurance and more ready to take the insurance product as compared to other segments who you've addressed, or you've built the products which you experiment with, but you're not seeing enough day of the light over there. तो कौन सी products है जिनमें ज़्यादा आया या segments है जिसमें ज़्यादा आपको penetration मिल रही है? What is your view on how micro insurance can help with that? अच्छा मे भी बहुत सारे लोग शायद इससे एग्री नहीं करेंगे, बट द गिग इकोनॉमी वर्कर्स एक्चुअली दे आर more receptive towards buying the insurance once they understand the product. उनको वो प्रोडक्ट जो है समझाने के लिए you need some expertise, उनको उनकी ज़बान में समझाना पड़ता है. You have to answer their basic queries of if and when, whether they need insurance and when they can claim and how they will claim. जब आप उनको ये वाला प्रोसेस समझा देते हो बहुत आसान अल्फाज में, उनकी अगर लिंग्विस्टिक अप्रोच के साथ जाते हो, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हर 10 किलोमीटर के बाद तो आपका डायलेक्ट चेंज हो जाता है. सो वी अडॉप्टेड एन अप्रोच जहाँ पे हमने लिंग्विस्टिक को एज एन एडवांटेज यूज़ किया टू एक्सप्लेन द प्रोडक्ट टू देम. और जो आपके पास लिटिल बिट टूवर्ड्स द मिडल ऑफ द पिरामिड जो लोग बिलो एवरेज इनकम के थे, they are more likely to purchase the product, specifically small ticket size, क्योंकि उनको value for money मिलता है, they understand the product, उनको payment जो है वो बहुत ज़्यादा आसान लग रही होती है. दूसरी चीज़ हमें इसमें ये देखनी चाहिए कि जैसे अवेयरनेस की भी हम बात कर रहे हैं साथ साथ में, who is responsible, everyone is responsible to create the awareness, but हमारे पास इस टाइम के ऊपर जो हम कंपटीशन देखते हैं ना, हम एक दूसरे को अपना देखना शुरू हो जाते हैं कि यार ये इंश्योरटेक सारे आपस में कम्पीट कर रहे हैं, ये इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरटेक कम्पीट कर रहे हैं. आपको नहीं लगता कि हमारे पास जो सबसे बड़ा कंपटीटर है इस टाइम पे वो मिडल मैन है, या वो मोहल्ले की कमेटी वाली माई है, या फिर वो अप्रोचेबल पर्सन है उस गांव में, उस मोहल्ले में जब प्रॉब्लम आती है वो बंदा उसके पास सबसे पहले जाता है टू गेट द फाइनेंसिंग. वो क्यों फाइनेंसिंग लेता है? क्योंकि उसको अपना जो रिस्क है उसको उस टाइम के ऊपर फायर फाइटिंग करनी है, उसने अपने रिस्क को मिटिगेट नहीं किया था. उस टाइम पे हम वहाँ पे मौजूद नहीं होते. हम लोग वहाँ पे अगर डीप पेनिट्रेट क्यों नहीं कर पा रहे, हमने क्यों आज तक स्टेट लाइफ को चैलेंज नहीं कर सके, 70 साल में वो इतनी ओल्ड स्कूल के साथ वो लीडर्स क्यों हैं? क्योंकि उनके पास जो एजेंट नेटवर्क है वो डीप रूटेड है. वो उस मोहल्ले में बैठा हुआ एक पुराना बुजुर्ग आदमी है जिससे रोज़ के 200 लोग मिल रहे हैं. वो उनको tell is not equal to sell, but it does in state life insurance case. That's why they are the leader. So we need to penetrate deep down. हमने वहाँ पे बेसिक लेवल के ऊपर जाके लोगों को गांव मोहल्ले गली की बेस के ऊपर जाके बताना है कि व्हाट इज़ इंश्योरेंस, हाउ इट कैन मिटिगेट द रिस्क. और जो आप लोग उस टाइम पे ऊपर कर्जे ले रहे होते हो और उस टाइम पे अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए ये सोचे बगैर कि ये मैंने कैसे रीपे बैक करना है, उस जगह पे अगर हमारी मौजूदगी होगी देन वी विल बी एबल टू स्ट्राइव बेटर, और हम बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकेंगे. No, brilliant, Numan. I think that's a real great insight, and I think State Life has been able to penetrate and reach the masses because के उनका access to customer है, influence, they know how to influence the customer. भले वो छोटी ही एक community में क्यों ना करे, but influence कर लेता है, and that's why they are everywhere. Last question, I think, before we move to the question answers, because we are already past the 40-minute mark. Umair, how do you anticipate the role of digital insurance brokers and platforms as we move forward in the future that can help with market penetration and increasing awareness overall? If we look back, 7 to 8 years ago, only insurance companies were doing this. Now insurance brokers, insurance digital aggregators, they are coming into this particular thing. And with SECP introducing Sandbox, more players are coming in. Now, the more the players we can have, the better it is. वादा एक साइट के ऊपर अपनी प्रोमो कर रहा है,
वो एक ऑडियंस को हिट कर रहा है। जैज कर रहा है, टेलेनॉर कर रहा है, जोंग कर रहा है, यूफोन कर रहा है, यूबीएल कर रहा है, बैंक अल्फला कर रहा है। नाउ एवरीवन इज़ डूइंग इट। हर एक की ऑडियंस कुछ ना कुछ अब देखना शुरू हो रही है। सो द मोर प्लेयर वी आर गोइंग टू हैव द बेटर इट इज़, क्योंकि आप अपनी रीच को इंक्रीज़ करोगे। एक एसएमएस, एक जो बैनर है ऑन फेसबुक with just a limited information cannot educate a person. You need someone to tell those people. With Bima, Microinsure, WADA, what Hello Doctor and others are doing with the contact center, they are actually engaging with the customer at least 3 to 4 minutes, ताकि वो उसे कुछ ना कुछ तो बता पाएं. And in my experience, the female teachers जो कि 2, 3, 4 क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं, वो जब हमारे पास जॉब के ऊपर आई एज कॉल सेंटर एजेंट्स, दे टर्न आउट टू बी द बेस्ट सेलर्स, क्योंकि वो उन टफ आंसर्स को, उन टफ कस्टमर्स को प्रॉपरली जैसे बच्चों को समझाते हैं वैसे समझाना पड़ता है. And they were able to crack that. So I think the more players that we are going to have in Pakistan, everyone is doing their bit. SECP, government, all the partners, all the players are doing it. So message will be conveyed. But I think हमें उससे ज़्यादा importance एक और चीज़ को देनी है कि वो मैसेज हम कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं और उसके अंदर से कितने वो जो फाइन प्रिंट्स, लूप होल्स और वो जो बचने के तरीके उनको निकाल सकते हैं, that will be useful. I think वो हो जाए तो फिर message will be easier. Great. I think this means that we need to be true to our customers. Yes. We need to be truthful. We need to be loyal and clear in communication with them. So thank you, everyone. I think we can move to the question answers now. Absolutely. If we have any questions from the audience, please, you can raise your hand. Oh, okay. We have 2 gentlemen there, please. If you could start again, यहाँ से mic on है. I think in this Insurtech summit, I'm also being from the insurance industry, but we don't have a voice of the customer. As the Jivani साहब said कि आजकल जो है वो customer को एक बड़ा voice इसका social media के through मिल गया है. अब अगर हम individually हम खुद अपने आप को रख के जैसे product develop करते हैं, लेकिन अब अगर जैसे अब सेल्स होती है, इसमें ज़्यादातर जो है वो इंश्योरेंस को हम एज ए इन्वेस्टमेंट की करके इसको सेल कर रहे होते हैं. और इन्वेस्टमेंट में अब देखें कि काफ़ी हमें जो कंपटीशन होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ की तरफ से हो रहा होता है. तो अब इसमें ये भी एजुकेट करने की ज़रूरत है कस्टमर्स को कि भाई हमारी प्रोडक्ट ऑफरिंग में और एएमसी की प्रोडक्ट ऑफरिंग में क्या डिफरेंस है. क्योंकि आप देखें जैसे स्टेट लाइफ है आजकल जो इसका वो सबसे ज़्यादा बड़ा, जैसे आपने कहा कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, लेकिन इनकी प्रोडक्ट भी इतनी अनबीटेबल है कि इनकी गारंटीड जो बोनसेस हैं वो ऐसे हैं जो आई थिंक कोई प्राइवेट कंपनी ऑफर नहीं कर सकती. तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू प्रोपोजिशन है उसको हमें कैसे कम्पिटिटिव बनाना है ताकि हम जो दूसरे कम्पिटिटर्स हैं आजकल एएमसी है, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं या दूसरे बैंक्स हैं, इनसे अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकें और हमारी सेल्स को ग्रोथ मिल सके. थैंक यू सर. Would like to take that. So who is this question referred to? Can you name it? Should I answer it? Do you want me to answer it? तुगरल साहब, आपके ऊपर ही डाल दिया उन्होंने ये सवाल. लाइफ मेरा ख्याल है जो कोई करंट इंडस्ट्री में हो that might be more relevant. अली भाई, do you want to take that? This is specific to life insurance वैसे. लेकिन so आजकल I think there is another challenge because we had tax rebates in life insurance and AMCs as well, जो कि अब unfortunately last changes के अंदर ख़त्म हो गए. To make the industry more competitive, I think it's again how you are selling it. Because उसमें आपकी देखें जो policy है, it has both coverages. एक तो investment of course is one part of it, and the other part is the life part. So how you package your product and how you basically take it forward to the customer is very important in this. If you ask me, I have a finance background as well. I know कि क्या benefits होते हैं of buying insurance policy and how you can leverage AMCs. I think in the long run, अगर आप कस्टमर को ये जिस तरह अभी बात हो रही थी कि यू हैव टू
go to down to the level of the customer और उसको जाके आपने explain करना है कि क्या benefits हैं in terms of life insurance policy के in the long run. I think AMC बहुत clear वो होता है कि AMC is more beneficial if you do investments in the short term, short to medium term, whereas life insurance policies are beneficial for the long terms. तो आई थिंक हमारे एजेंट्स के पास भी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए ऑन व्हाट्स क्या प्रोडक्ट है वो एंड किस तरीके से उनको आपने पिच करना है. Do we have another question? Yes, please. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, अभी जैसे इन्होंने बात की फीडबैक की ना, वॉइस ऑफ कस्टमर, एग्रीगेटर के पास जो है वो प्रोडक्ट तो होता है, वो डिस्प्ले कर रहा होता है सारे रेट वगैरह, लेकिन कोई कभी सेल करने के बाद आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा फीडबैक के लिए कॉल्स की जाती हैं उस तरीके से जिस तरह बायर की जाती है. अमेज़ॉन पे कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं हम, तो वो फीडबैक के ऊपर ही हम खरीदते हैं प्रोडक्ट. तो जैसे एग्रीगेटर की वेबसाइट पे भी मैं जाऊँ तो मुझे ऐसा फीडबैक नहीं मिलता कि यार मैं टीपीएल का प्रोडक्ट ये हेल्थ का बड़ा अच्छा जा रहा है, या उसका कोई टेस्टिमोनियल उस तरह से दिया गया हो लोगों ने कि जिसको ईजी हो. जैसे इन्होंने भी कहा, तो गरल साहब ने भी, कि लॉस रेशो नहीं आ रहे थे. वो क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि वो क्लेम ही नहीं वहाँ तक पहुँच पा रहा था. तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने यही देखा है कि इंश्योरेंस कंपनियों पे डाल दी जाती है, अवेयरनेस की भी, कैंपेन्स की भी, फीडबैक्स की भी. तो रिलेशनशिप टू वे नहीं होना चाहिए कि अगर आप सेल में एक कमीशन लेते हैं तो आप उसको ये भी मेक श्योर करें कि अपने अगर 1000 सेल्स की कॉल एक महीने में करते हैं तो 100 फीडबैक की भी कॉल करवाएं अपनी बैंका वालों से, और उनसे पूछें कि यार ये कंपनी, क्योंकि देखिए ट्रस्ट बिल्ट होता है, वैसी पेनिट्रेशन नहीं है. जैस के कस्टमर एक पॉलिसी तो बेच देता है, स्मार्ट चॉइस वाला पॉलिसी तो बेच देता है, जब क्लेम नहीं मिलता तो वो जो ट्रस्ट है बैड एक्सपीरियंस में कन्वर्ट होता है, और बैड एक्सपीरियंस 100 बैड एक्सपीरियंस में चले जाते हैं. वो आगे अपने पूरे सर्कल में कहेगा यार बेकार है, मत ले यार, कॉल आती है, फालतू की चीज़ है. तो रिलेशनशिप टू वे होना चाहिए. और मैं ये समझता हूँ कि क्या बैंका वालों को भी ये कॉल करनी चाहिए कि ताकि वो प्रोडक्ट, जैसे अली साहब ने बार बार कहा कि नीड के ऊपर बेचें. इंश्योरेंस तो पता है लोगों को, हमने भी घर का प्रोडक्ट नहीं लिया हुआ है, प्रोडक्ट उस हिसाब से फिर बैंका वाला बताए यार ये 10 हमें फीडबैक आए हैं, आप इसको कुछ रियलाइज़ करो, आप सही कह रहे हो, इस पर क्लेम नहीं बनता, लेकिन यार कुछ ऐसी चीज़ डालो ताकि प्रोडक्ट ऐसा डिज़ाइन हो जो जिससे सेल भी ज़्यादा हो और आपका क्लेम के ऊपर भी जो है ना वो इफेक्ट ना आए. अच्छा, I can add my comments into the Insurtech, जो कि माइक्रो प्रोडक्ट्स टेलको वाली साइड के ऊपर है. सो वहाँ पे प्रोसेस ये है कि कॉल जाएगी, कस्टमर को एक्वायर किया जाएगा, फिर इन अ मंथ उसे 2 दफ़ा मैसेज के ज़रिए इन्फॉर्म किया जाता है कि आपके नंबर के ऊपर ये प्रोडक्ट लगी हुई है, इसके इतने पैसे कट रहे हैं. मंथ एंड के ऊपर कस्टमर को भी बताया जाता है, और जिन केसेस में कस्टमर्स हमें बेनिफिशरी की डिटेल्स लिखवा देते हैं, हम उनके बेनिफिशरीज़ को भी मैसेजेस करते हैं. सो IVR भी ब्रॉडकास्ट होती है, जिसको रोबो कॉल कहते हैं, IVR. ये सारी चीज़ें जा रही होती हैं, और कस्टमर का फर्स्ट टच पॉइंट जो है, जिस नंबर से उसे कॉल गई है, कैटेगोरिकली वादा भी, बीमा भी, इवन अस माइक्रो इंश्योर, हर बंदा ये कहता है कि इस नंबर को सेव कर लें, आपको कोई भी मसला हो जाए आपने इसी नंबर पे कॉल करना है. सो इवन ऑन द कंप्लेंट साइड, क्लेम साइड, फर्स्ट लाइन ऑफ कस्टमर वॉइस जो है वो हम लोग ही होते हैं. एंड बेस्ड ऑन द वॉइस ऑफ द कस्टमर, पहले कोई भी इंडस्ट्री में प्रैक्टिस नहीं थी कि बेनिफिशरी का नंबर लेके आप उसको भी इन्फॉर्म करें. सो इट एक्चुअली केम आउट फ्रॉम दैट. वंस हमने ये करना शुरू किया, येस इंश्योरेंस के जो क्लेम्स रेशो थे वो इंक्रीज़ हुए थे. दे आर नॉट इवन क्लोज टू इवन 30%, और इवन 20% भी बहुत रेयर केसेस के अंदर जाते हैं. तो कस्टमर टच पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं. हाँ, कॉल करके सर्वे करना वो एक क्वार्टरली एक एक्टिविटी होती है जिसके अंदर किया जाता है, बट वो 100% ऑफ द कस्टमर को नहीं किया जाता. जस्ट इमेजिन, लेट्स से बीमा के इस वक्त क्लोज टू 3 मिलियन कस्टमर्स हैं. यू कैन नॉट कॉल every 3 मिलियन कस्टमर्स एवरी मंथ, और फिर बड़ा अनफेयर हो जाएगा कि आप एक पोर्शन को कॉल करें, बाकी को नहीं करें, उनका क्या कसूर है. सो दैट्स वाई SMS, IVR, रोबो कॉल्स और डिफरेंट चैनल्स के ऊपर उनको मैसेज कन्वे करना कि यू कैन लॉग योर कंप्लेंट, यू कैन लॉग योर क्लेम. बार बार क्लेम करने का तरीका हर मैसेज के नीचे और कुछ लिखा हो या ना हो. कंप्लेंट करने का तरीका नहीं, क्लेम करने के लिए उस कोड के ऊपर मैसेज कर दें, जो भी रिस्पेक्टिव है, या उस नंबर पे कॉल कर दें. सो फॉर स्मार्ट चॉइस, मे बी Siptan कैन एड्रेस टू दैट क्वेश्चन. Well, I just have something on a lighter note to add, और ये एक्चुअल किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ, मजाक नहीं. मैं जब हेड ऑफ अफ्रीका था तो केन्या में हमने 1 एकड़ फंड के साथ एक लॉन्च किया एक प्रोडक्ट कि भाई जो फार्मर खाद की बोरी ख़रीदेगा
2 खाद की बोरियां थी शायद, अगर ख़रीदेगा तो उसको उस बोरी के साथ साथ इंश्योरेंस कवर मिलेगा जो उसके लिए, उसकी स्पाउस के लिए और उसके 6 बच्चों के लिए, up to 6 children, हॉस्पी कैश कवर. It sounds like a fantastic product, right? अच्छा, claims नहीं आते थे. So I said, okay, let's go and visit after a few months because we couldn't figure out what is happening. Because Hospi Cash typically is a product that bleeds money. So we took a flight. It was a small town on the border of Uganda and Kenya. So we went there. We gathered all the farmers. वो एक चर्च के अंदर सारे फार्मर्स को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि जी फीडबैक बताएं, वो जो आप फीडबैक की बात कर रहे हैं. तो उनमें से एक खातून वहाँ पर बैठी हुई थी, खड़ी हो गई. उन्होंने कहा कि आपका प्रोडक्ट बहुत बुरा है. तो हमने पूछा कि क्यों? तो उन्होंने कहा क्योंकि मैंने कहा कि भाई देखें, आपका फार्मर ने ख़रीदा है, उसकी स्पाउस मिसेस जो हैं वो भी कवर्ड हैं, 6 बच्चे आपके कवर्ड हैं, और क्या चाहिए आपको? तो उन्होंने कहा हाँ, लेकिन कौन सी वाली बीवी, क्योंकि यहाँ पर हर फार्मर की 3-4 बीवी हैं. एंड दिस फॉर मी वाज न्यूज़. एंड फिर मैं कहा वो 6 बच्चे, तो उन्होंने कहा कि कौन से वाली, एक औरत से बच्चे या डिफरेंट बीवियाँ. तो कहने का मकसद ये, एंड दिस इज़ एक्चुअली ट्रू. आई टर्न्ड अराउंड टू माई चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, शी वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड शी इज़ केनियन. I said, ये आपको नहीं पता था when you were designing the product? She said, I had no idea. नायरोबी में कुछ और होता है, यहाँ पर कोई और तरीका है. तो वो फीडबैक, मैं आपको एक जेन्युइन केस बता रहा हूँ कि ये कंटेक्चुअलाइज करना अपने प्रोडक्ट को बड़ा ज़रूरी होता है. An excellent point, yeah. So on this, I'm not sure कि वो farmers काम कैसे कर रहे थे. I mean, they were so busy with other things. But on the feedback, I think it's a very relevant question because, and I think just shortly, feedback has to be independent. I think what the gentleman was referring to, as companies, I think everybody is taking feedbacks and they're putting it back on the products as well. But what's needed, I think, where digital aggregators and brokers can play a good role is that if they get independent feedback on the companies and they start publishing it on their website, that would be good for the customers to know that what sort of other, and I mean, with respect to the timing, जैसे हमने बात की कि हर customer को आप पूरे हर महीने call नहीं कर सकते, but at least at the time of claim, when you know कि उसने एक claim किया है, तो there should be a feedback call or any other mechanism, digital mechanism हो, जैसा भी mechanism हो, there should be a feedback which comes directly to the independent digital broker. So that's my 2 cents. Thanks, Ali. Just want to add on this. जब मैंने Smart Choice start किया तो उस वक्त बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि हम जो ना वो क्लेम रिलीज में एंटर होंगे. I'll be honest with you. उस वक्त ये था कि भाई प्रोडक्ट्स लाएंगे, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड जो ना मोर लाइक एन ई-कॉमर्स, राइट. बट वंस जब 1 साल गुजरा और जब रिन्यूअल की बारी आई, जब हमने उसको फ़ोन किया तो उसने बोला कि यार मेरा ये वाला क्लेम नहीं मिला था मुझे. तो हमने बोला तो क्या मसला, मतलब नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? बोला नहीं, वो इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं दिया और ये हुआ वो हुआ. And then at that point it was realization that to actually retain a business we need to talk to these customers. So commercial benefit भी है उसका, मतलब सिर्फ ये कोई नहीं है कि फलाई काम नहीं करने को आप बोल, आप जो कह रहे हैं उसका फलाई काम नहीं है, उसका actually पूरा cycle है. It's a commercial benefit because if वो अगर उसको claim मिलेगा, आप उसको claim में assist करोगे as a broker, as a third party, as a digital platform, it allows you to get a retention, high retention. Then it gets you a word of mouth. From another, it spreads the word, right? कि यार उसने उनकी वजह से मुझे क्लेम मिला. मैं अगर इंश्योरेंस कंपनी के पास डायरेक्ट जा रहा था तो वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे कॉल सेंटर पे, या वो जवाब नहीं दे रहे थे. So what we realized at that stage was that we certainly need to get into the entire process, not just sales and के operations या post policy issuance के जो endorsement वगैरह करनी से वो उसने नहीं. We have to do the whole thing. So I think it's key. Anyone who is getting into this business have to do the whole thing. You can't just do the one thing and think यार बहुत बड़ा काम कर लिया मैंने. So, yeah. Right, and with this we'll end this panel discussion. If I could request all of you, Sipten, Ali Hassan, Tughril, Noman and Umair to get together for a group photo, please. Thank you, gentlemen.
And before we head to the closing remarks, I'd really like to thank all of you, all of our esteemed guests, our panelists, our moderators, everybody who showed up today to make this conference a success. We'd also like to extend heartfelt gratitude to Mr. Rizwan Hussain from Salam Takaful, Mr. Mohammad Aminuddin from TPL Insurance, Mr. Ali Nadeem from IGI Life Insurance, Mr. Alam from WebDoc, Syed Athar Abbas from Habib Insurance, Ali Haider from Adam G Life, Mr. Muhammad Ishaq Kothawala from WADA, Mr. Azim Pirani from Pak Qatar Takaful, and Ms. Neelofar Sohail from EFU Life Assurance. And for the last closing remarks, we'd like to invite Mr. Hasnain Khoja over here to the stage, who's the head of retail business, KT Bank, Pakistan. He has over 30 years of retail banking experience. He has worked in Pakistan, the UAE, Saudi Arabia, Qatar, Romania, and Canada, and has also maintained and started 4 businesses in his tenure. Sir, please. Everybody. Yeah, because for me, you all are like, you know, just like my children now. Huh? Well, I'm very excited. I'm back to Pakistan after 12 years. I was one of the pioneers who started credit cards in this country. So I did cards for Citi, Standard Chartered, and ABN. And since we're talking about insurance, I was also one of the pioneers who did that credit insurance on the credit card with a negative option. And it had generated a lot of complaints where customer had no idea and we were giving them this insurance as a negative option. And it was 2 months free, and from the 3rd month, we started charging. So I remember State Bank, they, I think, forced us to change that thing. Also in Saudi Arabia, we had the same problem, so we had to change that there also. But coming back to insurance, I saw that you guys are all talking about how it's difficult to grow insurance. But one thing you all need to remember, that you're not selling an insurance, you're selling actually death. Because life insurance is when you die, you get money, right? So it's not that easy to sell. It's a very, very difficult product. And also, whenever I set up sales teams, direct sales teams, I used to always hire insurance sales guys because they were the toughest. They were very good at selling. So don't underestimate yourself. It is difficult. Selling insurance is not easy. But what is exciting me is this whole involvement with telecom industry, which was not there when I was there earlier on. I mean, if you really look at credit card industry, I don't think it's grown a lot in this country, and biggest portfolios are probably maybe 500,000 customers. Whereas telecoms, I could see that they've really, 75 million customers is a dream. But then if I compare this with a country like Saudi Arabia, which is a lot similar to us, only they are richer, there you could see a cards business, which like I ran a very big cards or a payments business of SNB, which is the largest bank. In a month on a credit card, you could get a spend of $2 billion. And also, it's a very funny thing that now it is not that bad, but during Ramadan, the Saudis used to use so much of cards that their central bank switch used to crash. So last week of Ramadan was a terrible month. All your cards will start getting declined. So now what they do every Ramadan, they have a committee which actually tracks these transactions very closely, so the switch doesn't crash, and now it actually doesn't. But looking at what I've seen with all of you, you guys are very, I see a lot of young people, a lot of energy. I'm very excited. I'm back. I'm going to work on this launch of a new digital bank for KT. And I'm looking forward to developing some young people. So I've done that a lot in my previous assignments. And I'll do the same. And don't give up. I think
Pakistan has one of the best talents in the world. I learned everything here what I applied in the world. So it's not that I learned some, okay, I studied in US, but then I came and learned here in City and Standard Chartered and ABN. But I am a product of Pakistan and I'm very proud of it. Even though I'm a Canadian Pakistani, a lot of people are telling me, why are you going back? I said, because I feel now it's a time for me to give back to my country. My both kids are settled. I already have all my targets met for my retirement. So I thought it was about time I should come back and give it to my country. All the best, and yeah, we will see each other again. Thank you. Khuda Hafiz. Well, we'd actually like to say welcome back to Pakistan then, and it's great to have you. Thank you to everybody for joining us today, and we'd like to conclude this day with saying thanks to all of you again, and if you'd like to join us for tea and coffee outside right now, that'll be great. Have a great evening, everyone. Thank you.